सभी का बहुत बहुत स्वागत। हमारे जितने भी साथी और जितने हमारे वरिष्ठ साथी और सीनियर्स हमारे साथ हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार गुप्ता सर। गुप्ता सर नमस्कार। प्रिंसिपल मैम आ गई हैं? प्रिंसिपल मैम नहीं, अभी ज्वाइन नहीं। मैम हम लाइव हैं। एक्चुअली टेक्निकल थोड़ा सा रहता है प्लीज जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपने आप को म्यूट कर लें। मैम हम लाइव हैं। ओके मैम। एक्चुअली टेक्निकल थोड़ा सा रहता है सबको म्यूट कर ओके मैम। एक्चुअली टेक्निकल थोड़ा सा रहता है। सूक्ष्म मैम मैंने आपको म्यूट कर दिया है। दो यू आर अ को होस्ट, क्योंकि आपके यहाँ से आवाजें आ रही हैं। जब आप कहेंगी तो आपको अनम्यूट कर देंगे। मुझे लग रहा है कि हमारी चीफ गेस्ट, हमारे सारे डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स आ चुके हैं। बस हम अपनी प्रिंसिपल मैम का इंतजार करते ही प्रोग्राम शुरू करते हैं। वेलकम सर, वेलकम ऑल। जितने भी हमारे प्राचार्य रहे हैं, हमारे साथी रहे हैं इस महाविद्यालय से जुड़े हुए, उन सबका इस पोर्टल पे स्वागत है। और मैं पहले से आप लोगों से क्षमा मांग लेती हूँ अगर कोई टेक्निकल वो होता है, क्योंकि हम लोगों के हाथ में बहुत सी चीजें नहीं होती हैं। अभी जैसे ही प्रोग्राम शुरू कर रहे थे वैसे ही इंटरनेट चला गया, तो फिर उसको यूपीएस से कनेक्ट किया ताकि बराबर चलता रहे। सोसाइटी में पावर सप्लाई जो बार बार आ रही जा रही है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर भी मैंने को होस्ट बनाए हैं, तो जूम की मीटिंग तो चलती रहेगी। हो सकता है यूट्यूब थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए अगर इंटरनेट की प्रॉब्लम आती है। लेकिन तो मैडम क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है, आपको म्यूट कर दे रहे हैं। सूक्ष्म मैम आप। जी मैम। सूक्ष्म मैम। यस मैम। जरा प्रिंसिपल मैम को फोन करिएगा। जी मैम। क्योंकि वी कांट कीप वेटिंग आवर गेस्ट। राइट। ओके मैम, आई एम डूइंग। लेकिन अभी मैंने ऑडियो का वो और वीडियो ऑन नहीं किया, जैसे इनका शुरू का तब ऑन कर दूंगी। ठीक, मेरी आवाज तो नहीं आ रही है ना, मैंने म्यूट कर रखा है अपने आप को। आ नहीं रही है ना कि मैं तुमसे बात कर रही हूँ? ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ, नहीं तुम्हारी भी नहीं आ रही है। ठीक ठीक, ओके। सूक्ष्म मैम, मैम ज्वाइन कर रही हैं। अभी मैम ज्वाइन कर, मैम अभी ज्वाइन कर रही हैं। ओके। अब तक अब हम लोग ने चूंकि सबको म्यूट कर देते हैं, तो हम इस पोर्टल पे ज्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कमेंट्री कर सकते हैं कि
ये जो हमारा कॉन्फ्रेंस है ये समाजशास्त्र विभाग, वाणिज्य विभाग और अर्थशास्त्र विभाग के तीनों के सहयोग से हो रहा है। हमारी जो टीम है जो इसमें लगातार निरंतर जो इतने दिनों से लगी रही है, डॉक्टर शैली श्रीवास्तव जो एचओडी हैं अर्थशास्त्र विभाग की, डॉक्टर प्रिया सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर है अर्थशास्त्र विभाग में, डॉक्टर अपर्णा जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अर्थशास्त्र विभाग में, इसके साथ में लेफ्टिनेंट डॉक्टर सुब्रमण्य नेजा जो कॉमर्स विभाग की विभागाध्यक्ष भी है, और इनके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा रानी यादव। ये सारा कॉन्फ्रेंस जो है ये संयुक्त प्रयास के साथ में हो रही है और उसके साथ ही हमारी प्राचार्य मैडम के दिशा निर्देश में इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आयोजित करने का बीड़ा उठाया, क्योंकि थोड़ा सा ये कॉस्ट इंटेंसिव भी प्रोग्राम है। हम लोग लॉकडाउन, ऑलमोस्ट पार्शियल लॉकडाउन में है क्योंकि ऑफिसेस खुल गए हैं, और कैसे क्या रिसोर्सेज मैनेज होंगे, कैसे क्या होगा, इस पे फोन पे ही वार्तालाप करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। जूम मीटिंग्स, व्हाट्सएप कॉल्स, उस पे शेयरिंग करके ये पूरा आयोजन किया गया। तो ये एक फ्यूचर ट्रेंड दिखाता है हमारे समाज का, जिस पे हम आज चर्चा विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम में करेंगे। मैम जैसे ही आए मुझे बता दिए, क्योंकि जब पार्टिसिपेंट ज्यादा हो जाते हैं तो कई बार दिखता भी नहीं है। तो गुप्ता सर भी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गोयल सर भी आ गए हैं। गोयल सर आ गए हैं। गोयल सर तो पहले ही ज्वाइन कर लिया था। गोयल सर तो मैंने सर को वेटिंग रूम में काफी देर तक रखा हुआ था। सर दिख रहे थे क्योंकि हम अपने यूट्यूब का कनेक्शन लाइव करने में लगे हुए थे। रेखा मैम आ चुकी हैं, मैम को नमस्कार। वीपी सिंह सर आ चुके हैं, सर को नमस्कार। श्वेता मैम का वीडियो नहीं दिख रहा है बट उनका नाम डिस्प्ले हो रहा है, उनको गुड मॉर्निंग। हमारे चीफ गेस्ट सर भी थे। सर अभी जो है वीडियो उनका नहीं दिख रहा है लेकिन सर लाइव हुए थे। और इसके साथ ही अभी मोनिका मैडम मुझे दिखी थी, राठौर मैडम मुझे दिखी थी, सबको नमस्कार। निधि रायज़ादा मैडम, दीप्ति, संमित्रा और दिव्या मैम को नमस्कार। दिख रही है मैम मुझको, सभी को नमस्कार। मोनिका मैम है, नमस्कार मैम। और कुछ लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, कोई छूट रहा हो तो आप लोग जो मेरी टीम है वो उसको पूरा कर ले। रोजी मैम भी आ चुकी हैं। शैली मैम, प्रिंसिपल मैम से बात कर लिया जाए। मैम बात हो गई। मैम कह रही थी बस आ रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। हाँ ठीक है। साढ़े 4 अरब साल पहले इसके बाद इस जो
कॉन्फ्रेंस है, इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा है, जो उदीयमान, जो इमर्जिंग जो स्थितियां हैं हमारे इस समय समाज की, क्योंकि एज अ स्कॉलर ऑफ सोशियोलॉजी मैं तो यही देख सकती हूँ कि किस तरीके से जो नवीन परिस्थितियां उभर कर आ रही हैं हमारे सामने, कि कैसे न केवल भारत बल्कि संपूर्ण जो विश्व है वो किस प्रकार से इस नए प्रकार की चुनौती से सामना कर रहा है, और अपने जितने भी सिस्टम्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे सोशल सिस्टम हो, चाहे आपके इंटरनेशनल इंटरैक्शंस हो, उनको किस तरीके से रिवैम्प करेगा, किस तरीके से उनकी पुनः संरचना करेगा, उसके लिए एक प्रयास कर रहा है। और वो स्थितियां क्या होंगी, कैसे क्या होंगी, ये अभी कुछ तय नहीं किया जा सकता, कुछ निश्चित नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी जो है एक ट्रेंड क्या हो सकता है, एक रास्ता क्या हो सकता है, किस स्थिति पे चीजें जा सकती हैं, उसको जरूर हम देखने का प्रयास कर सकते हैं, उसको एनालाइज करने का कर सकते हैं। मिश्रा में एक बार म्यूट ऑल कर दीजिए आप, जिसको बोलना होगा। मैम ज्यादातर सबके मैंने म्यूट कर रखे हैं, और तो हमारा दिन को 12 बजे जितना लाइट मिलता है। रविकांत सर, आपके यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कीजिए। है ना? तो ये जो नवीन परिस्थितियां हैं जिसमें एक अनिश्चितता का भाव है, लेकिन साथ में कि हम एक रास्ता क्या हो सकता है, एक दिशा क्या हो सकती है, उसको तय करने का प्रयास कर सकते हैं। और जैसा कि जितने लोग भी मुझे पुराने समय से जानते हैं, मैं बहुत ज्यादा बोलने में माहिर नहीं हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ फिलर की तरह इस्तेमाल करना है। या तो मैं तब तक सूक्ष्म मैम से कहूंगी कि वो कुछ अपना इस पे प्रकाश डालें जब तक कि प्रिंसिपल मैम हमें ज्वाइन करती हैं, क्योंकि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनका इसके बाद ही लेक्चर है दूसरी यूनिवर्सिटी है उसमें, तो उनका हमारे पास टाइम वैसे भी शॉर्ट है। तो सूक्ष्म मैम आप करिए, ऑन करिए, तब तक देखती हूँ, मैं मैम को फोन करती हूँ। श्योर मैम। एक्चुअली जो आज ये वेबिनार है, जिसका जो मेन पर्पस और मेन टॉपिक है हमारा फ्यूचर ट्रेंड्स। एक्चुअली जितने भी हमारे फ्यूचर ट्रेंड्स होते हैं वो जनरली हमारे पास्ट पे डिपेंड करते हैं। हम हमेशा ऐसे ही बोलते हैं कि फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन द पास्ट, बट समस्या आज के समय में ये हो गई है कि जो हमारा पास्ट है और जो फ्यूचर है उसकी इक्वेशंस में ना बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो गया है। तो इसीलिए आप फ्यूचर को पढ़ने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाएगा। और ये जो वर्ड आ रहा है आजकल हमारे सामने बहुत ज्यादा, न्यू नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा नॉर्मल ही होता है जो आज तक हमने सुना है, लेकिन न्यू नॉर्मल को अडॉप्ट करने के लिए हमें बहुत सारी अपनी थिंकिंग स्किल्स, बहुत सारा अपना एटीट्यूड और बहुत सारी व्यवस्थाएं जिसमें हमें चेंज लाना पड़ेगा। तो ये सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने का, इस वेबिनार को पर्पस यही है कि हम उन चेंजेस को, ऑल्दो इसमें हमने सिर्फ एक ही दिन का समय है हमारे पास और हमने बहुत 4-5 टॉपिक्स, 4-5 एस्पेक्ट्स ही हैं जो टच करेंगे आज हम, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एरियाज हैं जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं, डिस्कस किए जा सकते हैं। दिस वेबिनार इज जस्ट द बिगिनिंग टू दैट डायरेक्शन, सो दैट हम एक कदम, जैसे बोलते हैं ना, एक कदम जिंदगी की ओर, एक कदम आज हम अपने भविष्य की ओर लेंगे। और जो भी हमारे यहाँ डिग्निटरीज आ रहे हैं, हमारे यहाँ एक्सपर्ट्स आएंगे और जो हमें अपने उद्बोधन से हमें लाभान्वित करेंगे,
उसमें हम यही सोचेंगे कि कैसे हम अपने माइंड में फिजिकली, मेंटली, सोशली, क्योंकि ये जो हमारा 3 डिपार्टमेंट्स ने मिलके इसको ऑर्गेनाइज किया है, सोशियोलॉजी ने, अर्थशास्त्र ने और कॉमर्स ने, तो सोसाइटी, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ये तीनों बहुत हैंड इन हैंड चलते हैं। क्योंकि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आजकल बहुत बात हो रही है कि इतने सारे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग वापस चले गए, यहाँ पे भी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो गई, और जो लोग वहां चले गए, जितने भी हमारा लेबर क्लास था, उसकी बहुत समस्या आने वाली है आगे चल के। उस पर बहुत सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुई पिछले दिनों। तो ये जो सोसाइटी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स, ये तीनों इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं क्योंकि तीनों की बहुत ज्यादा इंटरडिपेंडेंस है आपस में। दे आर सो मच रिलेटेड टू ईच अदर। इसीलिए आज हमने मिलके इस एफर्ट को, इस इनिशिएटिव को लिया है कि हम तीनों एस्पेक्ट्स में, और इसके अलावा हमने इसमें एक एस्पेक्ट अपने वेलबींग का रखा है, और हमारा इंटरनेशनल योगा डे भी आने वाला है। तो कैसे हम अपनी हेल्थ को, क्योंकि इतने दिन से लॉकडाउन है, पीपल आर नॉट गेटिंग आउट, तो इसका उनका फिजिकली, मेंटली बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, जो कि इंडिया का यूएसपी है, कि हम कैसे, कितना अच्छा, क्योंकि जितने ज्यादा मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि हम अगर स्पिरिचुअल होते हैं उतने ज्यादा हम हैप्पी भी होते हैं। ये एक पिछले दिनों एक आईएम में स्टडी भी हुई है कि कहाँ पे लोगों को हैप्पीनेस ज्यादा मिलती है, बिकॉज वी आर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस कैसे होगी? जब हम सोर्स ऑफ हैप्पीनेस से कनेक्टेड होंगे। लाइक इफ वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड टू गेट द कनेक्टेड टू द पावर हाउस। तो सिमिलरली इफ वी नीड हैप्पीनेस, वी नीड टू कनेक्टेड टू द स्पिरिचुअलिटी। और इस चीज को भी, इस एस्पेक्ट को भी हम लोगों ने इसमें रखा है, एक लेक्चर यहाँ पे भी है। तो इस तरीके से हमारा, क्योंकि जो हेल्थ, जैसे लास्ट हमने एक सेशन अटेंड किया था हेल्थ पे, हेल्थ इज नॉट ओनली योर फिजिकल हेल्थ, इट्स योर फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ऑल हेल्थ आर इंक्लूडेड। तो दैट्स व्हाई जो हमने इसमें टॉपिक्स प्लान किए हैं वो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए प्लान किया। तो आई होप, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू ऑल कि आप सब यहाँ पे हैं। बहुत सीनियर फैकल्टीज आर ऑल्सो देयर एंड आई एम गेटिंग अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विच इज नॉट प्लान्ड। सो जो मेरे मन में था मैंने वो आपसे शेयर किया। सो thank you so much for joining us and I'm looking for a fruitful session for all of us. So I would like कि मैम, अनीता मैम या फिर शाली मैम भी अपने कुछ विचार यहाँ पे रखें तो it will be wonderful. Thank you. शाली मैम आप भी प्लीज कुछ बोलिए। थैंक यू सूक्ष्म मैम। निश्चित रूप से आपने जो कहा कि वर्तमान समय हमारे लिए बहुत ही चुनौतियों भरा समय है, चाहे हम अर्थव्यवस्था को ले लें, समाज को ले लें, या हम अपने संपूर्ण देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को ले लें। सभी व्यवस्थाएं किसी ना किसी रूप में वर्तमान समय में प्रभावित हो रही हैं। और आज इस कॉन्फ्रेंस को करने का उद्देश्य यही है कि जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमें किस भविष्य की ओर ले जा रहे हैं, या भविष्य में इन क्षेत्रों में हमें क्या क्या नई व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, इन सब पे हम विचार विमर्श करें, और साथ ही स्वयं भी अपना वैचारिक मंथन जारी रखते हुए ऐसे कुछ उपाय सुझा सकें जिससे देश इन क्षेत्रों में आगे तेजी के साथ प्रगति कर सके, आगे बढ़ सके। और ये हमारा सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान वक्तागण हैं। हमारे अतिथियों के रूप में बहुत सारे हमारे सम्मानीय प्रबुद्ध शिक्षकगण हैं। तो निश्चित रूप से ये जो प्लेटफॉर्म है आज का, ये हमें इस विचार मंथन के लिए एक बहुत ही अच्छा समय देगा, जिस पर हम विचार करके किसी सार्थक निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। मैं आगे के लिए आमंत्रित करूंगी अनीता मैम को कि आप इस कार्यक्रम को आगे संचालन करने का इसका कष्ट करें। अनीता मैम। मैम, प्रिंसिपल मैम की कनेक्टिविटी अभी शायद नहीं हो पा रही है, तो इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है इस प्रोग्राम में। मैम लगातार प्रयासरत हैं कनेक्ट करने के लिए, बट ड्यू टू कुछ टेक्निकल रीजंस हमारी मैम की कनेक्टिविटी अभी नहीं हो पा रही। जैसे ही होती बस हम स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को।
हाँ जी, अभी प्राचार्य मैम से बात हुई है, तो वो जो है अभी कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। तब तक उन्होंने हम लोगों को परमिशन दे दी है कि हम लोग जो है उस कार्यक्रम को अब शुरू कर सकते हैं। तो ज्यादा समय ना मैं अब पुनः एक औपचारिक रूप से जितने भी हमारे इस डिजिटल पोर्टल से जुड़े हुए लोग हैं उनका स्वागत करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। और इसके साथ ही मैं जैसे कि हम लोगों की परंपरा रही है कि कोई भी हम कार्यक्रम का जो आरंभ करते हैं, आगाज करते हैं, वो ईश्वर की वंदना के साथ में करते हैं। होपफुली हम शायद आपको सरस्वती वंदना इस प्लेटफॉर्म पे सुना पाए, क्योंकि थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं, लेकिन मैं सूक्ष्म मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वो जो है सरस्वती वंदना के माध्यम से इस कार्यक्रम का आरंभ करें। और हम एक औपचारिक घोषणा करते हैं कि हमारा जो पहला राष्ट्रीय संगोष्ठी है वो आरंभ हो रही है इस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोएडा की। तो मैं सरस्वती वंदना के माध्यम से आमंत्रित करती हूँ कि सूक्ष्म मैम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। सूक्ष्म मैम। श्योर मैम। धन्यवाद सूक्ष्म मैम। मेरे ख्याल से सबको आवाज ऑडिबल थी। अब मैं जो हूँ अपने इस कार्यक्रम को आरंभ करने, मेरे ख्याल से हमारी प्राचार्य मैम जो हैं वो ज्वाइन कर चुकी हैं और मैम को स्क्रीन पर देखने की कोशिश कर रही हूँ। शायद राहुल शर्मा के नाम से मैम ने ज्वाइन किया है। मैम दिख रही है राहुल शर्मा के नाम से? शौर्य तिवारी होगा, शौर्य तिवारी मैम है? हेलो जी शैली मैम, मैम आ गई है? मंजू शर्मा मैम ने ज्वाइन किया है। मैम का स्वागत है। नमस्कार मैम। थैंक यू मैम का नमस्कार। मंजू मैम का नमस्कार मैम। नमस्कार मैम। मैम अब मैं जो हूँ अपने जो हमारे इसके मुख्य जो हम अतिथि हैं हमारे, उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि जो अनीता मैम, सॉरी, प्रिंसिपल मैम दिखाई दे रही हैं वो राहुल शर्मा के नाम से। हाँ मैम ने ज्वाइन कर लिया।
एक सेकंड, राहुल शर्मा के नाम से ये नहीं। हाँ वही मैं कह रही थी कि मैम को मुझे देखा था कि राहुल शर्मा के नाम से पॉप अप हुआ था। जी जी। तो प्रिंसिपल मैम का स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। वो तो दूसरी लेके गई है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम अभी बस सरस्वती वंदना हम लोगों ने गाई थी, अभी इस पे प्ले करी थी, और पड़ा होगा ऐसे ही। आपकी अनुमति के साथ में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे तो मैम आप एक बार हम लोगों को अनुमति। जी मैम, थैंक यू मैम। आज हमारे बीच इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रोफेसर वाइस चांसलर डॉक्टर ए.के. बख्शी जी, जो कि फाउंडर वाइस चांसलर पीडीएम यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ के हैं, और मैं उनको जो है आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपना उद्बोधन के माध्यम से हमको जो है लाभान्वित करें। मेरे ख्याल से सर अभी तो मुझे दिख रहे थे, उनका जो ग्रिड व्यू में थे। हाँ सर हैं, सर को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। सर मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप अपनी तरफ से अपने को अनम्यूट कर लें। जी सर, थैंक यू सर। हेलो। और इस कार्यक्रम में जो हम लोगों ने जो इसकी रूपरेखा तैयार की थी, उसमें ये इसको दिमाग में रखा था कि जितने भी हमारे गेस्ट हों वो इस प्रकार के हों कि जो हमारी नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उन पर वो एक अपने विचार, अपनी जो भविष्य की जो योजनाएं उसके अनुसार जो है वो एक दिशा निर्देशन दे सकें। तो इस आयोजन में मैं ऑनरेबल वाइस चांसलर पीडीएम यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ हरियाणा प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. बख्शी जी को आमंत्रित करती हूँ, और उनका मैं एक छोटा सा आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी कि डॉक्टर बख्शी एक बहुत ही विद्वान, प्रबुद्ध और एक एमिनेंट स्कॉलर हैं। आप किसी प्रकार के किसी उसके परिचय की उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग इस पोर्टल के माध्यम से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो उनको मैं चाहूंगी कि वो जो उनके बारे में थोड़ा जान पाए, और उनकी एक प्रोफाइल मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से शेयर करूंगी, उसको आप देख सकते हैं, और इसके साथ ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जितना भी कुछ उनके बारे में कहा जाए वो काफी कम है। तो मैं जो हूँ प्रोफेसर बख्शी जी का जो परिचय है वो देना चाहूंगी। क्या कर रही है? आप चेयरपर्सन है नेशनल रिसोर्स सेंटर केमिस्ट्री ऑफ एमएचआरडी के गुरु अंगद देव टीचिंग लर्निंग सेंटर के रहे हैं। इसके साथ ही यूपी आरटीओ के भी एक्स चेयरपर्सन रहे हैं, और आपने जो है वो ट्रेजरी एजुकेशन कमीशन मॉरिशस, उसके भी आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं। ये जो पोस्ट है वो उसी के समक्ष है जैसे कि हमारे यहाँ यूजीसी की होती है। तो आप मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन है। इसके साथ ही विजिटिंग साइंटिस्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, IISc मुंबई, बेंगलुरु भी रहे हैं। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप अपने उद्बोधन से हमारे महाविद्यालय को और जितने भी जुड़े हमारे यहाँ पे अतिथि हैं उनको जो है अपने विचारों से लाभान्वित करें, और जो भी भाषा आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका आप प्रयोग
कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास काफी सारे स्पीकर्स ने पूछा था कि कौन से माध्यम से हम बोलें, तो ये मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप प्लेटफॉर्म पे आइए और हम लोगों को लाभान्वित करिए अपने उद्बोधन से। Thank you very much and good morning to everybody. Esteemed Professor Dr. Vandana Sharma, Director UP Higher Education and Chief Patron of the conference, Dr. Rajiv Kumar Gupta, Rio Merit and Guest of the Honor, Professor Dr. Seema Sharma, Principal Government College Noida, then members of the organizing committee and various distinguished speakers, and last but not the least, various participants from all over the country. I extend a very, very warm greetings to all of you on the occasion of this national conference on future trends in economy, society, and technology, emerging new dimensions, being organized by Government PG College Noida. I deem it an honor and privilege to have been invited to deliver this talk. I inaugurate this national conference, and I sincerely hope that this meets the desired objectives. And I would also like to thank all the organizers for giving me this privilege and honor to share my views with all of you. Now, before I start my talk, let me share my screen because I have a presentation. Is my slide visible? Please confirm it. Yes, sir. Are my Yes, slides? Yes, sir. Yes, sir. And am I audible also clearly? Yes, sir. Yes, sir. One small thing which I would like to ask, whether I should speak in English or Hindi or mixed. Sir, any of your convenience. नहीं, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सर कोई भी चल, मैं मिक्स करके बोलता हूँ, क्योंकि आप हिंदी में बोल रहे हैं तो मुझे लगा, और मैं यूपी में भी रहा हूँ, राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में मैं वाइस चांसलर था, तो काफी कुछ हिंदी में वहाँ हमने सीखा, तो उस लिहाज से मैं दोनों का मिक्स करके, क्योंकि मेरी स्लाइड्स तो इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं दोनों का मिश्रण से ही बोलूंगा। तो देखिए, मेरे आज का जो टॉपिक है उसका हेडिंग है टेक्नोलॉजी इन हायर एजुकेशन इन इंडिया, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। देखिए, टेक्नोलॉजी हम सब जानते हैं कि इट इज एन एनेबलर, इट हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स। इफ वी लुक अराउंड, तो there is technology everywhere. Technology makes our lives easier and convenient. तो इसलिए ये प्रश्न भी उठता है कि टेक्नोलॉजी को हायर एजुकेशन में क्यों ना इस्तेमाल किया जाए। यहाँ पर हमारा पर्पस
टेक्नोलॉजी को क्रिएट करना नहीं है, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। और हमारे कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं हायर एजुकेशन में, उनको हम इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे सुलझा सकते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। जबकि टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत अच्छी तरह अफेक्ट किया है। There is hardly any sphere of human activity which has remained untouched by technology. लेकिन हायर एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का असर अभी तक उतना नहीं, हालांकि कुछ रेजिस्टेंस भी रहा है। इसलिए कई बार लगता है कि टेक्नोलॉजी के बारे में अभी भी लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं कि ये यूजफुल है कि नहीं है। ये एक बड़ी हैरानी की बात। एनीवे, मेरी जो ये टॉक है ये 3 पार्ट्स में होगी। पहले पार्ट में मैं ये बताऊंगा कि 21st सेंचुरी में जहां हम रह रहे हैं क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि इन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। और तीसरा हम बताएंगे कि फ्यूचर में और क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम करंट हायर एजुकेशन सिनेरियो देखते हैं। जैसा कि आपको इस स्लाइड से लग रहा है, 1950 के मुकाबले 2019 में हमारे पास करीब 993 यूनिवर्सिटीज, करीब 50,000 कॉलेज, 14 लाख टीचर्स और 37.4 मिलियन स्टूडेंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1950 के मुकाबले हमने कितनी ग्रोथ की है, बहुत ज्यादा। लेकिन इतनी ग्रोथ करने के बाद भी हमारी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है सिर्फ 26.3% है। इसका मतलब जितने भी यंग लोग हैं 18 से 23 साल के, उनमें से 26.3% ही सिर्फ हायर एजुकेशन परस्यू कर पाते हैं, बाकी नहीं कर पाते। एक तरफ तो हम कहते हैं कि भाई इंडिया यंगेस्ट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन फिर अगर हम 3/4 ऑफ आवर यूथ उनको हम हायर एजुकेशन ही नहीं दे पाते तो फिर ये एक अच्छी बात नहीं है। तो ये जो एक्सेस एक हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और दूसरा, इंटरनेशनल रैंकिंग हमारे इंस्टीट्यूशंस की अच्छी नहीं है। तो ये एक लिहाज से क्वालिटी को भी दर्शाता है। अभी 4-5 दिन पहले वर्ल्ड रैंकिंग्स आई थी, तो इसी में आप देख लीजिए कि इंडिया की तरफ सबसे ऊपर की जो पोजीशन थी वो IIT बॉम्बे की थी, और इसका भी रैंक 172 है। बाकी आप देख सकते हैं। और यूनिवर्सिटी जो इंडिया से थी वो दिल्ली यूनिवर्सिटी थी, जहां से कि मैं हूं, लेकिन यहां पर भी इसकी पोजीशन 501 है, जो कि अच्छी नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा ये इंस्टीट्यूट जो कि हमारे एमिनेंस के इंस्टीट्यूट हैं, तो ये वर्ल्ड लेवल पे अपना मार्क क्यों नहीं बना पा रहे, क्या वजह है। ये सारी रैंकिंग में क्राइटेरिया यूज होता है, लेकिन फिर भी हम क्यों नहीं इंप्रूव कर पाते। तो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि एक्सेस, फिर क्वालिटी, और एक हमें इक्विटी को भी देखना है। हम अपनी एजुकेशन को गरीबों को, जिनको ज्यादा जरूरत है, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दें। सो इक्विटी का ध्यान रखना है, इक्वालिटी का नहीं। और इस पिक्चर से ये आपको क्लियर नजर आ रहा है कि हम इक्विटी का क्या मतलब होता है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, मैं थोड़ी सी हायर एजुकेशन, क्योंकि हम सब हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए, ये कहा जाता है कि एजुकेशन सबसे पावरफुल वेपन है अगर आपने दुनिया को बदलना है। तो हमारी इतनी पॉपुलेशन है, अगर ये सारी की सारी एजुकेटेड हो जाए तो ये ऐसे हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज होंगे जिनसे कि हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मतलब हायर एजुकेशन ड्राइविंग फोर्स होती है इकोनॉमिक और सोशल ग्रोथ की।
और इट ड्राइव्स कॉम्पिटिटिवनेस एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। किसी ने ठीक कहा है कि किसी भी देश का भविष्य क्लासरूम में बनता है, टीचरों के माध्यम से बनता है। देखिए, जितने भी आप प्रोफेशन ले लीजिए, सीनियर आईएएस, ब्यूरोक्रेट्स ले लीजिए, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, आर्किटेक्ट, सब के सब अल्टीमेटली हायर एजुकेशन से निकलते हैं। तो ये हमारे शोल्डर्स पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग तो ये भी कहते हैं जो दुनिया का पहला डॉक्टर था, उस डॉक्टर से पहले भी कोई ना कोई टीचर जरूर रहा होगा जिसने डॉक्टर को बनाया होगा। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट क्रिएट्स ऑल अदर प्रोफेशंस। हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमें समझना चाहिए। हमने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना। स्टूडेंट्स में बी जस्ट 20% ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन हम ये कभी ना भूलें दे आर 100% ऑफ आवर फ्यूचर। हमारा सारा फ्यूचर उनके ऊपर है, तो हमें अपने आप को उनके साथ लगाना पड़ेगा। देखिए, एक मैं छोटी सी चीज आपको दिखा रहा हूं कि एक यूनिवर्सिटी है साउथ अफ्रीका में, उसके बाहर ये लिखा हुआ है कंटेम्पलेशन कि डिस्ट्रॉइंग डजंट रिक्वायर द यूज ऑफ एटॉमिक बॉम्ब्स और द यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। It only requires lowering the quality of education and allowing cheating in the examination by the student. मतलब किसी भी देश को अगर डिस्ट्रॉय या बर्बाद करना हो तो सिंपल तरीका है, एजुकेशन की क्वालिटी को लोअर कर दो और चीटिंग अलाउ कर दो। तो पेशेंट्स जो होंगे वो ऐसे डॉक्टर, बिल्डिंग्स कोलैप्स करेंगे, जस्टिस विल बी लॉस्ट। कहने का मतलब है कि हम सब एक ऐसे प्रोफेशन में हैं और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, स्टेटमेंट बहुत पावरफुल है कि द कोलैप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इज द कोलैप्स ऑफ द नेशन। वी शुड कीप दिस पॉइंट इन माइंड। अब हम 21वीं सदी में हैं और 21वीं सदी में हम हायर एजुकेशन में हमारे पास क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। एक तो सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि आप किसी भी डिसिप्लिन से हो, कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से हो, फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, सब डिसिप्लिन्स में नॉलेज बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। डबलिंग टाइम नॉलेज का बहुत कम हो गया है। अब ये देखिए, इसी टाइम नॉलेज डबल होती थी 150 साल में, फिर 50 साल, फिर 5 साल, और अब नॉलेज करीब 73 डेज में डबल हो रही है। तो आप देखिए कि हम सब लोग तो कुछ भी नहीं जानते। ये कहा जाता है कि what we know is a drop and what we do not know is an ocean। तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। नॉलेज से रिसर्च डिफिकल्ट होती जा रही है क्योंकि लिटरेचर बहुत बढ़ रहा है, और नई जनरेशन को कैसे बताएंगे, ये हम तभी कर सकते हैं जबकि ये जो बढ़ती हुई नॉलेज है इसको एजुकेशन सिस्टम में डाला जाए, सिलेबस या रिवाइज किया। तो दूसरा चैलेंज जो मुझे है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। देखिए, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं एजुकेशन सिस्टम में। हम क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, और उन बच्चों को एग्जामिन कैसे। अब हमारे यहाँ कोर्सेज बहुत हैवी होते हैं। अब मैंने क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी की लिखी है। अब आप देखिए कि 11th 30 चैप्टर केमिस्ट्री के डाले जाते हैं। क्यों? इतना हैवी सिलेबस और कई आउट टॉपिक्स हैं, नए टॉपिक्स डाले नहीं जा रहे। इससे क्या हो रहा है, गैप बिटवीन व्हाट इज लर्न्ड एंड व्हाट शुड बी लर्न्ड इज इंक्रीजिंग। ये एक हमारे लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम बन गया है।
रेगुलर रिवीजन नहीं होते, स्कूल में होते हैं तो यूनिवर्सिटी में नहीं होते, कॉलेजों में नहीं होते, ये एक प्रॉब्लम है। देखिए, ये भारत रत्न थे CNR राव, इन्होंने कहा था कि 90% यूनिवर्सिटीज में आउटडेटेड करिकुलम है, बहुत पुराना। तो जो बच्चे ऐसे निकलेंगे तो वो फिर आगे जाके क्या कर पाएंगे? हमें ये सोचना है। अभी आया था ये 1 महीने पहले कि अब NCERT सारे सिलेबस रिवाइज कर रही है, और अब इनको सोच आई है कि हम सिलेबस को बहुत कम करें, सिर्फ कोर एसेंशियल्स को ही सिलेबस में डालें। दूसरा, देखिए, टीचिंग और लर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है एजुकेशन में। हमारे यहाँ अभी भी फोकस एग्जामिनेशन, रटने पे और स्कोरिंग हाई मार्क्स पे है। अगर मैं एक सेंटेंस में कहूं तो मैं कहूंगा कि हमारा सिस्टम बच्चों के माइंड्स को चैलेंज नहीं करता। टीचर ने पढ़ाया, बच्चों ने रट लिया, अगले एग्जाम दिया, नंबर आ गए, बस वही। उसका क्या मकसद है? क्या नॉलेज का मतलब यही है? इससे तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। सिर्फ हम डिग्री वाले स्टूडेंट्स ही प्रोड्यूस करेंगे जिनको कुछ खास, उनके पास नॉलेज होगी पर उन्हें यही नहीं पता चलेगा कि नॉलेज का हम क्या करें। आज की रियलिटी देखिए ये है, आप इस पिक्चर को देखिए। कोई भी कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं लेना चाहता, सिर्फ हर कोई चाहता है कि 90+ नंबर हमारे आ जाए। हमारे यहाँ सिस्टम में थिंकिंग, इनोवेशन और क्रिएटिविटी नहीं एनकरेज की जाती। क्रिएटिविटी का मतलब है नए आइडियाज आए, इनोवेशन का मतलब है उन नए आइडियाज को अप्लाई करें। इनोवेशन के बिना तो कोई देश एडवांस ही नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यहाँ एनकरेज ही नहीं होता। तो एक्सपेरिमेंटल वर्क भी हमारे स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में कोई बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है। मैं तो कितने सालों से इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में रहा, वर्ल्ड में कितनी जगह काम किया, बहुत हम इस मामले में आउटडेटेड हैं। हम बच्चों को कहते हैं लर्न करो, लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे लर्न करो। लर्निंग देखिए 6 लेवल हायरार्की होती है। रिमेंबर सबसे नीचे होता है, फिर अंडरस्टैंड होता है, फिर अप्लाई होता है, फिर एनालाइज होता है, फिर इवेल्युएट होता है, और सबसे ऊपर क्रिएटिविटी आती है। तो ये कहाँ किया जाता है? ज्यादा से ज्यादा बच्चा याद कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा और थोड़ा बहुत अप्लाई कर लेगा, उससे ऊपर करते ही नहीं। और हमारे टीचर्स का भी कसूर नहीं है, वो भी तो देखो इसी सिस्टम का प्रोडक्ट है। उन्हें भी नहीं पता होगा कि हम इवेल्युएट या क्रिएटिविटी कैसे एनकरेज करें। इसलिए टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना बड़ा ही जरूरी है। देखिए, एक छोटी सी वीडियो है, आप इसको देखिए, 3 मिनट की है, लेकिन ये आंखें खोलती है कि देखिए हमारे सिस्टम में हमारी कितनी बड़ी कमी है। देखिए जरा इसको। For decades, people have been finding hundreds of flaws in the education system. No conceptual understanding, no creativity, children are stressed, and the list goes on. All these are symptoms. But what is the root cause to all this? What is the fundamental flaw in the education system? Let us play a rapid fire game. You have 1 second to answer every question. Let's start. First question. A4? Okay, no more questions. Did you think apple first? 98% of people are most likely to think so. Because that was what we were told in our kindergarten. Imagine that this was done differently. Say we had asked you for all the words starting with A. And, is, April, apt. Different answers would have popped out of everyone's head. Do you see where the problem is? Before children start going to school, every child is unique. Every child thinks different. But the education system makes every child think the same. This is the fundamental flaw in the education system. Why did this start? During the Industrial Revolution in the 18th century, the education system was designed to make children ready to work in factories. The factories did not require people to think, but to only work like robots. So, the education system stripped children of their freedom to think and destroyed their true potential.
The same education system continues even today. Only the industries have changed. A study by NASA shows that 98% of children think different before they start going to school. As they go through this education system, at 25 years of age, only 2% think different and 98% think the same. So how does the education system make every child the same? Let's go back to the apple example. Kindergarten lessons told us that A is for apple. We asked you for words that start with A. Our education system gave us the answers. We asked you a question. Answers make you the same. Questions make you different. Right from kindergarten, the education system keeps giving answers. Instead of asking children how plants make food, the science teacher gives you the definition of photosynthesis. Instead of asking them to describe the sun, the teacher tells them that the sun is a ball of fire at the center of the solar system. Through the years in school, children lose the capability to think on their own. Whether it is their choice of career or their relationship or any situation in life, they become. So, I think this very well summarizes कि हमारे सिस्टम में कितनी बड़ी कमी है कि हम हर एक चीज का रेडीमेड आंसर दे के बच्चों की जो सोच शक्ति है उसको करीब करीब खत्म कर देते। इसलिए हम टीचर्स को ये सोचना है कि हमारा फोकस रिमेम्बरिंग और अंडरस्टैंडिंग से हटकर आगे अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग पे जाए। ये बहुत जरूरी है। इवन एग्जामिनेशन सिस्टम भी आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंस है एग्जामिनेशन सिस्टम की, क्योंकि एग्जामिनेशन सिस्टम को जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट टेस्ट करनी चाहिए, ना कि रोट लर्निंग। ये कहा जाता है कि असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग। जिस तरीके आप बच्चों को असेस करना शुरू कर दोगे, बच्चे वैसा ही लर्न करना शुरू करते हैं। बच्चे तो विद एन ओपन माइंड आते हैं। हमारे क्वेश्चन अगर रोट वाले लर्निंग वाले होंगे तो वो रोटना शुरू कर देंगे, अगर अंडरस्टैंडिंग के होंगे वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देंगे। तो आप टीचर के हाथ में बहुत बड़ा है कि आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को इस तरीके ढालें। गवर्नमेंट भी अब रियलाइज कर रही है और हमें अब क्या चाहिए, असेसमेंट प्रोसेस को साइंटिफिक बनाना चाहिए टू एनकरेज मल्टीपल स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। जो मैंने 6 चीजें बताई थी, रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, वो सारी टेस्ट होनी चाहिए। और ये देखिए गवर्नमेंट ने भी डिसाइड करा है कि क्लास 10th 12th का 2020 से होना था कि भाई रोट लर्निंग के क्वेश्चंस कम होंगे, एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी टेस्ट होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट होगी। लेकिन देखिए 70 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, उससे ज्यादा हो चुका है। अब हम जाके ये रियलाइज करें। एक और बड़ा चैलेंज जो हमारे सिस्टम में है, जो मैं फील करता हूँ, क्योंकि मैं स्कूल एजुकेशन के साथ भी जुड़ा हूँ, मैंने सारे टीचर्स को ट्रेन करा जब +2 लागू हुआ था। फिर मैं टीचिंग प्रोफेशन में, मैं जब 21 साल का भी नहीं था जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगा, क्योंकि मैं टॉपर और रिकॉर्ड ब्रेकर था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो इसको मैंने बड़े क्लोजली कई सालों तक देखा है कि कहाँ हमारी गलती हैं, और वो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ क्रिएटिव माइंड्स की कमी है। देखिए इंडिया में 1930 के बाद, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला। सीवी रमन को नोबेल प्राइज मिला था 1930 में फिजिक्स के अंदर। उसके बाद किसी भी इंडियन साइंटिस्ट को यहाँ काम करते हुए नोबेल प्राइज नहीं मिला। इन साइंटिस्ट को मिला, लेकिन ये बाहर काम कर रहे थे, एनआरआई से। तो ये भी एक हमारी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि कहीं ना कहीं कमी है कि हम लोग क्रिएटिव नहीं है। अब आप इतनी यूनिवर्सिटीज में इतने कोर्सेज आप पढ़ाते हैं, आप सारे टीचर्स हैं, कितनी जगह हम इंडिया का कंट्रीब्यूशन मैटर का आता है? बहुत कम। फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, सब पे हम फॉरेन का कंट्रीब्यूशन कोट करते हैं। याद रखिए कि नोबेल प्राइज कोई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं है।
इस लेवल पे एक्सेल करने के लिए परसिस्टेंस चाहिए, रेजिलियंस चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, ओपन माइंडेडनेस चाहिए और कोलैबोरेशन चाहिए। हम आइसोलेशन में काम करते हैं। we need to build bridges and not walls. एंड परसिस्टेंस का मतलब हम इमीडिएट गेन चाहते हैं कि 2-3 साल में ही बहुत जबरदस्त फायदा हो जाए। नहीं, पिछले साल जो नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री में, जिसको, वो 97 ईयर ओल्ड था। देखिए कितनी लगन से उसने इस एज तक काम किया होगा। तो ये हमारी कमियां हैं। तो अब मैं पार्ट 2 में आता हूं कि इतने सारे प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन अब हम क्या कर सकते हैं। देखिए, टेक्नोलॉजी कुछ हद तक हमें इसमें मदद कर सकती है, पूरा सोल्यूशन तो नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो मैन मेड क्रिएशन है ना, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, लेकिन अल्टीमेटली जो चीजें दिमाग में होनी है वो तो नहीं कर सकती। तो टेक्नोलॉजी, आईसीटी को हम यूज करते हैं आजकल। आपने सब तरफ सुना होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये एक अम्ब्रेला टर्म है दैट एनकम्पासेस ऑल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज दैट प्रोवाइड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब इंटरनेट, वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन, डिजिटल टीवी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब के सब आईसीटी के अंडर आते हैं। और इसी से आता है आपका ई लर्निंग। और आईसीटी ने सारे एरियाज हायर एजुकेशन के उन पे इम्पैक्ट किया है, ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए, आईसीटी ने टीचिंग और लर्निंग में भी इम्पैक्ट किया है। ई लर्निंग आ गया है, मूक्स आ गए हैं। अब आपको नहीं पता हो तो मैं थोड़ा सा बताऊंगा। ई लर्निंग का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग। फोकस तो अभी भी लर्निंग पे है, मैकेनिज्म बदल गया है। तो ई लर्निंग वो है जो आईसीटी की मदद से हम लर्न करते हैं, उसे हम ई लर्निंग कहते हैं। अब लर्न करने के लिए आपको कुछ कंटेंट तो हो ना, जिससे आप लर्न करोगे, उसे हम ई कंटेंट कहते हैं। और ई कंटेंट बनता है स्टैटिक कंटेंट से। देखिए, आप इतने बीए, बीएससी, एमए में पढ़ाते हैं, कोई भी एक सेमेस्टर का पेपर ले लो, 4 क्रेडिट का मान लो, तो उसका सिलेबस ले लो। उस सिलेबस को लेके आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसका स्टैटिक कंटेंट लिखेंगे उस सिलेबस के हिसाब से। वैसे तो सिलेबस को 35 से 40 पार्ट्स में बांटा जाता है और हर एक पार्ट को एक एक करके लेके पहले उसका स्टैटिक कंटेंट लिखा जाता है उस पोर्शन सिलेबस के। स्टैटिक कंटेंट का मतलब होता है टेक्स्ट, वैल्यू एडिशन, क्विज़ेस, ग्राफिक्स, सारा कुछ उसके हिसाब से लिखो। उसके बाद फिर टेक्निकल टीम क्या करती है, मल्टीमीडिया एनरिचमेंट करती है, उस कंटेंट को देखती है और जहां जहां जरूरी हो ऑडियो डालती है, वीडियो डालती है, एनिमेशन डालती है, सिमुलेशन डालती है, ताकि लर्निंग इंटरेस्टिंग बने। क्योंकि ई लर्निंग सेल्फ लर्निंग है, कोई टीचर तो होगा नहीं, तो इसलिए ये सारी चीजें ऐड करनी पड़ती हैं ताकि बच्चा एंगेज्ड रहे। तो जो मल्टीमीडिया एनरिचमेंट स्टैटिक कंटेंट का हो जाता है तो उसको ई कंटेंट कहते हैं। तो आपने एक पोर्शन के लिए किया तो उस एक पोर्शन को हम 1 मॉड्यूल कहते हैं। तो ऐसे उस सेमेस्टर पेपर में 35 से 40 मॉड्यूल्स। तो ये बेसिकली ई कंटेंट है। अच्छा, ई कंटेंट वही है जो कि वो सारे फीचर रखे जो एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग बनाए सेल्फ लर्निंग। मूक्स का नाम आजकल आपने बहुत सुना होगा। हमने कंट्री में सबसे ज्यादा मूक्स बनाए हैं। हमारा इंस्टीट्यूशन है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, MHRD का है। तो ये टर्म करीब 2008 में कॉइन हुई थी। मूक का मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव हम इसलिए कहते हैं कि कई लाख बच्चे भी इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। ओपन हम इसलिए कहते हैं कि एनरोल होने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, आप सिंपली लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, पर अगर आपको ग्रेड्स लेने हैं तो फिर आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। फिर ये ऑफर होता है थ्रू ऑनलाइन। और कोर्स का मतलब एक सेमेस्टर पेपर का एक मूक होता है। अगर आपका MA इकोनॉमिक्स में 2 साल में टोटल 16 थ्योरी के पेपर्स हैं तो आपके 16 मूक्स हैं।
हमने इकोनॉमिक्स का बनाया है, कॉमर्स का बनाया है, केमिस्ट्री का बनाया है। ये सारे मूक्स हमारे कंट्री इनसे फायदा उठा रही है। और ये मैंने आपको बताया था अभी मूक ई कंटेंट बना, उनको अरेंज करा, और एक मूक में 35 से 40 मॉड्यूल होते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया, और इसको 15 हफ्तों में कवर किया जाता है, क्योंकि 15 हफ्ते एक सेमेस्टर का टाइम माना जाता है। तो ये ऐसे लर्निंग होती है। देखिए बहुत ब्यूटीफुल स्लाइड है। पहले 7 हफ्तों में आप कुछ मॉड्यूल्स लर्न करोगे, फिर रिवीजन और असेसमेंट होगा, फिर वीक 9 to 14 में बाकी मॉड्यूल्स करोगे, फिर वीक 15 में फिर रिवीजन होगा, और उसके बाद प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन। तो ये मूक ऐसे चलेगा। एक मूक में करीब 40 घंटे की ड्यूरेशन होती है और 20 घंटे उसमें वीडियोस होते हैं। तो ऐसे मूक चलता है। और हमने तो जैसे मैंने आपको बताया कि करीब 50 मूक बनाए हैं। जैसे मेरा एक मूक है, इसमें हर एक मूक के पहले एक 3 मिनट की वीडियो होती है जो बताती है कि उस मूक के अंदर हर हफ्ते क्या क्या कोर्स कवर होगा। जस्ट Dear students, welcome to this MOOC on quantum chemistry for postgraduate students. This MOOC, which you are required to complete in 15 weeks, has been developed in a very systematic and logical manner. In the first week, you will learn about the fundamentals of quantum mechanics, such as what is quantum mechanics, how did it originate, what's its role in chemistry, and how does it operate, etc. This will be followed in the second week, solve Schrödinger equation for a rigid quantum mechanics. देखिए इस तरह ये पूरे वीक का है। In the 9th and 10th, ये देखिए पूरे quantum mechanics. 15 मतलब करीब In the last, after the completion of this course, there shall be a proctored examination about which. तो यही मैंने आपको अभी बताया। तो बेसिक फिलॉसफी मूक की है कि 4 A's, एनी टाइम, एनीवेयर, एनीवन, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। एक मूक से जितनी बार आप चाहें लर्न कर सकते हैं, कभी भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। यू कैन डिसाइड योर ओन पेस ऑफ लर्निंग। कितनी सहूलियत। क्लास में टीचर को तो नहीं आप दोबारा कह सकते, और क्लास में आपको सीखने के लिए उस टेबल नहीं, आप जब चाहो अपने मोबाइल फोन पे ही सीख सकते हैं। तो इंडिया में कई कोर्सेज हैं, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट नेशनल कोऑर्डिनेटर्स को दी गई है। यूजीसी लैपटॉप पे नहीं हूँ, उसमें मैं मोबाइल पे। एंड सीईसी बना रहा है। अनम्यूट सम, प्लीज अनम्यूट। दे आर अनम्यूटेड, सो रिक्वेस्ट नहीं, आवाज नहीं आ रही। और ये जितने भी मूक्स हैं एक स्वयं पोर्टल है के ऊपर अपलोड किया हुआ है। तो ये वेबसाइट है, आप अगर यहाँ हैं तो यहाँ आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। देखिए विजन गवर्नमेंट की ये है कि इस समय करीब 2000 मूक्स बनाए जा चुके हैं, अपलोडेड है। आप जाएं आपको सब कुछ मिलेगा। तो अल्टीमेटली विजन ये है कि they will be like ATL, any time learning, just as you have ATM, any time money, वैसा है। तो इंडिया के एक फायदामंद क्या है इससे कि मैंने जैसे पहले कहा कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारी 26.3 है। अब इन मूक से दुनिया में, कंट्री में कहीं भी बैठा हो आदमी सीख सकता है। तो ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने में मदद कर सकता है। लर्निंग इज लर्नर सेंट्रिक एंड इंटरेक्टिव है। कई क्वेश्चंस होंगे, आप स्क्रीन पे अटेम्प्ट करें, अगर आंसर गलत है तो ये बताएगा गलत क्यों है, ठीक है तो बताएगा ठीक क्यों है। सो यू लर्न, एंड लर्निंग इज वन क्लिक अवे। और फिर हाई क्वालिटी एजुकेशन इज अवेलेबल टू द मासेस। पूरी कंट्री में ये एजुकेशन अवेलेबल है।
और कई लोग बहुत फॉन्ड ऑफ होते हैं लर्निंग का, इट हेल्प्स देम टू रियलाइज द ड्रीम ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। मूक्स का एक ध्यान रखिए कि मूक्स आर डेवलप्ड बाय द टॉप पीपल ऑफ द कंट्री, सो इट इज लाइक द बेस्ट ऑफ द कंट्री एड्रेसिंग टू द रेस्ट, तो ध्यान रखिएगा। यस, अब तो ये भी आ चुका है कि 20% कोर्सेज किसी भी एक सेमेस्टर में आप मूक के थ्रू कर सकते हैं, और ये परसेंटेज अब 20 से 40% बढ़ने वाला है। लेकिन मूक्स को बनाने में कई चैलेंजेस हैं। क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए, इंटरएक्टिविटी होनी चाहिए, एकेडमिक और टेक्निकल टीम में कोऑर्डिनेशन, क्योंकि एकेडमिक टीम स्टैटिक कंटेंट लिखती है, टेक्निकल टीम मल्टीमीडिया एनरिचमेंट, चाहे तो उनका कोऑर्डिनेशन हो, टाइम बाउंड मैनर में कंप्लीट हो टास्क, ये ना हो कि कई साल लग जाए मूक बनने में और जब तक बने कोर्स ही बदल जाए। और इंडिया में ज्यादातर मूक्स जो हैं वो मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में बने हैं, तो हमें रीजनल लैंग्वेजेस में भी उनको ट्रांसलेट करना है। तो इसकी एक बहुत खासियत है कि इसको आप लैंग्वेज सिंपल हो, क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन हो, एबिलिटी टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स हो, मतलब मूक्स ऐसे हों जो ब्राइट स्टूडेंट्स के लिए भी हों, वीक स्टूडेंट्स के लिए भी हों, सब लर्न कर सकें। इंडिया में एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ इंटरनेट स्पीड का। हमारी इंटरनेट स्पीड कम है, लेकिन मूक्स को जब आप एक्सेस करेंगे तो कोई डिवाइस से ही करेंगे, तो इंटरनेट स्पीड अभी बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन कई बार लोग कहते हैं कि लोगों के पास डिजिटल डिवाइड, देखिए इस समय वर्ल्ड में 4.4 मिलियन इंटरनेट यूजर्स, और इनमें से 600 मिलियन इंडिया में है, और उनमें से भी 40% रूरल एरियाज में। तो धीरे धीरे रूरल एरियाज में भी आप देखेंगे कि अवेयरनेस फैलता जा रहा है और लोग टेक सेवी होते जा रहे हैं। तो देखिए अब एक ऐसी सिचुएशन आ रही है कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए हर एक क्लासरूम में और हर एक स्टूडेंट और टीचर्स के हैंड में, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी द पेन एंड पेपर ऑफ आवर टाइम, and it is also the lens through which we will experience much of our world. So please remember, technology is going to play a very very important role. ये भी एक रिपोर्ट था कि इंडियन लर्नर्स बढ़ते जा रहे हैं मूक्स के लिए। अभी कोरोना के टाइम पर ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 100 टॉप यूनिवर्सिटीज दे कैन ऑफर ऑनलाइन कोर्सेज। हर एक यूनिवर्सिटी अपने ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर सकती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स को बनाना इतना आसान नहीं, कई साल लग जाते हैं। फिर हर एक यूनिवर्सिटी को अपना एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम रखना पड़ेगा जिसपे अपने बनाए हुए कोर्सेज को होस्ट करो और वहीं से सारा मैनेज हो। सो इट्स नॉट दैट इजी। आईसीटी को हम पहले मैंने टीचिंग और लर्निंग की बात करी, रिवीजन ऑफ द सिलेबाई में भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ईमेल, डिस्कशन फोरम के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बड़ी जल्दी डिसीजन हो सकता है और रिवीजन ऑफ द सिलेबाई हो सकता है। और रिवीजन ऑफ द सिलेबाई, जैसा कि मैंने बताया कि नॉलेज बड़ी तेजी से बढ़ रही है, इसलिए बहुत जरूरी है। रिसर्च में भी यूज हो रहा है आईसीटी को, क्योंकि रिसर्च के लिए जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि लिटरेचर बहुत बढ़ गया। अगर आपने स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च करना है तो आपको लिटरेचर सर्वे करना है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस बना दिए हैं। दे आर द रियल इंफॉर्मेशन सोर्स। इनको यूज करके आप कुछ भी लिटरेचर सर्वे कर सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस हर एक सब्जेक्ट में है। आप इसको सर्च करिए, सब मिल जाएगा। इवन असेसमेंट में भी आईसीटी अब आ गया है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस बड़े पॉपुलर हो गए हैं, इनका इमीडिएट रिजल्ट आ जाता है, यूनिफॉर्म मार्किंग होती है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सेल्फ असेसमेंट हो जाता है, अभी कहाँ मैंने गलती की। लेकिन इन सब में प्रॉब्लम यह है कि टीचर्स ऐसे चाहिए जो ऐसे क्वेश्चन सेट करें ऑनलाइन एग्जामिनेशन में भी, जो बच्चों को, जो बहुत अच्छा है, जो एवरेज है, जो बिलो है, उनको डिफरेंशिएट कर सकें।
ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि भाई पेपर बड़ा आसान है। तो इससे ये होगा कि जो बहुत हार्ड वर्किंग है उनके लिए गलत मैसेज चला जाएगा कि देयर इज नो नीड टू वर्क। गवर्नमेंट ने भी अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्रिएट करी है, आप जानते होंगे इसको, 2017 से क्रिएटेड है। तो ये सारे एग्जाम जो आप यहाँ देख सकते हो लिस्ट दी हुई है, ये सारे अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करते हैं। तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अब चीजें टेक्नोलॉजी की मदद से हायर एजुकेशन कितना बदल रहा है। तो इसलिए और अब एक जो और नई चीज आ गई है कि आईसीटी इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ फैकल्टी। पहले कॉलेज के टीचर कहीं जाके रिफ्रेशर या ओरिएंटेशन कोर्सेज करते थे, उसमें कितना 30-40 लोग होते थे, बहुत ज्यादा नहीं हो पाता था। गवर्नमेंट ने अब एक अर्पित प्रोग्राम शुरू किया है, इसे कहते हैं एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग। इसके गवर्नमेंट ने कंट्री में कई नेशनल रिसोर्स सेंटर्स बनाए हैं और हर एक नेशनल रिसोर्स सेंटर को एक डिसिप्लिन दे दिया कि भाई आप इस डिसिप्लिन में अर्पित प्रोग्राम बनाओ। जैसे केमिस्ट्री में हम बना रहे हैं, मैं चेयरमैन हूँ इसका, ये गुरु अंगद देव टीचिंग लर्निंग सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहाँ है। तो इसमें ये हम केमिस्ट्री का रिफ्रेशर कोर्स बनाते हैं ऑनलाइन। 2018 में बनाया, फिर 2019 में बनाया। तो ये एक नया है। हमारे सेंटर को इन्होंने इनागुरेट करा, आपके ये स्मृति ईरानी जी आई थी, शी केम टू इनागुरेट। जस्ट देखिए, आज मैं विशेष रूप से बधाई देती हूँ प्रोफेसर बख्शी को, विमल जी को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस सेंटर को जीवित रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया। टीचर की ललक उसके उत्साह का उदाहरण है कि भारत सरकार ने दिसंबर 2000 एनीवे तो ये जो अर्पित प्रोग्राम्स है इनका फोकस होता है लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पे, फिर इनका न्यू एंड एमर्जिंग एरियाज पे, और फिर पेडागोजिकल इनोवेशंस एंड मेथडोलॉजीज पे। हमारे जो केमिस्ट्री के हमारे प्रोग्राम्स हैं, शायद आप में से जो केमिस्ट्री के टीचर हैं वो जरूर जानते होंगे, ये प्रोग्राम्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं और कई हजार टीचरों ने इनसे फायदा उठाया है। मैं आपको 2-3 मिनट में सिर्फ ये दिखाना चाहूंगा, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो इस अर्पित 2019 की। आप देखिए कि कैसे टेक्नोलॉजी से बदल रहा है प्रोफेशनल डेवलपमेंट। देखिए जाए। Myself Dr. Vimal Raj, and I am the coordinator of National Resource Center of Chemistry of MHRD, Government of India at SCTB Khalsa College, University of Delhi. And myself, Professor A.K. Bakshi. We welcome you all to the Arpit 2019, which is going to provide you a unique opportunity to learn as per your convenience. For this online refresher course, we have selected a variety of interesting and exciting topics, so that these are useful for all the UG and PG chemistry teachers of our country, irrespective of their specialization. Let's have a look at the variety of the modules which have been developed with the help of leading experts from all over the country. To begin with, we will have a special module as Chem News, which will bring the latest news to you from the world of chemistry. The modules entitled Chem Talks will focus on the latest developments as well as new and emerging areas of chemistry. In the Chem Safe Lab modules, we will focus on various measures to be taken to prevent accidents in our chemistry lab. In the module on Chem Nobel Laureates,
This time we will be focusing on life and contributions of Ernest Rutherford. Through the modules titled Chem Pedagogy, we will highlight on improving curriculum development and question paper setting. You will all agree that there are many difficult topics in chemistry. In the modules entitled Chem Simplified, we will take some of these topics and explain them in a very simple. To commemorate 150th anniversary of periodic table in 2019, we have introduced in this course one module entitled Chem History. Another interesting module of this online course is going to be Chem Industry, in which this time the focus will be on pharmaceutical industry and career options for our chemistry students. In the Chem Error module, we will explain the correct usage of the SI. Anyway, so you get an idea that how professional development of the teachers is going to change with the help of technology. आप देखिए किसी भी सब्जेक्ट के हैं उसका एक नेशनल रिसोर्स सेंटर जरूर होगा, उसका पता करिए, उसको स्वाइम पोर्टल पे देखिए तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि 14 लाख टीचर जो हैं वो सारे के सारे हर साल ऐसी ट्रेनिंग एक्वायर करें। ये हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया में हमारे मूक्स की रिपोर्ट थी, ये भी टाइम्स ऑफ इंडिया में है, ये पेपर में हमारे केमिस्ट्री के नेशनल रिसोर्स सेंटर का था। ये मेरा एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया एजुकेशन टाइम्स में अबाउट स्वाइम पोर्टल। अब एक आईसीटी से नए पेडागोजिकल इनोवेशंस भी आ गए हैं। देखिए हम सब टॉक और चॉक मेथड से पढ़ाते हैं, इसकी एडवांटेजेस हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, मेनली मोनोलॉग है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट आप बोर्ड पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये मानता है कि सारे स्टूडेंट्स लर्न इन एन आइडेंटिकल फैशन, दैट मे नॉट बी ट्रू, यू कांट सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन द क्लास, इट इज स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए अब नई पेडागोजीज आ गई हैं। एक हो गया ब्लेंडेड लर्निंग, इसका मतलब कि आप क्लास में क्लास टीचर से भी सीखें और फिर ऑनलाइन मूक से भी लर्न करें उसी कोर्स के बारे में, तो दोनों का मिश्रण। और दूसरी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नई डेवलपमेंट है फ्लिप्ड लर्निंग, ये आने वाले टाइम में इसी का बोलबाला रहेगा। देखिए ट्रेडिशनल मॉडल में टीचर पढ़ाता है और बच्चों को कुछ होमवर्क की एक्टिविटीज दी जाती है, लेकिन फ्लिप्ड में टीचर स्टूडेंट को एक वीडियो देगा, वीडियो से वो देखेगा 1-2 बार घर में, और जो समझ आएगा ठीक है, जो नहीं समझ आया नोट करा, और फिर अगले दिन क्लास में उससे आगे डिस्कस करा। तो इसका फायदा ये है, आप देखिए यहां से क्लियर हो जाता है। ट्रेडिशनल मॉडल में क्लास में आपका पहली दोनों स्टेजेस रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्लास में ही हो जाती है, क्योंकि टीचर कराता है, और बाकी जो एक्टिविटीज हैं अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, ये आउटसाइड द क्लास बच्चों को करना पड़ता है अपने आप, क्लास में नहीं आप कर सकते, इतना टाइम नहीं होता। लेकिन फ्लिप्ड मॉडल में अब आप देखिए कि जो नीचे के दो हैं रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, ये आप वीडियो के मॉडल से देख सकते हैं। अपने आप 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, कुछ समझ तो आएगा, उसको नोट करिए। तो ये तो आउटसाइड द क्लास हो गया, और बाकी एक्टिविटीज फिर आप क्लास में। तो इससे बच्चे की ये हायर ऑर्डर लर्निंग स्किल्स एक्वायर करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। गवर्नमेंट ने 9,000 करोड़ का ये प्लान करा है फ्लिप्ड लर्निंग पे ही है। याद रखिए कि इफ वी टीच टुडे स्टूडेंट्स एज वी टॉट यस्टरडेज, वी रॉब देम ऑफ टुमारो। आने वाली इस सदी में टीचर्स के रोल्स टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्कुल बदल रहे हैं। याद रखिए, वैसे टीचर का रोल क्या होता है? डिसिमिनेट नॉलेज, पढ़ाना, फिर रिसर्च करना, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट करना। और एक अच्छा टीचर कौन होता है? मैंने एक लिखा था, मेरे ख्याल में सबसे अच्छा टीचर वही है जिसकी सबसे ज्यादा अच्छी पहले कमांड हो सब्जेक्ट पे। अगर आपको सब्जेक्ट ही अच्छी तरह नहीं आता तो फिर आप नहीं बन सकते।
और आपकी टीचिंग शुड रिफ्लेक्ट द अमाउंट ऑफ थिंकिंग यू हैव डन ऑन द सब्जेक्ट. टीचिंग इज नॉट merely पासिंग डाउन इंफॉर्मेशन. और कई बार तो ये बड़ा अच्छा होता है कि आप क्लास में जाने से पहले ये सोचें कि जो टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हो उसके बारे में बच्चे के मन में क्या क्या क्वेश्चन उठ सकते हैं, उनको सिस्टमेटिक और लॉजिक वे से प्रेजेंट करो, तो आप स्टूडेंट भी सोचेगा कि आप बहुत बड़े टीचर हो. लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी. और एक टीचर को मतलब टीचर शुड हैव द एबिलिटी टू कम डाउन टू द लेवल ऑफ द वीकेस्ट स्टूडेंट. सबको साथ लेके चलना. A teacher is not only for bright students. और आप अपने लेक्चर को बड़े सिस्टमेटिक और लॉजिकल मैनर में डिलीवर करें, ये भी एक क्वालिटी होनी चाहिए. कई टीचरों की नॉलेज बहुत होती है लेकिन जब प्रेजेंटेशन का क्वेश्चन आता है तो वो मिक्सअप कर देते हैं. वहां पर एक बड़ा प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर ए लॉट. कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. और एक आपको टीचर से, स्टूडेंट से फीडबैक लेना चाहिए. मतलब मैंने तो कम से कम 30 साल तक जितने भी मेरे स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, MA, MS, MSc के, और उन सब से मैंने हमेशा फीडबैक लिया है सेमेस्टर के एंड में, जब 40, 45, 30, 40 लेक्चर हो चुके हों. क्योंकि एक चीज याद रखिए, स्टूडेंट 1000 गलतियां करे लेकिन एक अच्छे टीचर को पहचानने में कभी गलती नहीं करता, कुछ भी हो जाए. The influence of a good teacher can never be erased. And the best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see. Direction सिर्फ बता दीजिए, बच्चा बाकी अपनी मेहनत से करे. लेकिन 21st सेंचुरी में अब आपके रोल बदल जाएंगे. कैसे? अब आपको टेक सेवी होना पड़ेगा. ICT की स्किल्स आनी चाहिए पूरी की पूरी. क्योंकि अगर आपके बच्चे मान लो किसी मूक में हैं, कंट्री के अलग अलग कॉर्नर में हैं, अगर उनके कोई क्वेश्चन है तो कौन आंसर करेगा? तो यू शुड नो हाउ टू मैनेज वर्चुअल क्लासरूम एंड डिस्कशन फोरम. जैसे ये वेबिनार हो रहा है तो ये भी तो एक वर्चुअल हो रहा है ना. हम आपस में क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं. वैसा आपको आना चाहिए. कोरोना से पहले तो ज्यादातर लोगों को नहीं पता था जूम या गूगल मीट या ये चीजें नहीं पता थी. अब धीरे धीरे आ गई ना, तो ऐसे ही हमें करना पड़ेगा. तो देन यू शुड बी प्रोफिशिएंट इन द डेवलपमेंट ऑफ ई कंटेंट एंड मूक्स. देखो, ई कंटेंट और मूक्स टीचर ही बनाते हैं, पर इसमें आपकी अच्छी राइटिंग स्किल्स हो, अच्छा सब्जेक्ट आता हो और अच्छी पेडागोजी. तो ICT, if used creatively, can make a big difference in the way the teachers teach and the students learn. And please remember that integration of ICT with higher education is essential for creating a holistic learning environment, focusing on quality, innovation, expansion, excellence and inclusion. कितना अच्छा किसी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी कैन बिकम द विंग्स that will allow the educational world to fly farther and faster than ever before, only if we allow it. So टेक्नोलॉजी से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है. अब तो एक ये टाइम आ गया है कि इंडिया के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी बनने वाली है, एवरीथिंग ऑनलाइन. और जो ये स्वयं पोर्टल है जिसके ऊपर की करीब ऑलरेडी 2000 कोर्सेज हैं, इसी से ही स्टार्ट हो सकता है. अब मैं आखिरी हिस्से पे आ रहा हूं कि भाई व्हाट नेक्स्ट. देखिए, इंडिया बहुत जल्दी एजुकेशन 4.0 के एरा में एंटर करने वाला है. एजुकेशन 4.0 का मतलब होता है टोटल टेक्नोलॉजी मेडिएटेड एजुकेशन. सब कुछ टेक्नोलॉजी से चलेगा. हम एक ऐसे युग में प्रवेश करने वाले हैं. और ये 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से है. पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था जिसमें वाटर और स्टीम से प्रोडक्शन होती थी. सेकंड था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी. थर्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट था. लेकिन अब जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 आया है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अलग अलग तरह के डिजिटल टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिससे पूरा ऑटोमेशन हो जाए. तो हमें अब ऐसे लोग चाहिए होंगे जो इसकी नीड्स के हिसाब से आ सकें. तो एजुकेशन 4.0 विल नीड टू अलाइन इटसेल्फ विद द नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. तो ये फ्यूचर ऑफ एजुकेशन में आज आपको बता रहा हूँ कैसे युग बदलने वाला है. और
अभी ये मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में करीब 10 दिन पहले आर्टिकल था कि हाउ एजुकेशन 4.0 इज गोइंग टू वर्क फॉर कमिंग जनरेशंस। आप इसको पढ़िए, आपको बहुत कुछ बताएगा। और ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ऑलरेडी यूज हो रहा है। देखिए मूक्स वगैरह में पर्सनलाइज्ड लर्निंग नहीं थी, एक कोर्स था, सारे उसी से लर्न करते थे। पर्सनलाइज्ड लर्निंग का मतलब लर्निंग कीपिंग इन व्यू योर बैकग्राउंड, योर क्वालिफिकेशन, योर कॉम्पिटेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है इट्स ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जिसमें कि आप एक ऐसी मशीन्स बनाते हैं जो ह्यूमंस की तरह सोचती हैं और ऐसे टास्क परफॉर्म करती हैं जैसे लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, रीजनिंग, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीनें बनाता कौन है? बनाते तो हम लोग ही हैं ना, ह्यूमंस ही। अभी ये गवर्नमेंट की एक नई स्कीम है, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। आई एम एसोसिएटेड विद दिस। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज किया जाता है टू मेक लर्निंग मोर पर्सनलाइज्ड एंड कस्टमाइज्ड एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लर्नर। तो मतलब आने वाला टाइम ऐसे आने वाला है कि आप एक क्लास में 10 बच्चे हैं, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, हर एक की कॉम्पिटेंस अलग है, तो हर एक के लिए एक पर्सनलाइज्ड करिकुलम होगा कि भाई इसके लिए ये सूट करता है, इसके लिए ये सारा सूट करता है, इसके लिए ये। तो ये सारा कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से ही हो पा रहा है। और ये एक मैजिक नहीं लगता कि ऐसा भी हो पाएगा। सो ये देखिए, वेल सेड, एनी सफिशिएंटली एडवांस टेक्नोलॉजी इज इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम मैजिक। तो मैं आखिर में एक चीज बताऊंगा कि कई बार लोग पूछते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी से टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे, उनको अपने जॉब छोड़ने पड़ेंगे? जस्ट ये क्वेश्चन आपके मन में भी हो सकता है, कभी भी नहीं है ऐसा होगा। तो प्लीज रिमेंबर कि टेक्नोलॉजी विल नॉट रिप्लेस टीचर्स, कभी भी नहीं। लेकिन जो टीचर जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो जरूर रिप्लेस कर देंगे उन टीचर्स को जो यूज नहीं करते। तो आपको टेक्नोलॉजी सेवी या टेक सेवी बनना पड़ेगा। देखिए, टेक्नोलॉजी इज द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, एंड इफ टेक्नोलॉजी ट्राइज टू रिप्लेस ह्यूमन माइंड will come out with a better technology. So ultimately human mind will be the supreme. You can't replace human mind. Technology will not replace great teachers, but if technology is in the hands of great teachers, it can be transformational. It can bring about radical changes. So try to be like that. As you will agree, technology changes the quality of life, but technology cannot replace human intelligence. That is supreme. These are some of my newspaper reports in Times of India, in Hindustan Times about our MOOCs, again in Hindustan Times. This is again in Education Times about innovating our teaching approach. This was recently in Times of India Higher Education booklet, how to use ICT creatively for higher education. This is in Hindustan Times about chemistry, which is my subject. This is about how chemistry education is changing in the 21st century. This is a good article. If you can take it, it is in Science Reporter May issue. We are in now June. It is in the May issue. This gives you an overview how the quality of education will change with the help of ICT. And now last, one small thing. In my opinion, what minimum a higher education faculty needs for success in the 21st century. Okay, एक्सेल तो हर कोई करना चाहता है और कई बार पता ही ना चले क्या करना चाहिए, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। एक तो जिस भी सब्जेक्ट के आप हैं उसकी साउंड नॉलेज और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स रखिए। क्लैरिटी, साउंड नॉलेज, सुपरफिशियल नहीं, डेप्थ तक पूरी सोच की। एक पेडागोजी में आप बड़े अच्छे हो, आर्ट ऑफ टीचिंग, कि कोई भी चीज पढ़ानी हो तो उसको कैसे शुरू करके कैसे लिंक करें, बहुत जरूरी है। और एक रिसर्च में अगर आप एक्सेल करना चाहते हैं तो यू हैव टू बी क्रिएटिव एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकर।
और याद रखिए, क्रिएटिविटी और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग एक दिन में कभी नहीं आती. इट नीड्स टू बी नर्चर्ड. तो इवन इफ इट्स नॉट टू लेट, यू कैन डू इट. फिर कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन स्किल्स एक्सीलेंट. टीचिंग प्रोफेशन में तो इनका मुकाबला ही कुछ नहीं. इतने अच्छे आप कम्युनिकेटर बनो, टेक सेवी बनो. मैंने कहा राइटिंग स्किल्स हमारे यहाँ टीचरों में बहुत कम है, कि मैं 2-3 इंस्टीट्यूशंस में वाइस चांसलर रहा हूँ. कई जगह मैंने देखा, मुझे दुख लगता है. हमें राइटिंग स्किल्स कोहेरेंट वे में, सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखा जाए, हमें भी किसी ने नहीं बताया था. हम भी तो ऐसे छोटे मोटे स्कूलों से पढ़े हैं, लेकिन फिर मेहनत के बलबूते पे हमने धीरे धीरे पिकअप किया. तो ये भी आपको करना चाहिए. और एक आपकी पर्सनैलिटी में ट्रेट्स ऐसे हों, प्रोएक्टिव पर्सनैलिटी, क्योंकि सब कुछ हो, अगर आपकी पर्सनैलिटी ठीक ना हो, माइंडसेट ठीक ना हो, आप डिसिप्लिन ना हो, आप हर समय वरी करते रहते हो, मतलब ऐसे लोग भी हैं, आप एरोगेंट हो, फिर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते. वरी के बारे में कहा जाता है ना कि इट इज अ मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन एंड यू सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी. और माइंडसेट के बारे में तो ये कहा जाता है कि योर लाइफ इज एज गुड एज योर माइंडसेट. The heaviest burden which we carry is our own thoughts in our head. वही हमें जीने नहीं देते. सेल्फ डिसिप्लिन करो. अगर आप अपनी लाइफ को, अपने थिंकिंग प्रोसेस को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो आप अपनी लाइफ को क्या कंट्रोल करो? तो फिर बच्चों को कैसे कंट्रोल करो? प्रोएक्टिव बनो. इफ यू आर प्रोएक्टिव, यू फोकस ऑन प्रिपेयरिंग. But if you are reactive, you focus on repairing. So choice is yours. Don't wait for your ship to come to you. You swim out to it. That is called proactivity. This is good. Personality से सारी charging होगी आपकी success in life में. So cultivate the right personality. It's never, personality की सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि आप मेहनत करके अपनी personality को बदल सकते हैं. और एक लास्ट थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ, और अपने स्टूडेंट्स को भी, अपनी यूनिवर्सिटी में टीचरों को भी, कि भाई मैनेज योर टाइम वेरी वेल. दिस इज वन थिंग वेयर नेचर हैज बीन वेरी काइंड. सबको 24 आवर्स ए डे मिलता है, और जो रियलाइज नहीं करते, जो इसको नहीं कर पाते, तो क्या who is Dr. Pratibha Yadav has started sharing the screen. You know, I don't know who did this. I will have just a minute. हाँ, तो मैनेज योर टाइम वेरी वेल. देखिए, टाइम के साथ सब बदल जाता है, सब कुछ ढल जाता है. ध्यान रखिएगा इस चीज. और लोग ये भी कहते हैं कि रियलाइजेशन कम्स टू एवरीबॉडी इन वंस लाइफ, बट जनरली बाय द टाइम रियलाइजेशन कम्स, इट्स जनरली टू लेट. दैट शुड नॉट हैपन विद यू. रिमेंबर, note it, this is very important. Today is the tomorrow you worried about yesterday. ये मैं 2-3 दिन पहले मुझे एक ये वीडियो मिला, हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से है, कि लोग देखो टाइम के साथ कैसे बदल गए. मैं सोच रहा था, तो मैं आज पहली बार इसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ. है तो आधे मिनट का, बट देखो टाइम कैसे बदल जाता है लोगों का. ये देखिए. समय की धारा में, समय की धारा में उम्र बह जानी है. जो घड़ी, जो घड़ी वही रह जानी है. So just see कि टाइम ने कैसे बदल दिया सब कुछ. These were the big stars with such a mass following. लेकिन टाइम
तो इसलिए थोड़ा, एक अमिताभ का बड़ा अच्छा शेर है, देखिए, कल खो दिया आज के लिए, आज खो दिया कल के लिए, कभी जी ना सके हम आज आज के लिए, बीत रही है जिंदगी कल आज और कल। ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट बी फिकल मैन, डोंट डिसीजन। मैं तभी कह रहा हूँ कि पर्सनैलिटी को बदलिए। एट द एंड ऑफ द डे याद रखिएगा इस चीज को, पता नहीं हम दोबारा ऐसे टॉक में मिलते हैं कि नहीं, कि एट द एंड ऑफ द डे योर बिगेस्ट कंपटीशन इज यू। Yes, your own personality, your own mindset, your discipline, your worries, your everything. तो ये देखो कितना अच्छा है, स्वर्ग भी तू है, नर्क भी तू है, इन दोनों का फर्क भी तू है। याद रखिए इसको। जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए, और जीने वाले और भोले भाले सोना ना होना ना। सुनो गजर क्या गाए, समय गुजरता जाए। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तुम से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तो चलना। Thank you very much. I think I took little more time, but I really wanted to convey some message regarding technology और कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कुछ लाइफ चेंजिंग टिप्स भी मैं आपको देना चाहता था। हालांकि बहुत कुछ तो नहीं कह पाया, बट जो मैसेज है इसको चेंज करिए, अपनी लाइफ को बदलिए। लिव इन द प्रेजेंट प्लीज, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, अपना ईमेल आईडी दे रहा हूँ। अगर फीडबैक दें, कुछ सजेशंस दें, बहुत अच्छा लगेगा, एंड आई विल ऑलवेज रिस्पॉन्ड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। थैंक यू। Thank you, sir. We have well taken that we should live in the present, and it's a need of the hour, at least for Indian education system, that we have to revisit our education system. We have to revamp it. Yeah, it's in a sorry state, and you have rightly pointed out in your slides by your presentation. So we are going to take it, we are going to consider, and we will try to extend your views, your suggestions to our higher education department through various levels. So thank you, sir. It was very informative and very entertaining also, because there were lots of visual graphics there. So we all find interesting in chat box very many messages in which people, all the participants are saying that it was very informative, interesting, and you have rightly been called the e-learning expert of India. I have seen your profile. It is mentioned. So we have seen it today also. Thank you, sir. Thanks for the very interactive and fruitful lecture. Thank you, sir. Thank you. अब थोड़ा सा प्रोटोकॉल में अंतर हो गया था, चूंकि हमारे जो मुख्य अतिथि थे उनके पास थोड़ी समय की कमी थी और हमारा थोड़ा सा डिलेड प्रोग्राम था। तो मैं माफी चाहूंगी कि हमारे RHEO जो डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता जी हैं, उनको मैंने वेट कराया, और सर के मैं उद्बोधन के साथ में जो नेक्स्ट कड़ी है हमारी, वो मैं आरंभ करना चाहूंगी। तो मैं चाहूंगी, और मैं ये भी चाहूंगी कि प्रोफेसर बख्शी सर भी हमारे साथ जुड़े रहें जब तक कि उनके पास टाइम है। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे रीजनल हायर एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर RK गुप्ता जी को। वे हमारे साथी भी रहे, प्रबुद्ध साथी रहे हैं, जिन्होंने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हमारे
वरिष्ठ सहयोगी के रूप में हम लोगों के साथ में थे, और हमारे यहाँ का जो थिएटर क्लब है, जो वाणिज्य जो संकाय है, उसमें वो निरंतर योगदान देते रहे हैं। मैं अब आमंत्रित करती हूँ गुप्ता सर को, वो अपने आप को। थैंक यू मैडम। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर, आ रही है जी सर। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नोएडा के वाणिज्य संकाय, समासा संकाय, अर्थशा संकाय के संयुक्त तत्वाधान में आज आयोजित एक दिवसीय वेबिनार फ्यूचर ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी इमर्जिंग न्यू डायमेंशंस के अवसर पर मैं मंच पर आसीन मुख्य अतिथि निवर्तमान कुलपति राजकीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर बख्शी जी, हमारे पूर्व संयुक्त सचिव डॉक्टर अश्विनी कुमार गोयल जी, महाविद्यालय की सहयोग प्राचार्य डॉक्टर सीमा शर्मा जी, मेरी अग्रज पूर्व प्राचार्य डॉक्टर मंजू शर्मा जी, विद्वान वक्तागण डॉक्टर बीरेंद्र पी सिंह, डॉक्टर श्वेता प्रसाद, प्रोफेसर दिनेश कुमार फ्रॉम सीसीएस यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विनोद कुमार शानवाल, श्री बुद्धि मंता दास फ्रॉम इस्कॉन एवं अन्य सभी सम्मानित मेरे साथी, शोधार्थी, विद्यार्थी एवं अन्य श्रोतागण, मैं आप सभी का उच्च शिक्षा विभाग की ओर से तहे दिल से स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, और मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मेरी कर्म क्षेत्र जिस महाविद्यालय से मैं आगे बढ़ा, वहां मुझे पुनः आकर अपने वक्तव्य शेयर करने का अवसर प्रदान किया। ये वास्तव में बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज जब ग्रीष्म काल में जहां हम सभी लोग अपने अपने घरों पर विश्राम किया करते थे, आज महाविद्यालय के द्वारा ये संयुक्त तत्वाधान में इस विषय पर, जो विषय बहुत ही समीचीन है, उस पर एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन किया है। फ्यूचर ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे सोसाइटी, समाज एवं तकनीक में हमारे आगामी रुझान एवं उभरते हुए नए आयाम के विषय पर जो संगोष्ठी आयोजित की गई है। यह विषय हालांकि वाणिज्य संकाय की जो विभागाध्यक्ष उन्होंने बताया था कि हमारे रुझान हमेशा हमारे पिछले, हमारे जो भी हमारे अनुभव होते हैं उनको निर्धारित करते हैं, परंतु कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं तो उनको उस हमारा जो ट्रेंड है उसको बदल देती है। यदि हम देखें, अतीत में झांकें, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उस समय हमने अपने देश के विकास के लिए जो हमने योजना अपनाई थी, पंचवर्षीय योजना, उससे अंतर्गत हमने कंट्रोल इकोनॉमी की संकल्पना की थी। उसके तहत ही हमने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए तमाम प्रावधान किए, और चलते चलते 1990 में यह महसूस हुआ कि हमारी जो कंट्रोल इकोनॉमी की जो संकल्पना है वो उतनी कामयाब नहीं हो रही। तो हमने फिर अपने प्लानिंग में चेंज करके हमने अपने यहाँ उदारवादी योजना लाए, यानी कि एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपनाया। इसके बाद जो तकनीकी विकास हुआ है, उस विकास ने आमूलचूल परिवर्तन किए। हम देखते हैं जब से ये इंटरनेट क्रांति आई, उसने
पूरे विश्व को एक हमारा एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। हमारे जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, उन ट्रांजैक्शंस के लिए इतनी तेजी से जो वृद्धि हुई, इसकी संकल्पना भी नहीं की थी। हम जब भी किसी इकोनॉमी के बारे में ट्रेंड जानना चाहते हैं, तो उसके लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले होती है हमारे लिए जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। दूसरा हमारा होता है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, यानी कि स्पेंडिंग ऑफ मनी बाय द कंज्यूमर्स, एंड थर्डली द अनएम्प्लॉयमेंट। These are the 3 indicators of economy. If we see our previous data, then we will find that our economy was the 3rd largest economy on the basis of nominal GDP, and 5th largest economy on the basis of purchasing power parity. And if we see the unemployment, it was nearly 7 to 8%. But after the tremendous increase in the transactions, when our economy was agriculture based, and after 1990, there was tremendous increase in the service sector, and we got the tremendous increase in the transactions due to our internet. When we were thinking that there is unemployment, but after the use of mobile by only for his sake of joke, everybody got the work. हर हाथ को काम मिल गया, हर व्यक्ति मोबाइल को लेकर के अपने काम में लगा रहा और उसको कभी ये भी महसूस नहीं हुआ कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं. But if we see that there was tremendous unemployment was there, but suddenly when what happened, we are facing the pandemic of COVID-19, coronavirus disease 2019. It had changed the total phenomena worldwide. If we see the situation, there is a global recession, market instability, lockdown, sharp rise in unemployment, stress in supply chains, decline in government incomes, and collapse of hospitality and tourism industry, reduced consumer activity, and reduction in fuel consumption. And suddenly what happened? You see the change at a time when we were all saying that water should not be wasted. हमको पानी को व्यर्थ नहीं करना है. हमको कहना पड़ा कि पानी से बार-बार हाथ धोएं. एंड हम कहते थे लोगों से कि समय मूल्यवान है. अब कहना पड़ रहा है जीवन मूल्यवान है. एक समय था हम कहते थे कि अल्कोहल इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, परंतु अब कहना पड़ रहा है 85% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स आर गुड फॉर हेल्थ. एक समय था जो हम कहते थे कि बच्चों को मोबाइल देना अच्छा नहीं है. आज कहना पड़ रहा है बच्चों के पास मोबाइल होना जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन क्लास उसे करनी है. एक समय था हम कहते थे सामाजिक होना अच्छी बात है. आज हम कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सामाजिक होना अच्छी बात नहीं है. एक समय था हम कहते थे कि अतिथि देवो भव. आज हम कहते हैं अतिथि को दूरी रखो. आप समझिए इतना परिवर्तन आया. ये क्या है? एक सडन चेंज. इसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. ये इस तरह के जो परिवर्तन आए हैं, इन परिवर्तनों ने हमारी पूरी व्यवस्था को झकझोर दिया है. ये व्यवस्था ही हमें सिखाती है. मानव ने तकनीक का विकास करके
जो संकल्पना की थी कि हम बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे। एक समय था जब हमारे बुजुर्ग कहते थे कि हम बचत करें। हमारी नई पीढ़ी आई, उसने कहा हमको बचत नहीं, हमें खर्च करना चाहिए, हमें प्रेजेंट कंजम्पशन पे ध्यान देना है, हमको लोन के लिए हमें बैंक जाकर के हमें ईएमआई देनी है। देखिए ड्रास्टिक चेंज आया, डिजिटलाइजेशन हुआ। अभी लास्ट टाइम अभी प्रोफेसर बख्शी बता रहे थे कि मूक्स के बारे में, ई कंटेंट के बारे में। हमारे सारे देश में कोविड पैंडेमिक के चलते हमने वेबिनार्स के माध्यम से, जूम्स के माध्यम से अपने छात्रों को ई कंटेंट दी, ऑनलाइन क्लासेस दी। ये क्या था? ये एक परिवर्तन था। हमारा जो परिवर्तन जो आया है, परिवर्तन एक नैसर्गिक प्रथा है। ये हर एक के जीवन में परिवर्तन आते हैं और हमको इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। इनको हमको ये चुनौती स्वीकार करते हुए हमें इनके समाधान ढूंढने चाहिए। आज हम देखते हैं हेल्थ सेक्टर में जहां ट्रेमेंडस डेवलपमेंट हुआ, जहां हमारे पास वेंटिलेटर्स नहीं होते थे, वह वेंटिलेटर्स अवेलेबल हो गए। एक समय था जब हम ऑनलाइन सामान मंगाते थे और हम जो हमारा लोकल वेंडर है, जो हमारा जो घर के पास जो सामान बेचता था, उसको तवज्जो नहीं देते थे। आज कोरोना पैंडेमिक ने सिखा दिया कि लोकल का यदि ध्यान नहीं रखोगे तो चल नहीं पाओगे। लोगों ने लोकल पर ध्यान देना शुरू किया। जितने भी लोकल सप्लायर थे उन्होंने ही आपको सामग्री दी, और आज जब हमारे जितने भी वर्कर्स थे, जब उनको वापस जाना पड़ा, अब लगने लगा है कि हमारे जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी जी, उनका जो कहना था कि यदि हम देश का विकास चाहते हैं तो हमें गांव का विकास करना पड़ेगा। यानी कि गांव के अंदर हमको लघु उद्योग, हमें कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना पड़ेगा। यदि आज हमारे गांव में कुटीर उद्योग होते तो हमारे जितने भी प्रवासी लोग हैं उनको इतना परेशान ना होना पड़ता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया है कि वी शुड बी वोकल फॉर लोकल। हम अपने जो चीजें हैं उनको हम प्राथमिकता दें। वी मस्ट बी द सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट। हम आत्मनिर्भर बने और हम प्रयास करें कि हम अपनी कितनी भी परेशानी हो, हम अपने लोगों को न भूलें। यदि आज हम अपने जितने भी हैं उनका सहयोग लेंगे, उनके साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं देख रहा था कि तीनों विभाग ने इस तरह सामंजस्य बिठा करके ये वेबिनार आयोजित की है। बहुत ही अनूठा ये प्रयोग किया है और ये डॉक्टर बख्शी ने बहुत ही अच्छा जो अपना लेक्चर दिया, ज्ञानवर्धक। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महाभारत में खड़ा हूं, मैं सबको देख रहा हूं, सारे सारे अपने हैं, सारे जितने भी लोग हैं इनके साथ में रहा हूं। मैं किसको नाम लूं, किसका नमन करूं, किसको बाद में करूं, मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूं, साधुवाद देता हूं। मेरी व्यस्तता है कुछ, मैं इसके कारण मैं ज्यादा समय तक नहीं रुक पाऊंगा, परंतु अंत में एक बात कहूंगा, तूफान में ताश का घर नहीं टिकता। तूफान में ताश का घर नहीं टिकता। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। अरे अरे संसार को जीने का हौसला रखो। अरे दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हमारे जितने साथी हैं हम उम्दा काम करते हैं और हमेशा हम उच्च शिक्षा के लोग, हमें मौका जब भी मिलता है हम अपना कार्य बेखूबी उस बेहतरी से करके दिखाते हैं, तो लोगों को लगेगा कि हाँ ये उच्च शिक्षा के लोग हैं। मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। बहुत से उम्दा लोग बैठे हुए हैं, स्पीकर हैं, और मैं रास्ते में हूँ क्योंकि मैं इधर कुछ शासकीय कार्य से आया हूँ, मुझे जाना है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर आपके उद्बोधन के लिए। और सबसे
बड़ी बात है कि हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप रास्ते में होते हुए बराबर मैं देख रही थी आपकी गाड़ी चल रही है और आप बोल रहे हैं, और साथ में आपकी कनेक्टिविटी भी अच्छी है। मतलब नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर रास्ते में होते हैं तो इतना अच्छा कनेक्शन कम से कम आवाज का नहीं आता है। तो अरे अपने लोगों से कनेक्टिविटी क्यों नहीं रहेगी? हाँ सर, मैडम बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर आपका उद्बोधन, और हम लोग बिल्कुल लाभान्वित हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की क्या समस्याएं, क्या कठिनाई है, और बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका, आपने इतने निकाला हमारे इस पोर्टल पे ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद सर। अब मैं ज्यादा समय ना लेते हुए जो आज का जो हमारा जो टेक्निकल सेशन है उसको हम आरंभ करने का शुरुआत हम आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने स्पीकर्स को बुलाऊं, जो हमारी वेबिनार का जो टॉपिक है फ्यूचर ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी इमर्जिंग न्यू डायमेंशंस, तो उसको मैं सोशियोलॉजिकली एक्सप्लोर करना चाहूंगी। देखिए, एज अ स्कॉलर ऑफ सोशियोलॉजी, it becomes interesting for me to observe the unfolding trends in various realms of society. So like it is economy or commerce or science and technology, like education, politics, international relations, etc. So what is the need of the day is that we have to restructure our society, our economy, our political system, because we have to meet the challenges of the global world. We have to take on with the local level economy. We have to revisit our economic system. So there's a lot of restructuring is the need of the day. Now, what has happened in past few months, there has been coining of many new terminologies like social distance, quarantine, etc. Quarantine is not a new term, but as far as social distancing is concerned, most of the sociologists have objection of using this term, because it has been a taboo in sociology and social sciences, because it has a negative connotations in sociology. So instead of social distance, we use the term physical distance, so that we may not lose the empathy with the people, but we remain connected, yeah, with some kind of precautions and preventive measures. So what the need of the day is that what kind of trends we can see, we can unfold in this era of COVID. Alvin Toffler, who has been outstanding futurist, and he is off and on quoted by the sociologists, by the political scientists. He has rightly said in his book, Future Shock, that there is fear for the future. Fear for the future means that there is a digital revolution, there is communication revolution, there is information overload, and nevertheless, there is increasing number of changes with much rapidity. And these changes, we have to cope with these changes. And people are losing familiarity with the old institutions like family, national identity, professions, etc. But what interestingly we have seen in COVID-19 era, that we have started reconnecting with all these identities, whether it be family, whether it may be national identity, whether it may be a new definition of profession. Like we are sitting in our house, we are sitting in our home, and we are doing much more work rather we used to do offline. We are all the time engaged with the digital world, all the time. You know, we are having headaches, we are having pains in our eyes, sitting in front of the screens, talking on mobile phone. Everybody in the house is saying, yeah, you are always on the phone, and we are not doing any kind of gossip. All the time, we are sharing technical skills. We are in a mode of e-learning. So these kind of trends are emerging. Side by side, we can see that
there is international conflict, tension arising. India is facing a lot of tension with our neighbors, and we have to see our foreign policy also in this era. So these are the trends, and we have tried to cover all these trends in our upcoming lectures. They are from the field of economics, from the field of sociology, from the field of globalization and communication technology, and also from yoga and meditation, because it is a need of the hour. We have to look to our traditional medicines, traditional setups, traditional alternative ways of living. So these are the things which are being demanding, and these are the things which are emerging in this era. So not taking much of the time, I would like to invite our first technical speaker, Dr. Professor Dinesh Kumarji, who is from Chaudhry Charan Singh University. And let me introduce him. He is not only a professor for me, but he has been my colleague. We started our job together from Turkey, and he was there, my colleague. He got selected in Chaudhry Charan University. आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? हाँ, आप विजिबल है। Professor Dinesh Kumarji is HOD Department of Economics, Chaudhry Charan Singh University, मेरठ यूपी। और आपका जो कार्य रहा है, आपका effect of FDI on some aspects of industrial performance, a study with special reference to India, और जो आपके research interest और specializations हैं, वो foreign investment है, economics और growth है, development socio-economic है, और सबसे बड़ी बात है उसमें आप देख सकते हैं उनकी स्क्रीन पे, लेकिन जो इंडिया चाइना ट्रेड रिलेशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के समय में बहुत रेलिवेंट हैं। उसके साथ ही इंटरनेशनल फेलोशिप आपको मिली हुई है, आपने बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम में आपको फेलोशिप अवार्ड हुई है। आप इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च न्यू दिल्ली थाईलैंड में आपका जो है रिसर्च प्रोग्राम चला है, और आपके करीब विभिन्न जो पीयर रिव्यू जर्नल्स हैं नेशनल और इंटरनेशनल रिव्यूड के, उनमें आपके कई पेपर्स पब्लिश हुए हैं। और हमें मैम आपका स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर सर तो मुझे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तुम नहीं होगा, तुम एक बार कर दीजिए। तुम कितना पीछे पड़े नॉट कनेक्टेड, बंदे नहीं वो करके नहीं लेंगे। इसकी आवाज आ रही है, अब आ रही है स्क्रीन? नो नो नो, स्क्रीन शेयर तो ऑन है मेरा। बोलो भाई। आ गई मैम, आ गई, करिए। जी अब आ रही है? यस मैम। तो मेरे ख्याल से आप लोग उस प्रोफाइल को, मैंने आपका रिसर्च पेपर काफी इंडेक्स और पीयर रिव्यू जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं, और करीब 30 से 40 पेपर प्रेजेंटेशंस हुए हैं। इसके साथ ही मैं इनके बारे में ज्यादा क्या कहूँ, आप लोग खुद सुनेंगे, खुद आप लोग असेस करेंगे कि ज्यादा बोलना में वो अपने आप ही वो उनके वक्तव्य से, उनके उद्बोधन से स्पष्ट हो जाएगा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर दिनेश कुमार जी को। थैंक यू मैम। मेरी आवाज आई है सभी को? हाँ जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम डॉक्टर अनीता मिश्रा जी का। आपने भी जिक्र किया कि हम लोगों ने साथ अपना जो एकेडमिक जर्नी है वो स्टार्ट की थी विद्यार्थी से, मुझे भी वो सब चीज़ें याद हैं। जहाँ तक आज के इस सेमिनार की बात है, कॉन्फ्रेंस की बात है, द टाइटल इज फ्यूचर ट्रेंड्स इन इकोनॉमी, सोसाइटी and technology emerging new dimensions. To start with, and before to start with, I would like to thank Principal Madam Professor Seema Sharma ji, Principal of Government Degree College Noida, Dr. Anita Mishra, convener of this seminar, Dr. Shaili Srivastava, organizing secretary of this seminar, as well as I could see on the screen, Professor Rekha Tiwari Madam, Professor Divya Nath Madam, साथ ही साथ अश्विनी गोयल सर को बहुत बहुत नमस्कार। राजीव गुप्ता जी, थैंक यू। राजीव गुप्ता जी भी मैंने उनको सुना, किशोर जी को मैं देख पा हूँ, तो काफ़ी सारे लोग जो फेसिस हैं वो जाने पहचाने हैं। और इससे पहले मैं अपनी बात शुरू करूँ, अभी यहाँ जो बातचीत हुई अशोक बख्शी जी की,
मैडम क्या मेरे पास कितना समय है? 20-25 मिनट बोल सकता हूँ? How much time should I be? जी सर, जी सर। Okay. 20 to 25 minutes, sir. That's okay. I will manage that way. अभी जो बातचीत हुई अशोक बख्शी जी की, उन्होंने जो इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेटिव एजुकेशनल इनोवेशंस पर जो तमाम उन्होंने बुक्स को लेके और बाकी कंटेंट रखे, इन कंटिन्यूएशन राजीव गुप्ता जी ने अपनी बात रखी, तो काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं on the topic as well as of the topic. चीज़ों को कनेक्ट करते हुए, क्योंकि इकोनॉमी, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी को कनेक्ट करने की बात है, और मैं अपना जो डेरिवेशन दूंगा उसका जो मेन थीम है, दैट इज पोस्ट कोविड इकोनॉमी, इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा मेरा टच रहेगा इंडिया को, नेचुरल सी बात है, और बाकी मैं बात करूंगा थोड़े से अदर कंट्रीज की भी। इकोनॉमी का जो ट्रेंड होने वाला है पोस्ट कोविड, उसको लेकर हम जानते हैं कि 2018 में जो नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ in area of economic sciences, that was given to Professor Nordhaus and Professor Paul Romer. हम में से जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होंगे वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लोजली जानते होंगे, नेचुरल सी बात है, बाकी उतना क्लोजली नहीं भी जानते होंगे, बट आई विल ट्राई टू कनेक्ट। Paul Romer and Nordhaus both are mainly economists. This was in case of 2018. The purpose was how to achieve the higher amount of economic growth, that is global economic growth, with the help of technology. How can we achieve the higher amount of sustainable development with the proper technology? हम जानते हैं कि आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि the amount as it increases the industrialization, we consider it as economic growth. जितना ज़्यादा उद्योग हैं उतनी ज़्यादा वृद्धि है, हम ऐसा नॉर्मली मानते हैं। But at the same time, the amount as much as industries develop, the amount of environmental degradation, or we can say the amount of pollution, increases. This is the challenge before the global economy. How can we sustain by protecting environment, and higher amount of economic growth can be achieved? किस तरह से हम, it's a global challenge. How can we sustain, how can we keep the environment clean and green, at the same time the economic growth may be achieved? This is in this background the Nobel Prize of Economic Sciences was given in 2018 to Nordhaus and Paul Romer. They simply give a formula. मैं technical बिल्कुल नहीं होऊंगा, बस start के लिए इतनी बात कर रहा हूँ. They give a simple formula that output, or we can say global production, is the function of a number of inputs. That may be land, labor, capital, enterprise, like that. Global production may be the function of number of inputs multiplied by technology. If we reduce the amount of technology, or if we reduce the quality of technology with the same amount of inputs, number of countries grows at different rates. The issue is how can we optimally utilize the technology. It is not important how technology we have. It is not important what quantity of technology we have or what quality of technology we have. More important is how can we optimally utilize in the interest of our economy, basically. This is the basic issue. Then I would like to start my derivation. The topic I have discussed, post-COVID economy, India and the world. We are very well aware that over 200 years ago, Alexander von Humboldt, an influential 18th century scientist, once explained the fundamental idea of nature, stating that the world is a single interconnected organism. It was in the 18th century. A teeny variation is its ordination working bears the possibility of causing large ripple in other part of this one whole organism. Nowadays, it is exact data is not available, but what we can say, over 18 lakh people of this COVID-19 affected, and more than
50,000 deaths are there, the looming recession, the 1920 novel coronavirus disease outbreak is nothing but a harsh reminder of the supremacy of nature and the fallibility of contemporary economic thought. Basically, what we start to understand what the situation is, what the problem is. No doubt, COVID-19 is a severe global recessional problem. But when we start, there is a coronavirus, or we can say on the other way, there are numerous, perhaps unprecedented economic pain ahead. Whatever pain we are feeling nowadays, it is not the actual pain. The actual pain we have to face in the coming years or ahead. Both policy and politics will have to play an important role to alleviate this pain. Bad policy can delay, even derail economic revival. That's one aspect. Good politics can ensure that the suffering of the masses is minimized. What can be done to ensure this? The issue is what can be the way out, what can be the minimum solution, basically, that's available to us. The nature of economic challenge facing India in detail, we can discuss that India needs a interventions. But Indian economy is both huge and diverse. The policy responses will have to be mindful of this diversity. Only then one suitable measure politics influences this process in a big way. When we start the discussion on this topic, basically, this discussion, main points of the discussion can be summarized that how the contraction in growth will not be uniform. That this COVID-19, the impact on different aspects, different regions, different sectors will definitely surely be different. At the same time, if this COVID-19 is not there, suppose we are dealing in 2019 or in some sense 2018, in that sense also, different sectors, different regions were growing at different rates. How can the policy interaction may be contracted so that these across regions and sectors can be highlighted? These have the World Bank released its global economic prospects report. It expects India's GDP by 3.2% in 2021. There will be a moderate recovery of 3.1% growth in 21-22. This means that 21-22 GDP will be less than it was in 1920. To be sure, India is not the only country which will face this predicament. We all know it. What does a contraction of GDP mean in real life? When the amount of the rate of GDP growth is contracting, what does it mean for the real life, basically? Incomes will drop, jobs will be lost. However, the impact of the contraction will vary across sectors, states, even social groups. This knowledge is indispensable for an effective policy intervention. Basically, for example, it can be expected that at least two sectors, agriculture and government, will not see a contraction. In 1920, these two sectors had a share of almost 30% of gross value added, GVA. That's another, we can say in simple word, that's the other name of GDP. This means that the economic pain will be far more severe in the rest of the economy. Economic pains means almost all the other pains are directly or indirectly related with the economic pains. Economic pains will be much, much more severe in the coming years. Let us assume that the growth rate of agriculture and government sector in the next 2 years will be the simple average of what they have been in the past 3 years. Suppose, for example,
This comes to around 4.1% for agriculture and 9.7% for government. Using the World Bank headline projection of 3.2 contraction in 2021 and 3.1 contraction in 21-22, we can calculate the projected growth rate for the rest of the economy. This comes to a 7.2 contraction in 2021 and 1.4% growth in 21-22. Now suppose 7.2% contraction in 2021. How much economic pains will be in coming years? Another aspect. The non-farm, non-government economy contains many subsectors, non-farm and non-government. A contraction in such subsectors will have different impact across states and jobs. For example, the non-farm, non-government sectors had a share of 86% in gross state value added. Non-farm and non-government sectors have almost 86% in gross state value added. For Delhi only, this share was 56% for Madhya Pradesh and only 38% for Arunachal Pradesh. This means that Delhi's economic pains will be more severe than the economic pains of Arunachal Pradesh. In case of Arunachal Pradesh, the GSVA, that is gross state value added, it is around 38% for Delhi. For Delhi, it is 86%. It means the economic pains in coming years will be for Delhi persons will be much higher than the persons of Tamil Nadu. When we discuss the issue in connectivity with the employment, the contraction is some more that can have a bigger impact on job than others. For example, construction had a share of 8% in GVA in 2018-19. But its employment share, according to the 18-19 periodic labor force survey, was 12%. Financial services, real estate and professional services, on the other hand, had a GVA share of 22% in 18-19. The employment share of this sector was only 3.4%. The implication is that this means that construction is a more labor-intensive sector than finance. So far as equal value of the loss in output is concerned, job losses in construction would be far higher than in financial sector. Bailing out the construction sector can save a lot of jobs and mostly the poor persons. Supporting finance will probably cushion the not so poor and the sectors which depend on their demand. A useful way to measure job losses during a contraction is by using what is referred to as employment elasticity of output in economics. It is equal to the change in number of jobs per unit change in economic outputs. Basically, there are a number of issues. I will try to touch upon only some. The concept captures the idea that for the same amount of growth, job creation varies across sectors. This also means that job losses during a contraction phase will vary across sectors, no doubt. Comparison of year-on-year growth in GVA and jobs in 2018-19 shows that the construction sector and the trade, hotels, transport, storage, and communication sector had the highest employment elasticity in non-farm and non-government sectors. Which state or sector to support is not the only policy questions going forward. There will also be a choice in terms of supporting producers and consumers. For instance, for example, we can say, according to the ASI, that is Annual Survey of Industry data, Tamil Nadu, Gujarat, Maharashtra had a share of 45% in value of output of textile and apparel in 2011-12. This output was consumed across the country. An analysis of the 11-12 consumption expenditure survey shows that the Uttar Pradesh and the Bihar had a share of 19.9% in total consumers' expenditure on clothing and bedding. These two states had a share of just 3.9% in value of output of textile and weaving apparel. If consumer demand does not revive in these two states, supporting textile manufacturing
will not yield results. It will be creating much more problem. That's why there is a major blind spot for policymakers in tracking consumption trend. India does not have a consumption expenditure data after 2011-12. Maybe a number of academic object and political reasons. After the 2008 financial crisis, there was a lot of uncertainty about job losses. India did not have high frequency employment data. The United Progressive Alternate, that is the UPA government, asked the Labour Bureau for start tackling quarterly unemployment rates, but there were a number of academic or non-academic reasons. Today, the PLFS does collect employment data in each quarter of the year. However, the government has not been releasing the quarter data regularly. The 18-19 findings were released only earlier this month, last 21st. It will also be a good idea to start collecting and publishing high-frequency data on consumption unless there is more and better high-frequency data on the state of economy. Policy interventions will continue to be ill-informed. If the survey shows and bad news, so it be. We are officially in a recession. Basically, the quality of data in India, we know it very well, but it has to be started. Now, my next concern of this paper that I'm working on is how hard the economy has been hit. Our economy has been hit, no doubt, but how hard it has been hit. The pandemic has pushed the global economy into a recession, which means the economy starts shrinking and growth stops. In the United States of America, COVID-19 related disruption have led to millions filing for unemployment benefit. In April alone, the figure went up to 20.5 million and are expected to rise as the impact of pandemics on the US labor market worsen. As per Reuters report, since March 21, more than 36 million have filled the unemployment benefit data form, which is almost a quarter of the working age population of US. Further, an early analysis by IMF reveals that the manufacturing output in many countries has gone down, which reflects a fall in external demand and growing expectations on a fall in domestic demand. When we compare some different countries on the point of view of this coronavirus, or we can say COVID-19, the IMF estimate in the global economy growing at -3% in 2020 is an outcome far worse than the 2009 global financial crisis. Economies such as the US, Japan, the UK, Germany, France, Italy, and Spain are expected to contract this year by 5.9%, 5.2%, 6.5%, 7%, 7.2%, 9.1%, and 8%, respectively, as I told. Advanced economies have been hit harder, and together they are expected to grow by -6% in 2020. Emerging market and developing economies are expected to contract by -1%. If China is excluded from this pool of countries, the growth rate for 2020 is expected to be -2.2%. China's GDP dropped by 36.6% in the first quarter of 2020, 36.6%. While South Korea's output fell by 5.5%, since the countries did not impose a lockdown, but followed a strategy of aggressive testing, contact tracing, and quarantining. In Europe, the GDP of France, Spain, and Italy fall by 21%, 21.3%, 19%, and 17.5% respectively. How have countries coped? The issue is how the various countries have faced this problem of COVID-19. On this front, if we study, then some issues came into force that according to the assessment of the WEF, that is the World Economic Forum, supporting SME and large business is crucial for maintaining employment and financial stability. In India, small and micro enterprises, that is MSME,
in form of the increase in credit guarantees. Many advanced economies in the world have rolled out support packages, while India's economic stimulate package of 10% of GDP, Japan's is 21.1%, followed by US 13%, Sweden 12%, Germany 10.7%, France 9.3%, Spain 7.3%, and Italy 5.7% of GDP. However, World Economic Forum notes there is a concern that the size of packages Excuse me, Dinesh may sir. prove insufficient for the Dinesh duration of the sir. crisis. That disbursement may be slower as the duration Dinesh increases, sir. then it is needed. That not all firms in need would be targeted, and that such program may be overall reliant in debt financing. In Asia, countries including India, China, Indonesia, Japan, Singapore, and South Korea account for about 85% of all the COVID-19 cases on the continent. South Korea stands out since business and economic activities were not completely stopped, and therefore their economy was not severely affected. China recently lifted its lockdown and has since then been gradually reopening its market, its economy, without an aggressive second wave of infections so far. मेरे ख्याल से दिनेश सर का लिंक जा रहा है, इसीलिए उनका वीडियो भी The pandemic will evolve. For instance, in its World Economic Outlook report for 2020, the IMF mentions that firms may start hiring more people and expanding their payroll only slowly, as they may be clear about the demand for their output. Therefore, along with clear and effective communication, broad monetary and fiscal stimuli will be required to be coordinated on the international scale for maximum impact, and would be most effective to boost spending in the recovery phase. The COVID-19 epidemic is the first and foremost human disaster in 2020. More than 200 countries and territories have confirmed effective medical cases caused by coronavirus declared a pandemic by the WTO. There are a number of other issues. Just to cut short from that point of view, I would like to move further towards the economic cost of this disease, that is COVID-19, how economic cost will it face for the different countries. This COVID-19 bring with them a plethora of economic costs. Among the macroeconomic one, direct costs such as provision of healthcare services, productivity costs due to loss of human capital and productive time, and sectoral costs such as the mass hysteria and networking, other costs. Other ex post facto costs include losses to the agricultural sector, tourism and travel, and the retail industry, demographic impacts, and environmental losses. Since some of the novel outbreaks are zoonotic, agriculture and allied activities suffer great losses. For instance, after the 2000 Rift Valley fever virus outbreaks, West Asian nations banned import on meat from most African nations, leading to a 75% loss in meat export, amounting to $300 million US. Similarly, the Malaysian government lost almost $300 million in exports after the 1998 Nipah virus outbreak. Besides the 2003 severe acute respiratory syndrome, that is SARS, epidemic caused the Southeast Asian tourism industry approximately $4 billion US cost, while the H1N1 influenza cost the Mexican tourism industry faced $2.8 billion US cost. Trade and retail services also face the circumstances with this epidemics taking a toll on national GDP. The HIV/AIDS pandemic has cost the world economy more than $500 billion.
with 562.6 billion US dollars being expended on treatment and prevention between 2000 and 2015. African economies realized severely declining gross national product rates during the Ebola outbreak. While developed Asian economies such as Hong Kong lost 2.6% of the GDP in case of SARS, besides environmental impact pertain to loss of the non-market goods as well as destruction of animal habitats to prevent spread of virus. Moreover, evidence point towards drastic educational, psychological, and professional losses of consumers and their households. Implications from these range from wages loss due to decline in birth hours, contingent fear, poverty, food Excuse me, sir. insecurity, Dinesh, sir. to large-scale unemployment. During the Ebola outbreak, almost 16,000 children were Dinesh, sir. orphaned. May I request? Lockdown had to be disruption in education and loss of livelihood. Production and reception units were closed down, leading to apprehensions around food security. Untrained medical persons were made to operate in quarantine facilities. These are just some of the major impacts of the epidemic at micro level in different countries. Concerning COVID-19, the United Nations Conference on Trade and Development at UNCTAD has stated that the economic uncertainty it was sparkled will likely cost the global economy around $1 trillion in 2020. This is the estimate made by UNCTAD that around $1 trillion. मुझे लग रहा है कि ऐसा दिनेश कुमार जी को अभी हम लोग फिर से कोशिश करेंगे जोड़ने की। मैं तब तक शैली मैम से आग्रह करूंगी उनसे जरा फोन पे बात कर लें, क्योंकि उनकी स्क्रीन तो बहुत देर से हमें नहीं दिख रही, उससे पहले उनका स्टिल व्यू आ रहा था, तो ना ही वो हमें इस पे सुन पा रहे हैं। तब तक हम नेक्स्ट अपने स्पीकर को इनवाइट करते हैं और मैम उनसे बात करिए कि आपकी ये प्रॉब्लम आ रही थी। जी जी ठीक है मैम। तब तक हम अपने, क्योंकि टाइम काफी जा रहा है, तब तक हम अपने नेक्स्ट स्पीकर जो हमारा सेकंड सेशन है, जो ब्रॉड थीम है न्यू पेडागोजी फॉर मेंटर्स एंड लर्नर्स, तो मैं विनोद कुमार शानवाल जी हैं, डॉक्टर विनोद कुमार शानवाल जी को जी सर। हाँ सर। Should I start or should we wait for Professor Dinesh sir? सर एक्चुअली पता नहीं, उनकी बहुत देर से स्क्रीन किसी को भी नहीं दिख रही होगी। हम लोग बराबर बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तब तक आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा, एक तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आ रही, लाइट बार बार जा रही है। अच्छा जी। हाँ, तो हम respected principal madam, Professor Sharma, Dr. Anita Shukla ji, Professor Divya Nath, Professor Anita Rani Rathore, Dr. Kishore Kumar, Professor Dinesh Sharma, and other dignitaries, a very good afternoon to one and all present here. I have given the task to speak on pedagogy. Remember, share my PPTs? या सर शेयर कर सकते हैं आप कर लीजिए मैम, आपके मैंने भेजा है सर। मुझे डाउनलोड करना, अगर आपके पास है तो अपनी तरफ से शेयर कर लीजिए, मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। अभी आपने भेजा था मुझे, उसमें टाइम है तो मेरे यहाँ भी सिग्नल की थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं देखती हूँ डाउनलोड करके, तब तक हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज तो कोई बात नहीं, वैसे भी कर लेंगे। मैं कर रही हूँ अभी। अच्छा, जैसे चाणक्य ने कहा, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलता है। तो चाणक्य के इन्हीं शब्दों के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा कि जैसे हम लोगों ने अभी ये पेंडेमिक आया, इससे पहले भी जब जब हमारे यहाँ क्राइसिस आए, जब जब प्रॉब्लम्स आई, हमारे शिक्षकों ने बहुत ही मेहनत करके बहुत ही अच्छे से with their best capabilities they tried their level best to deliver the best whatever they could. बट जो मैं थोड़े से देख रहा था, या इससे पहले प्रोफेसर बख्शी साहब ने भी बहुत सारी चीजें हाईलाइट की
कि जब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन पेडागोजी या ऑनलाइन टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली जो भी हम लोगों ने डिलीवर किया वो हमने डिलीवर ये किया कि वी वर प्रिपेयर्ड फॉर फेस टू फेस टीचिंग, और फेस टू फेस टीचिंग में जो भी हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज थे वो हमने स्टूडेंट्स को डिलीवर किया। लेकिन जिसको हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो चीजें चाहिए वो थोड़ी सी डिफरेंट चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो परमानेंट है, सारे के सारी चेंज होते रहते हैं और चेंज के साथ ही हमें चलना चाहिए और चेंज के साथ ही हमें चलना पड़ेगा। इसमें जो कुछ चीजें हैं जो हम बात करते हैं ऑनलाइन टीचिंग की, जिसके अंदर पहला जो कंटेंट आता है दैट इज पेडागोजिकल स्किल्स। तो जो हमारे जो पेडागोजिकल जो स्किल्स थे जो भी हमने यूज किए थे नॉट फॉर ऑनलाइन। दूसरा जो बात है हमारा कंटेंट स्किल्स, जो हमारा जितना भी हमारा कंटेंट था हमारे पास जो कंटेंट स्किल्स हमने डेवलप किया वो भी हमारे पास उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, दैट वाज इनएडिक्वेट। तीसरी बात सर शानवाल जी सर, यस मैम, ने ज्वाइन कर लिया, हम उनसे कहेंगे कि आपके फिर या तो उसके बाद ही कर रहे हैं अपना। उनको करने दीजिए, नहीं लगेगा, करने दीजिए प्लीज। नहीं सर, फिर या तो नहीं सर को करने दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके सर, अब मैं पुनः फिर से पुराने सेशन में सेशन 1 पे जाकर के दिनेश से रिक्वेस्ट करूंगी कि 5 से 10 मिनट में अपना वाइंड अप कर दें ताकि प्रीवियस ये जो लेक्चर उस पे कंटिन्यू करें। सर आपका कनेक्टिविटी टूट गई थी सर बार बार। ओके हो सकता है, आपको सिर्फ ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, आपका फिर कनेक्शन। वो कनेक्टिविटी इसमें पेंस है। हाँ जी सर हाँ कंटिन्यू करिए सर। आप कंटिन्यू करता हूँ और उसको क्लोज करता हूँ विदिन 5 to 10 मिनट्स। तो मैं जहाँ था वो पूरी बातचीत करने के बाद मुझे नहीं पता कि हमने कहाँ तक सुना कहाँ तक नहीं सुना, मैं शो नहीं सुन रहे थे सर बराबर आपको। ओके लेकिन मुझे लगता है कि हाँ आप दिखाई दे रहे हैं सर स्क्रीन पे। ओके कनेक्टिविटी प्रॉब्लम थी तो श्योर। तो मुझे लगता है कि मैं ये डिस्कस कर चुका था कि अराउंड $1 ट्रिलियन जो डॉलर की जो कॉस्ट है दैट विल हैव फेस्ड बाय द ग्लोबल इकोनॉमी एज पर द एस्टिमेट मेड बाय। अभी 10 साल चलने वाले हैं। Yes. Now I start further. जी सर। As per the UNCTAD data information provided by that $1 trillion cost will be faced by the global economy in 2020. Making this a reality, the European Union or the European economy will be slightly into recession by the next quarter, and the Italian and German economies are particularly fragile. Besides, the Latin American economy is very vulnerable with the Argentinian growth rate falling sharply. In Asia, Singapore is heading to a large recession with its GDP shrinking by 10.6%. China, as the world's factory, we can say manufacturing factory, is experiencing a sharp decline in its industrial production and manufacturing due to widespread lockdown and ban on movement of the people. The Association of Southeast Asian Nations +3 tourism economy is currently facing a major slowdown with both international and interregional movement being banned between contingent parts. Now, the last part of the discussion is basically you can say the economics of ventilator crisis, because with this COVID-19 there are a number of other crises emerging. One is also known as ventilator crisis. With the high incidence of COVID-19 among the world population, an increasing need for healthcare equipment has been realized by all the nations, especially the US and Europe. Studies confirm that more than 30% of hospitalized COVID-19 patients are likely to need mechanical ventilations for recovery. However, a drastic shortage of ventilation has become to the fore. Hospitals in the US have roughly 160,000 ventilators, which is not enough for treating the ever-increasing number of COVID-19 infected patients. New York recently put out a plea for 40,000 ventilators that cost $25,000
each. Further, the demand for drugs, anesthetics, and other medical instruments required for ventilator patients has increased by 51% in only US. Unfortunately, the supply is diminishing fast. When each supply is diminishing, at the same time, the problem is being increased. With supplies not having enough inventory to meet the demand, this crisis is similarly being seen in Europe and other developed nations. For easy understanding, this situation is also called as the ventilator crisis. So what do we owe the emergence of the widespread market failure? That's another critical issue. Now, I will just conclude within 2 minutes. I think it would be better. It is of little doubt that national disease outbreaks such as COVID-19 gather immense potential to have an impact on several sectors of the national as well as the global economy. Rapid urbanization, fast increasing international level, and climate changes render these situations or these outbreaks into pandemics, making them a global phenomenon. Therefore, at the pressing time amidst the emergence of COVID-19, which has brought humanity to the brink of an existing crisis, it has become highly imperative to invest in total epidemic preparedness involving health and non-health interventions, research and development, as well as capacity building at all levels. My concluding remarks in this all discussion and debate will be like that. In the coming years, not only in case of India, but in case of almost all the countries, the investment will be moving from agricultural sector to the non-agricultural sector. We can say healthcare sector. In the situation when investment will be moving from agricultural sector to non-agricultural sector, and in the situation when agricultural sector is not facing, is not inviting, not capable to invite the private investment, what will the agricultural sector face in the coming future? It's a very critical question. Another summation is that the situation of poverty, initially we discussed the issue of poverty with the issue of hunger. Now the discussion has moved from hunger to nutrition, because only bread and butter is not sufficient to face this COVID-19. Nutritional amount is required to increase the amount of, you can say, immunity. So the discussion from poverty to hunger, now hunger to nutrition, the discussion has moved further on this platform, on this way. Another, my observation was from all the discussion was that across the world, agricultural sector, the shifting of agricultural sector to the shifting of investment in agricultural sector to non-agricultural sector will be creating much more and severe problems in the coming future. This is all from my side, and if there are some observations, some queries, some questions, I'm open for everything. We can discuss, at least as per the organizers permit the time. If there are some questions, I can discuss. It's all from my side. Thank you. If you have any questions, then we can discuss regarding the impact of COVID-19 on various sectors in India and around the world. Also, we can have some information, some derivations from point of view. थैंक यू सर. अभी हम वेट करते हैं सर क्वेश्चंस के लिए. अगर आते हैं हमारे चैट बॉक्स में चेक करते हैं हम. तो सर हाँ जी, से क्वेश्चन रेज करेंगे. In the meantime, I think मिश्रा मैम के यहाँ कुछ कनेक्टिविटी इशू हुआ है. That's why मैम is not there. तो मैम नेक्स्ट स्पीकर को बुला लेते हैं. हाँ जी जी, मैं इनवाइट करूंगी शानवाल सर को कि सर किशोर सर, सर प्लीज किशोर सर कुछ पूछना चाहते हैं जी. हाँ, नमस्कार सर. थैंक यू सर. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. इट्स ए नाइस थिंग. अब सर जो इस समय सिनेरियो है पूरे वर्ल्ड के लिए एक बड़ा क्राइसिस है,
और हम बार बार ये बात करते हैं कि इंडिया और चाइना बड़ा अलग तरीके से फ्लरिश करने वाले हैं इस फ्यूचर कंडीशन में, और इंडियन इकोनॉमी इस समय एक बड़े क्राइसिस में है, और आई थिंक जीडीपी को लेकर भी डिफरेंट इशू हैं। तो क्या पोटेंशियल हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों में, इस सिनेरियो में इंडियन इकोनॉमी के लिए क्या पोटेंशियल है, और कैसे हम वर्ल्ड के साथ कॉप अप कर पाएंगे? Any other question? I can club both the questions if it is another. कोई और क्वेश्चन भी हो तो मैं क्लब कर दूंगा, जवाब देते हैं, आंसर दो। हाँ प्लीज। माइक ऑन। दीदी राजादा मैम भी पूछना चाह रही हैं क्या? आप पूछ लीजिए, मैं आंसर्स को क्लब कर दूंगा, मुझे लगता है। हमें टाइप जी। ममता को तो आपका नाम देख पाऊँ, आपका माइक ऑन नहीं है। जी Hello, am I audible? Yes, you are audible. Okay. First of all, thank you very much, sir, for this lecture. Personally, I gained much, though I'm not from economics background, but I gained much, I can say this. So my simple, it's not a question, but it's more a concern regarding to our Indian economy. These days we seen so much dispute on our border side between India and China. Or sir, there is a massive movement going on boycotting Chinese item. और इसको लेकर सर बहुत सारी सोशल। माइक ऑफ हो गया है ममता जी आपका। ममता जी माइक ऑफ हो गया है। सर यस सर, आई एम ऑडिबल? यस सर। हाँ ओके सर। तो सर आजकल बहुत एक तरीके से मास मूवमेंट चल रहा है, दो स्टूडेंट्स एंड पीपल आर सेइंग बायकॉट जूम आल्सो। तो इसमें एज ए इकोनॉमिक्स व्यू पॉइंट व्हाट वुड यू से कि these kind of boycotting notions are good for our economy, or I think it's a very big challenge to our Indian economy in so what would you suggest, and what was your observation and your thinking on it? I'll comment. Should I answer any other question? I think no observation. Please speak up the mic. Thank you for your observations, Kishore ji and Mamta ji. First, Kishore asked about the potential of Indian economy to face this situation in near future. As far as Arnav, please keep your mic speaker off. That's better. As far as the intensity of study what I have conducted is concerned, there is no concern, no question of potential, because almost all the countries are facing the same problem. The issue is, as we claim that we have to eat simple food. जब मैंने अपनी बात को कनेक्ट किया लास्ट में कि हंगर से हम मूव किए पॉवर्टी की तरफ, पॉवर्टी से मूव किया जा रहा है न्यूट्रिशन की तरफ। तो जो न्यूट्रिशन की तरफ मूवमेंट है उसका इंडिकेशन यही था कि केवल पेट भरने से काम नहीं चलेगा, ऐसे ही इकोनॉमी का पेट भरने से काम नहीं चलेगा। इकोनॉमी में जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला है। इकोनॉमी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट अप करना है। इकोनॉमी की इम्यूनिटी का मतलब है हाउ टू फेस द challenges at local as well as global level. If the economy is strong enough, strong doesn't mean that fundamentally strong only. केवल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, अभी तक हम जो लैंग्वेज पढ़ा करते थे अपनी बुक्स में, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग की बात किया करते थे। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना इज वन एस्पेक्ट, बट इंटरनेशनली एंड ग्लोबली स्ट्रॉन्ग होना इज अनदर एस्पेक्ट। So we have to counter, we have to face the global challenges with only the mentality of competitiveness. अभी शुरू में बख्शी साहब ने कुछ जिक्र किया था कि at the end of the day आपका कंपटीशन आपसे ही होगा। उनकी उस बात से इस जगह मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। In coming future
all the countries will be trying to compete with other global features, global competitors, and ऐसा नहीं है. Individually we can claim that, that's maybe correct, but at an international era we have to face the international challenge. On that, to face that challenge, our immunity means our local as well as global power that needs to be competitively encouraged. और वहां पर फिर बात आएगी theories, सिद्धांतों. Now we all are the academicians here. We all are very well concerned that in 1920, 2021, in some books we study that at 2930, तो Great Depression था. उस डिप्रेशन के बाद एटलीस्ट इकोनॉमिक्स को मैं जानता हूँ, इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े चेंजेस आए. प्रिंसिपली सिद्धांत नए उभर के सामने आए. आज भी नए सिद्धांतों की आवश्यकता होगी और मुझे लगता ही नहीं, मुझे विश्वास है इस बात का, इन कमिंग ईयर्स, मे बी कमिंग 2 years, 3 years, maybe 4, 5 years, the theoretical appetite, the theoretical nutrition will improve in almost all the stream of the social sciences as well as non-social sciences. तो जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं सिद्धांतों वाली वो भी इम्प्रूव होंगी. तो बेसिक फंडामेंटल इशू से काम ही चलने वाला. दिस वाज द आंसर टू किशोर जी. Another answer, question was raised by Mamta Gautam in terms of anti-China movement, or we can say India-China relationship. How can India face the situation by boycotting this issue of anti-China, emotional and psychological, and in some sense economical also. I would like to submit as a simple researcher, as a student of economics, is that in economics in this world, इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता. इस विश्व में कुछ भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती. Whatever we have to achieve, हमें ग्रोथ भी चाहिए तो उस ग्रोथ के भी हमें कॉस्ट पे करनी होती है. आज तक हमने जो ग्रोथ अचीव की है, विश्व ने जो ग्रोथ अचीव की है, तो ग्रोथ ने एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत पे किया है. हमें अगर अगली ग्रोथ अचीव करनी है तो वी हैव टू पे द कॉस्ट. बहुत बार ऐसा होता है कि हम सस्ती चीज छोड़कर महंगी चीज परचेज करते हैं. इसलिए परचेज करते हैं कि वहाँ श्योरिटी काफी है, क्वालिटी के वहाँ पर जो है प्रॉब्लम नहीं है. In terms of this anti-Chinese movement, due to some number of this economic and political relations, that's one aspect. I will study on this aspect also one paper. My submission is, when economy decides that we are ready to face the cost, then achievement is there. अभी तक हमने तय नहीं किया, अभी तक हमने बातें बहुत की इंडियन इकोनॉमी को लेके कि हम चाइनीज का बाइकआउट करेंगे या किसी कम्युनिटी का बाइकआउट करेंगे. हमने बातें की, बाइकआउट नहीं किया. इसलिए नहीं किया, ना करने का कारण क्या था, हमें पता था कि उसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा है और बेनिफिट्स कम है. बेनिफिट साइड, आफ्टर गेटिंग दिस एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, बेनिफिट्स कुछ भी, when we are we are prepared to face the cost, we are prepared to make the cost. तो बेनिफिट कई बार मैंने कहा कि कई बार हमें महंगी चीज परचेज करनी होती है. Time will tell that what new achievements, what new perks will develop. But right now we have to face the cost at both front, politically as well as economically. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कॉस्ट फेस करनी है, हम इसको मेंटली प्रिपेयर हो कि हमें कॉस्ट फेस करनी है, then we can move further. But we have to decide first. But right now, due to a number of political and other obligations, our government is not ready to announce it that just go to boycott the Chinese product. It is therefore, यही कारण है कि हमें अपने आप को सोचना हो रहा है. As an Indian citizen, patriotic citizen, we can think over like that. But government has to make the cost and benefit analysis, and government is making that analysis. कि कितना cost होगा, कितना benefit होगा, that is government analysis. But as per us, as per citizen, we can move further. कुछ भी चीज मुफ्त नहीं मिलती, कुछ भी चीज मुफ्त नहीं पाई जाती. अगर हमें चाइना को सामने की तरफ से काउंटर करना है तो उसकी कॉस्ट पे करनी होगी. We should be ready to pay that cost. इतनी बात. Thank you very much to all. Thank you, sir. Thank you so much. And we will have a remaining question answer in the later sessions after the session, because so many speakers are waiting. Sorry, sir. So I would like to invite Shanwal sir to please continue with your lecture, sir. Sorry, we had to stop you in between. So please continue, sir. Thank you, sir.
Shanwalji, sorry from my side also. Please continue. Sir, please. Yeah. Yes, sir. Please start. Yes, sir. Is it? It's visible, but start, please, sir. Right, ma'am. Thank you. Can you share my PPTs or should I continue without PPTs? Sir, I don't have your PPT. Please continue without it. If you can start, we can see your screen actually, sir. If you can start, it will be visible to us. Okay. So, thank you very much. Thank you, sir. I just try to recapitulate. हम लोगों ने जैसे अभी पेंडेमिक हमारे यहाँ रहा, पेंडेमिक से पहले हम लोग जिस तरीके से प्रिपरेशन थी, हम लोग की जो प्रिपेयर्डनेस थी, दैट वाज फॉर फेस टू फेस टीचिंग. हम लोगों की ट्रेनिंग भी इस तरह की नहीं थी कि हम फेस टू फेस टीचिंग के ही थे, बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया और जितना अच्छे से हम कर सकते थे सभी लोग. Excuse me, sir. Sir, are you showing your PPT? Ma'am, I'm not able to show. Sir, if your screen is visible, if you start your PPT, we will be able to see. And if you don't want to start PPT, then please stop sharing. Okay, then please just stop sharing screen. Okay. Yeah, that is good. Okay. Thank you. Thank you. So whatever best we did, that was really appreciable. But if we are just talking about online teaching, ultimately online teaching cover 6 different components, and those 6 different skills, rather, these are the 6 skills which are important to continue online teaching. First is pedagogical skills. Whatever skills we have right now, we have definitely pedagogical skills, but whatever skills we have, these skills are ultimately more beneficial for face to face teaching. तो जो pedagogical skills की हमारी जो बात है, जैसे पहले प्रोफेसर बख्शी साहब ने भी कहा था कि हम लोगों को जो चेंज है उस चेंज के साथ अपने आप को चलना होगा, और जब चेंज के साथ हम चलेंगे तो कुछ नई चीजें, नई टेक्निक्स, नए स्किल्स की हमें जरूरत पड़ेगी. जो अभी तक हमने सीखा था, हमारी जो ट्रेनिंग थी वो फेस टू फेस टीचिंग के लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट थी. कुछ कंपोनेंट हम आईसीटी के भी करते थे, कुछ काम हम करते थे, बट बेसिकली जो 6 हमें कंपोनेंट की जरूरत है, 6 स्किल्स की जरूरत है. वन इज पेडागोजिकल स्किल्स, नेक्स्ट इज कंटेंट स्किल्स. तो जो कंटेंट हमने डिलीवर किया, जो भी कंटेंट हमारे पास था, दैट कंटेंट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर दैट ऑनलाइन टीचिंग. क्योंकि जैसे बख्शी साहब ने भी बताया, अल्टीमेटली उसके अंदर कुछ नई चीजें क्रिएट करी जाती हैं जिससे बच्चा अपने आप कर पाए. जो अभी जो हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, दैट इज चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन. ये हमारे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में भी है कि जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए, दैट शुड बी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन. जब हमारे यहाँ पहले पेडागोजी की बात थी तो उस समय हम बात करते थे टीचर सेंट्रिक एजुकेशन की. ग्रेजुअली दिस टीचर सेंट्रिक एजुकेशन कन्वर्टेड इनटू चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन व्हिच वाज रिक्वायर्ड. देन डिजाइन स्किल्स, जो हमारे जो एजुकेशन है उसके जो डिजाइन है वो भी उसी के अप्रोप्रिएट होना चाहिए. टेक्नोलॉजिकल स्किल्स, जितने भी हमारे क्विज हैं, जितने भी स्किल्स हैं,
वो भी हमारे उसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। देन मैनेजमेंट एंड इंस्टीट्यूशनल स्किल्स, मैनेजमेंट के पास भी बाकी सारी चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। देन last one is social and communication skill, which is more important at every point of time. Now I would like to just emphasis on pedagogical skills, क्योंकि हम लोगों को improve तो करना ही पड़ेगा। जैसे अभी हमारे पास ये पेंडेमिक वाला इशू है, इसको भी अभी लग रहा है कि थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा भी अल्टीमेटली वी नीड टू स्विच ओवर टू ब्लेंडेड मोड। एक मोड से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें दूसरे मोड की तरफ भी कन्वर्ट होना पड़ेगा, और इस मोड से हमें कुछ बेनिफिट भी होते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें पेंडेमिक की, पेंडेमिक से पहले हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि इट वाज ए क्राइसिस, बट ग्रेजुअली इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटीज। आज से पहले जितने भी हम वेबिनार करते थे, जैसे वेरी स्मॉल एग्जांपल, उसके लिए लोगों को आना, लोगों का टाइम निकालना, एक साथ आना, that was quite difficult. But now these days we could just organize webinars and people from across the globe could easily join us. ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है। दूसरा, हम लोगों ने जो बहुत सारी चीजें जो सीखी हैं, समय के साथ जैसे बदलाव आया, बदलाव के साथ हमने अपने आप को बहुत बदला है, और इस बदलाव के साथ साथ हमने बहुत सारी चीजों को जो चेंज किया है, वो चीजें भी हमारे साथ चेंज हुई हैं। अब इसके अंदर अगर हम बात करें सिर्फ पेडागोजी की, पेडागोजी के लिए अगर हम बात करते हैं तो पेडागोजिकल इज एन आर्ट ऑफ टीचिंग। अल्टीमेटली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट ऑफ टीचिंग, इट मींस टेक्नोलॉजी चेंजिंग। तो अल्टीमेटली द वे टेक्नोलॉजी चेंजेस, वी नीड टू चेंज अवरसेल्फ, वी नीड टू इक्विप अवरसेल्फ। चेंज करने की बात नहीं, हमें अपने आप को इक्विप भी करना पड़ेगा। आज के डेट में जो हमारे पहले जो चीजें थी, अगर हम एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लें, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, पहले बैलगाड़ी या बाकी जो गाड़ी का जो सिस्टम होता था, दैट हैज बीन चेंज्ड बाय, और दैट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय फ्लाइट और बुलेट ट्रेन और बहुत सारी चीजें। तो हमें भी एजुकेशन में भी इस तरह के बदलावों की जरूरत रहेगी। इसके अलावा दूसरी जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा जो पेडागोजी है, इसके अंदर जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, तो स्टूडेंट कितने अच्छे से उस चीज को कर सकता है। जैसे अब हमें जो बात करनी पड़ेगी, दैट इज मूव टू ओपनिंग अप लर्निंग, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल। जो भी हम बात कर रहे हैं, अभी हम दूसरी चीजों की तरफ चल रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास पहले बुक का था, बुक के बाद फिर ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज आए, बाकी सिस्टम हम आया, उसी तरीके से इसमें भी हमें काफी कुछ चेंजेस की जरूरत है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी भी शेयरिंग होती है वो स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशंस के बीच में हो जाती है। स्टूडेंट को इजीली रीड अकॉर्डिंग टू हिज और हर चॉइस। जिस तरह से हमारे यहाँ अगर हम बात करें कि हमारे जो डिस्टेंस लर्निंग का जो मोड है, उसमें भी कुछ कंटेंट इस चीज के कवर होते हैं। जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में पिछले कुछ सालों से जो प्रयास हो रहे हैं, जैसे मूक की बात हो रही है, मूडल की बात हो रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स की बात हो रही है, या अर्पित की बात हो रही है, वो सिर्फ इसी की ओर इशारा कर रहे थे। बट इट वाज जस्ट अनफॉर्चुनेट कि ये पेंडेमिक एकदम आया, और पेंडेमिक जैसे ही आया तो हमें इमीडिएटली स्विच ओवर करना पड़ा। अदरवाइज वी वर प्रिपेयरिंग फॉर इट। ऐसा नहीं कि हम इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। दूसरी चीज है कि इंक्रीज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी का जो इंक्रीज यूज है, एक समय में कितने सारे बच्चे कर सकते हैं, बच्चे अपने कन्वीनियंट से भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी। कौन सी कंस्ट्रक्टिव पेडागोजीज हो सकती हैं? जब हम बात करते हैं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन की, तो चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन के लिए हाउ बेस्ट वी कुड यूज अवर पेडागोजीज। जैसे हम बात करते हैं यूज ऑफ रिफ्लेक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज। जैसे एजुकेशन में बीएड के जो स्टूडेंट्स हैं, उसको जनरली हम कहते हैं कि रिफ्लेक्टिव जर्नल्स लिखो। जब वो बच्चा रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की बात करता है, तो उस रिफ्लेक्टिव जर्नल्स के अंदर वो कुछ डिफरेंट स्ट्रेटजीज की भी बात करता है। उसने क्या सीखा, उसने क्या किया, कैसे कैसे उसकी एक्टिविटीज रही, वो सारी की सारी वो एक्टिविटीज लिखता है। और एजुकेशन में हम एक थ्योरी को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ब्लूम्स टेक्सोनोमी। ब्लूम की जो टेक्सोनोमी थी, जैसे सर ने भी बात की सुबह इसमें, कि जो ब्लूम की जो टेक्सोनोमी थी वो इंपॉर्टेंट 6 कंपोनेंट की बात करती थी। और ब्लूम की टेक्सोनोमी 1956 में बेंजामिन ब्लूम ने दी थी। उस टेक्सोनोमी को भी ध्यान में रखते हुए हमें जो बच्चों के जो हम जो बात कर रहे हैं कि उनकी क्रिएटिविटी के ऊपर ध्यान रहे, इनोवेशन के ऊपर ध्यान रहे, उनको बाकी चीजों के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिले, उसका भी हमें फोकस करने की जरूरत है। और जब हम रिफ्लेक्टिव लर्निंग की भी बात करते हैं, बच्चे ने क्या सीखा, किस माध्यम से सीखा, वो सारी की सारी चीज उसमें रिफ्लेक्ट करता है। देन हम बात करते हैं टीचर रोल, गाइड टू स्कैफोल्ड लर्निंग। जब स्कैफोल्ड लर्निंग की भी बात करते हैं, तो जो हमारा जो लेसन प्लान है, उस लेसन प्लान को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं।
और जो लेसन प्लान के वो जो छोटे छोटे हिस्से हैं, जिस छोटे छोटे हिस्से में उसने लेसन प्लान को हमने बांटा है, उसमें हम बच्चों को दे देते हैं। बच्चा उसमें छोटे छोटे ग्रुप्स में वो एक्टिविटीज करता है और एक्टिविटीज करने के बाद वो ज्यादा सीख पाता है। जैसे आज की डेट में कुछ स्टडी सर्कल्स भी चल रहे हैं जो ऑनलाइन टीचिंग होती है, जिसमें कुछ स्टडी सर्कल्स हैं, बच्चे स्टडी सर्कल्स में अपना डिस्कशन कर लेते हैं, अपनी बात रख लेते हैं और पीयर लर्निंग की भी बात करते हैं। बच्चे पीयर लर्निंग में बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। पीयर लर्निंग के साथ साथ जब हम बात करते हैं कोलैबोरेटिव लर्निंग की भी, आज की डेट में कोलैबोरेटिव लर्निंग का भी एक नए अप्रोच के रूप में यूज कर रहे हैं। दूसरा हम बात करते थे कि यूज ऑफ डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मतलब है द मोमेंट वी एंटर इनटू द क्लास, तो डेफिनेटली वी हैव वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट इन द सेम कैपेसिटी और कैपेबिलिटी और कैलिबर। तो अलग अलग स्टूडेंट के लिए हमें देखना पड़ेगा कि बच्चे की पहली नॉलेज कितनी है और जो प्री नॉलेज है उसके बाद बच्चे से हम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस प्रकार से बच्चा बेहतर इस काम को कर सकता है। जब तक हमें बच्चे की प्री नॉलेज के बारे में नहीं पता होगा, उसी के अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट उसको देना पड़ता है। तो ये हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट की। जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट है इसमें हम अच्छे से कर सकते हैं। अब जब बात हम करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग की, ब्लेंडेड लर्निंग के अंदर क्या होता था कि पहले इंडिविजुअल अकेला सीखता था। बच्चा स्कूल में आया या कॉलेज में आया, यूनिवर्सिटी में आया, बच्चे को टीचर ने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद बच्चा अपने घर चला गया और वो काम अपना खुद करता था। बट आज की डेट में क्या हो रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग जब वो करता है बच्चा, तो ऑनलाइन में कुछ पर्सनलिफाइड ऑनलाइन लर्निंग होती है जिसमें बच्चा खुद कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, वो उस एक्टिविटी में कोई सॉल्यूशन करता है। जब वो सॉल्यूशन करता है तो अल्टीमेटली उसकी एक लर्निंग अच्छी होती है। वैसे भी हम बात करते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग हमेशा बेटर होता है। इसके बाद उसको हम जब बात करते हैं तो वो स्मॉल ग्रुप्स में भी हम बात करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में बच्चों को हम डिवाइड कर देते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग में भी यही करते हैं कि हम ग्रुप्स में बच्चों को डिवाइड कर देते हैं और बच्चे डिफरेंट लेवल पर अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार सीखता है। then gradually it will convert into कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग में 2 बच्चे, 4 बच्चे, 10 बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, बच्चों के एक दूसरे के अंदर। जब हम बात करते हैं सीखने का, तो सीखने से मतलब सिर्फ बच्चों का ये नहीं है कि दे आर लर्निंग रिलेटेड टू कोर्स कंटेंट। अल्टीमेटली उसको समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में, एक साथ ग्रुप में काम करने के बारे में, टीम में काम करने के बारे में, लीडरशिप के बारे में, बहुत सारे दूसरे स्किल्स भी डेवलप होते हैं। जब हम बात करते हैं केवल टीचिंग और लर्निंग की, तो अल्टीमेटली वी कांट कीप इट डिफरेंटली कि लर्निंग जब बच्चे की सिर्फ हो रही है तो वो सिर्फ एक ही चीज की लर्निंग हो रही है। लर्निंग के अलावा जो हमारा उसका जो कोर्स कंटेंट है, उस कोर्स कंटेंट के अलावा भी बच्चा बहुत सारी चीजों को सीख पा रहा है, और जो बच्चा वो सीख पा रहा है वो उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात हम करते हैं। इसके अलावा जो बात हम कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लिप्ड क्लासरूम। जो फ्लिप्ड क्लासरूम है, पहले जो हमारे जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होता था, ट्रेडिशनल क्लासरूम में ये होता था कि हम बिफोर टीचिंग हम कोई काम करते थे, स्टूडेंट्स को हम पहले रीडिंग के लिए प्रिपेयर करते थे और उसके बाद बच्चे को टीचर जो है अपने क्लास में डिलीवर करते थे, और स्टूडेंट जो भी वहां गेन करते थे वो उनका पहला जो मटेरियल के साथ जो एक्सपोजर होता था वो क्लासरूम में ही होता था। उससे पहले बच्चे का कोई भी क्लासरूम के बियॉन्ड एक्सपोजर नहीं होता था। उसके बाद घर पर जाने के बाद बच्चा आफ्टर द क्लास, बच्चा जो काम करता था वो खुद ही करता था, होमवर्क करता था, प्रैक्टिस करता था। ये जो मटेरियल जो अप्लाई किया उसने उसको करता था, उसमें से वो कितना सीख पाता था या उसकी जो कमियां रहती थी या कुछ त्रुटियां रहती थी, कुछ गलतियां रहती थी, उसको वो नहीं कर पाता था। अब जब हम बात करते हैं कि फ्लिप्ड क्लासरूम की, फ्लिप्ड क्लासरूम में हम क्या करते हैं कि बच्चे को पहले हम वीडियो दे देते हैं, ऑडियो दे देते हैं, स्टडी मटेरियल हम बच्चे को पहले दे देते हैं। बच्चा उस स्टडी मटेरियल को लेकर के अपने काम में लेता है, बच्चा उसको सुन लेता है, सुनने के बाद क्लासरूम में आता है। जब क्लासरूम में बच्चा आता है तो वो पूरा एक असाइनमेंट के साथ आता है, फुली प्रिपेयर्ड आता है। उसके बाद बच्चों में आपस में एक क्विज की भावना आती है, क्विज करा लिया या उसमें उसके क्विज के थ्रू या बाकी एक्टिविटीज के थ्रू वी एंश्योर कि जो हमने उससे एक्सपेक्ट किया था वो सीखा कि नहीं सीखा। उसके बाद बच्चे को जो टीचर है वो एक स्टूडेंट लर्निंग के रूप में, उससे क्वेश्चन आंसर करने के रूप में, और बच्चे भी आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेटिव लर्निंग को इसमें सीख पाते हैं। हम सॉरी मैं पीपीटी नहीं दिखा पा रहा हूँ, वैसे थोड़ा अच्छा रहता अगर दिख पाती। आज की डेट में एक इंपॉर्टेंट है जो चीज, दैट इज टेपेक मॉडल। टेपेक मॉडल का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। जो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज, इसके भी कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कि जब बच्चा हमारे कंटेंट के बारे में सीखता है उसको एक नॉलेज होती है। नॉलेज के बाद बच्चा क्या करता है कि जो बच्चे की जो नॉलेज है, पेडागोजिकल नॉलेज,
कंटेंट नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, और इन सब का जो एक ओवरलैपिंग है, दैट ओवरलैपिंग इज कॉल्ड एज टेपेक, यानी कि टेक्नोलॉजिकल पेडागोजिकल नॉलेज। इस तरीके से जो बच्चे की जो हमारी जो एक एजुकेशन रहती है वो डेफिनेटली अच्छी तरह से रहती है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे जो मॉडल्स हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हमारी आ गई हैं, वो भी हमारी अभी चल रही हैं। जैसे अभी हमने बात की है टेपेक के बारे में और फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में। इसके अलावा हमारे जो असेसमेंट के जो मेथड्स हैं, अब जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अगर मैं शेयर करना चाहूँ आपके साथ, हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन लर्निंग की या ऑनलाइन टीचिंग की, हमने ऑनलाइन टीचिंग की, लेकिन जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात करते हैं तो ऑनलाइन टीचिंग के अंदर हमारा बच्चे का असेसमेंट भी ऑनलाइन होता है, बच्चे का टाइम टेबल भी हमारा ऑनलाइन होता है, बच्चे का जो प्रोग्रेस होती है दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन। तो शायद कुछ हद तक हम लोग इतने प्रिपेयर्ड अभी नहीं थे, बट ग्रेजुअली वी विल डू दैट। अब जब बात करते हैं असेसमेंट, असेसमेंट में भी हम 3 स्टेज की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेज इज डायग्नोस्टिक स्टेज। जब हम डायग्नोस्टिक की बात करते हैं तो अल्टीमेटली ये होता है कि जब हमारा बच्चा हमारे पास आता है, हम बच्चे को डायग्नोज करते हैं कि बच्चा डिफरेंट लेवल पर कितना अच्छे से सीख पा रहा है, किस बच्चे की प्री नॉलेज क्या है, एंड बेस्ड अपॉन दैट प्री नॉलेज हम बच्चे को आगे की बात करते हैं कि जितनी नॉलेज है उसके आगे की हम नॉलेज उसको दे पाएं। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एवरी स्टूडेंट डजंट हैव द इक्वल स्किल्स। हर बच्चे के अलग अलग स्किल्स हैं, अलग अलग प्री नॉलेज है, हर चीज के बारे में बच्चे का अलग अलग एक लेवल है। देन इसके अंदर दूसरा जो होता है दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट की जब हम बात करते हैं कि जब बच्चे को हम नॉलेज देते हैं, बच्चे को जब हम शिक्षा देते हैं, उस नॉलेज में बच्चे को हम बीच बीच में फीडबैक देते हैं। सर आपकी पीपीटी चल गई है, अच्छा मैम शेयर कर दीजिए, मैं भी देख पाऊँ तो बड़ा अच्छा रहेगा। यस सर, आई एम डूइंग इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। It's the same, sir? No, yes, now I can see it. Ma'am, इसको move करेंगे please? Yes, yes. Just sir, give me. I'm putting it on slideshow, sir. Okay, ma'am. Thank you so much. You're welcome, sir. Please stop me where you want to stop. Yes, ma'am. Yes, ma'am. This one? Yes. Next one, please. Sure, sir. Next one, ma'am. Okay. Yes. We were talking about assessment. Assessment lies at the heart of learning. जब हम उसको असेसमेंट नहीं करेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि बच्चे ने कितना सीखा, किस तरीके से सीखा, किस शेप में सीखा, और जो हमारे जो करिकुलम था वो उसका किस लेवल तक बच्चा मीट आउट कर रहा है, और उसके अलावा बाकी जो उसके एबिलिटीज में जो चेंजेस आया वो कितना आया। इसके अंदर हम बात कर रहे थे डायग्नोस्टिक असेसमेंट बिफोर लर्निंग। अल्टीमेटली जब बच्चा हमारे पास आता है उससे पहले भी हम बच्चे का एक डायग्नोस्टिक करते हैं, यानी कि बच्चे का हम एक असेसमेंट करते हैं, और इस डायग्नोस्टिक में यानी कि इस असेसमेंट में हम देखते हैं कि हर बच्चे का क्या क्या डिफरेंस है, हर बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी अलग होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। जब हम इस चीज को देख लेते हैं उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेज आती है, नेक्स्ट मैम, थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है फॉर्मेटिव स्टेज। जब एजुकेटर ने बच्चे को बता दिया, बच्चे के बारे में पता चल गया कि इस बच्चे का प्री नॉलेज ये है, जैसे सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं आ रही सर, शानवाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उनके यहाँ भी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है। तभी उन्होंने मुझे अभी तुरंत पीपीटी भेजी थी तो मेरे यहाँ हो गई, फिर मैंने सूक्ष्म मैडम को भेजी कि इनकी चल जाए। मेरे ख्याल से शानवाल जी के कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है बार बार। वो कह ही रहे थे कि मैडम मेरे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, पीपीटी नहीं चल पा रही है। क्या करें, फोन करें? स्टार्ट कर देते हैं नेक्स्ट स्पीकर। मैम एक बार कॉल कर लीजिए। एक बार कॉल कर लीजिए। एक बार कॉल कर लेते हैं, क्योंकि वो ये बात बोल रहे थे कि मैम पीपीटी आपको अभी भेज रहा हूँ, आप चला दो, हमारे कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। फिर मेरे यहाँ कनेक्शन की प्रॉब्लम हो गई, तो अभी देखती हूँ, मैं उनको फोन करती हूँ।
श्वेता प्रसाद मैम भी कह रही हैं कि वो बहुत लेट हो रहा है तो उनको भी बोलना है, वो उनके बाद स्पीकर हैं। ठीक है मैम। आप कह रहे हैं वो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर रहे हैं? ठीक है, we will wait. हाँ, 2-3 मिनट लगेंगे। कनेक्टिविटी इज द बिग इशू। हम लोग इतनी बात कर रहे हैं ना इन सब चीजों की, तो वही मैं आपसे कह रही हूँ लेकिन कनेक्टिविटी इज अ वेरी बिग इशू हियर। मैं जो हूँ जब यहाँ से अनीता मैडम, जी सर। नेक्स्ट स्पीकर जो है हमारी मैडम श्वेता प्रसाद जी, उनको बुला लीजिए। सर वो तो कह रही है, लेकिन अब वो वैसे दिनेश जी वाला फियास्को होगा कि वो लाइन पर हाँ, तो कैसे क्या करें? 2 मिनट वेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अभी वो कह रहे हैं कि मैं कनेक्शन कर रहा हूँ सर। एक्चुअली वही मुझे बात भी है ना, कनेक्शन की प्रॉब्लम थी तो मुझे जाकर डेस्कटॉप पे चलाना पड़ा। अब एक बार वहां कनेक्शन एक स्पीकर 2 स्पीकर के लिए बहुत अच्छा रहा है, बट ये धीरे धीरे थोड़ा जहाँ पर लोकली वो हो रही है थोड़ी नहीं, वो दोपहर का टाइम हो रहा है ना, लाइट बार बार जा रही है जी। this problem is at the end of the speaker only sir, so we are trying कि हो जाए सही से। और जितनी भी हम बातें कर रहे हैं इसमें जो हमारा आगे पेडागोजी चेंज हो रहा है या कुछ भी हो रहा है उसमें तो सबसे बड़ी लिमिटेशन आएगी मेरे ख्याल से, वो कनेक्टिविटी ही आने वाली है। whether we take it here or whether we take it in the rural area और अभी तो हम एनसीआर में बैठे हैं तब ये हाल है ना। या तो क्या करें, श्वेता मैम को बुलाएं? तब तक हाँ श्वेता मैम को टाइम दे दीजिए। शी विल कंटिन्यू। हाँ, उनको स्टॉप करके श्वेता मैम उनको फिर आप नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम, शी इज सेइंग बिकॉज़ ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। अनीता मैम उनको आप कंक्लूजन पे ले सकते हैं लास्ट में जी। अभी तो मैडम को कर दीजिए। श्वेता मैम, Am I audible? Yeah, ma'am, you can come in. So I'm not going to take much time. I will make a of the profile of ma'am. Ma'am, पहली बात तो मैं आपका धन्यवाद दूंगी कि at my one call you agreed to join us on this portal. Ma'am is from Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Banaras Hindu University. And sorry, ma'am, we kept you waiting. She has a specialization in sociology of development, women studies, women technology. And to her credit, there are almost 40 papers, presentations, and she has many research papers published. 12 to 13 papers have been published. There are 3 books to her credit. And she has attended a lot of workshops and also a member of various Indian sociological committees. She has been convener of sociological society conferences, research committees on gender studies, etc. So, not taking much of time, I would like that ma'am should come and speak on the topic of session 3, crisis in society, new challenges and opportunities. So, ma'am, welcome, ma'am. Yeah, ma'am. Okay, thank you. Thank you. What you were saying is right. By the time my mood is spoiled. Actually, I'm quite moody when it comes to speaking or taking classes. But still, I would try. So I'll wind up everything and whatever is there on my mind, I'll speak that only. So coming to the, like you're speaking about social crisis, challenges and opportunities. Obviously, I'll be speaking about this present crisis, which is prevalent everywhere. But before that, let us see what is the crisis. In fact, crisis situation globally, social crisis, it might include all the kinds of crises that is prevalent in world today. So the economic crisis, ecological crisis, industrial crisis, motivation crisis, and crisis of crisis management,
So many crises is there in the world today, and all these are different types of social crises. Globally, we can see crisis of international order. Coming to the sociology and sociological theory, we can see that the entire theory and this sociology is dominated by the crisis talks everywhere. And the coming of crisis to sociology, which Golden had talked about. More recently, if we look about, at Habermas has also talked about crisis, a situation when social identity is threatened. He talks that situation to be a situation of crisis. But currently, we are going to focus on this current health crisis, that is corona, and the problems generated by this crisis globally. So when we talk about corona and the crisis, that is health crisis in nature, but can we term it to be a health crisis only? I don't think so, because this corona has created different kinds of crises. Economic crisis is there, social crisis is there, and it is a health crisis also. So I would like to term corona to be a comprehensive global crisis, because the entire globe is revolving around corona and behaving by the way set by corona. So everywhere we see this corona is taking over and deciding the way we are behaving. Now coming to the crisis, when we talk about the social crisis that has been created or generated by corona, I would like to mention few of the crises. First of all, let's take that social crisis and the term which you were also speaking, that corona has created a crisis. The word use of the word social distancing, that somewhere has that negative connotation, and people don't want to use this kind of term, especially we those who belong to sociology. We understand the meaning of social distancing because it is somewhere related to purity and pollution concept. So yes, coming from there and moving ahead, we see that the corona has generated lot of anxieties and uncertainties throughout the world. And this uncertainty, we see that it has already been mentioned by Ulrich Beck in his Risk Society, which is again one type of crisis. He says that in industrial society, because he doesn't talk about post-industrial society, he talks about late industrial society or second phase of industrial society. He has mentioned about this kind of uncertainty. So corona has taken the entire world in the grip of uncertainty, and everywhere people don't know how to react, how to behave. Though we are gradually becoming used to this corona crisis, and we are somewhere now we know how to behave. So the crisis and the uncertainty generated by corona has put the issue of survival on the center stage, because nowadays survival is the most important value globally. People want to survive. That is the most important value. And one of the postmodern thinker, Giorgio Agamben, he has talked about this survival issue and the value of survival that has taken the center stage in corona period everywhere, be it in India or be it at global level. So when survival becomes the issue and takes center stage, that means some of the population, some of the vulnerable sections of society other than the normal population, those who are not much affected, or I would say the chances of getting affected are very little. Apart from that population, there are some sections of population who are quite vulnerable to this corona crisis, and the elderly population is one such population, because somewhere corona has been projected to be a problem of elder generation, a health crisis that affects elder generation the most. So this somewhere the negative connotation has been attached with elder generation vis-a-vis corona. So this period of corona, the elder population needs proper care, and globally, if we see, not talking about India, because in India we keep older population with us,
and they are part of our family, but globally, when we see they are generally they stay in old age homes. So they are already isolated, and taking care of those population and helping them survive this corona crisis is one of the most important challenge, and people should come forward. The health system, the administrative system, and even the society should come forward to help these people equally disadvantaged or equally influenced by this survival issue and the corona crisis is one more segment, though most of the vulnerable sections of society are almost equally affected by corona. But I'm mentioning only these two, and the other category is of physically challenged people, because they need help while handling or while doing their day-to-day activity. So the focus should be on these sections of society. Now coming to the, as I said earlier, I'll be touching and very quickly and leaving the topic, the challenges, and in the last we'll be talking about what kind of responses can be there. So next crisis which comes to my mind is economic crisis, because after corona we saw suddenly one fine day lockdown was imposed, and because of this lockdown imposed in India, I'll be talking here in the context of India only. So because of this sudden lockdown and several phases of lockdown, we see that economic activity comes to a standstill in India. So several activities were going on, but those were very, very essential kind of activities. And in some states, in fact, most of the states, agriculture was also permitted, and people were working on the field. So despite, aside from these two activities, most and healthcare workers, police administration, these were working, but all the other activities had stopped. So the economic front, the economy of the country and globally also has suffered a setback, and we have gone much back in terms of GDP and GNP. Now coming to when we say that economy was closed, so we have gone back in terms of GDP. I would like to remind here, when we say that the economy has been stopped, that means we are talking about the economy from dominant perspective. And being a student of general studies, I can't resist my temptation to share that yes, economic activities had stopped, but only from the point of view of dominant perspective. If we look at the economic activities from the perspective of feminist theories, we see that economic activities were going on. Because what we do, the feminists, what do? They count every activity, the unpaid care work which is going on in the houses, cooking, cleaning, and everything. These are all part of economic activity. So we have to use the word economic activity had stopped with a word of caution, because unpaid care work has increased like anything, because the children were at home, schools were closed, and work from home was a new kind of trend. So all this has somewhere increased the unpaid care work in the society. So we see that from dominant perspective, yes, economic activity had stopped. Unfortunately, this care work, unpaid care work, are not counted as part of economic activity. So this is again a challenge. Running this economy and putting economy on the path of sustained growth again, and counting those unpaid care works which are in the part of women in our country mostly. So middle class families, we see husbands helping there, but generally husbands are not trained to help their wives or female members of the family. So this is one kind of challenge that comes to my mind. Again, if we come to another part of the challenge, I would like to, the immediate challenge that comes to mind is related to education system. I can see, and the previous, in fact, the first lecture
was about technology and how education system is going to be technology driven in the future. Education 4.0, that was the title, I guess. And if we look at the education landscape globally, we see that the education, the thrust of education, especially during Corona period, we have suddenly moved to online platforms. The problem is that, as I would like to quote here one data of NSO, and the year is 2017-2018. So the NSO says that in 2017 and 18, only 9% of the population had both the things, computer as well as internet connection. So if we are planning to move online with only 9% of the population having access to this kind of infrastructure, which is needed for going online, I think that is a bigger crisis in making. Yes, we are moving ahead with this kind of work, but if you look at the global landscape, global educational landscape, I find the issues of serious concerns here, because globally we see, I would like to quote one study that was conducted by Dell in the early, in fact, the corona had not started in India at that time. And the Dell study says that by the year 2030, 70% of the jobs will be unknown to the people in India. Because if in the beginning of the year, Dell has conducted a study that says that in 2070, 70% of the jobs will not be known to the people who are being trained today. So you can imagine the kind of situation we are heading towards. So the situation globally is very pathetic. Yes, we can move to education 4.0. We have already moved to industry 4.0. And the industry 4.0 that is characterized by Internet of Things, artificial intelligence, robotics, and all these things, dark factories where machines work 24/7. So completely globally situation is changing, and in such a scenario, if we are pushing everyone to move online and educate people online, one concern is here that we will lose that human touch that should be there, that relationship between teacher and student. That is a very pure kind of relationship. That is a very different kind of relationship, and we should not miss that kind of interaction that takes place in the classroom. That is my major concern, because if we go and adopt technology in this way and lose somewhere this human connection, I think will be creating a kind of society where we are not in a position to mend the behavior of people and students around us. That is one concern. And another concern I have already shared, that we are not infrastructurally sound enough to move to online platforms. So I have my reservations regarding moving to online platforms. School children, बिचारे छोटे छोटे बच्चे, they are being forced to study through online system, and they are sitting in front of this small telephones and taking online classes, and they have started moving to hospitals and consulting doctors because of this online education problem. So yes, it seems quite interesting to say that we are moving online, but we should be very careful before going online. First, create that kind of infrastructure. And in fact, if you ask for my opinion, I would never like to go online. So educational landscape is another challenge that we have to address. And joblessness. Globally, joblessness and economy has been influenced, and joblessness is another challenge that the globe is facing today, that the world is facing today. As per one of the estimates, during Corona, more than 25 million people were expected to lose their jobs. And the kind of situation we are facing, we are
again trying to lock down the economy. China has already stopped international landing of flights in their country. Chennai in India has imposed another phase of lockdown. So one of the studies of Cambridge, it says that during Corona period, lockdown will be a regular feature. That means will be if the number of cases increases, will be going for lockdown, and because economy has to go move on, so we'll be opening up. So opening up and closing again, opening up and closing up again. This will be the phenomenon, and this will be the practice in near future till Corona stays or till we find a vaccine related to Corona. So this is the, another challenge, managing economy as well as life, protecting the life of the people globally. That is another challenge. And another challenge that comes to mind is related to migrant workers. We had seen the plight of migrant workers during this Corona period. Imagine the situation and try to remember the Delhi bus terminal, the Bandra station. What was visible there? Only heads were visible and people were not visible. So the number of migrants that, after lockdown who wanted to move to their native places were in fact in millions, many millions of people who had migrated to urban centers in due course of time. They decided to go back to their own places because they were suffering from loss of income and they had nothing to eat, and the government of the country, government of the places, states where they were staying, they were not in a position to convince these migrant laborers to stay there and wait for some time. So they started moving, and the plight of these migrant workers, we all know, they took to roads. When they were stopped at roads, they took to railway tracks, they took to rivers, and they approached their own places through forests as well. So we don't know the plight of many migrant workers who had taken these unusual routes to reach their places. And when they reach their home, after traveling for miles and without any idea of when they will reach, many of them died on road also. And when they reached their home, they were not allowed to enter their villages. And after quarantine, when they went to their home was also not ready to welcome them. So the villagers, the home which they had thought that they are their own people, they did not support these migrant workers. So the migrant workers and their situation, we need to handle this situation also. And I would like to mention here that yes, UP government is doing quite well, and migration commission has been established. Skill mapping of these migrant workers are going on, and many steps have been taken. Manrega remuneration has been increased, and people, many corridors, expressway, Bundelkhand Expressway, Purvanchal Expressway, Gorakhpur Expressway, these expressways are again being, work has been started on these expressways so that employment can be provided to people, these migrant workers especially. When we are talking about migrant workers, one related issue is of women and their plight during this Corona crisis, which is one of the very important challenge that society has to address. When I say women or elderly population, I don't mean that other sections of vulnerable population do not suffer Corona, or they are not facing this crisis, or they are very comfortable facing this crisis. No, I don't want to say this. What I want to say is that during Corona period, I have taken this women component because in our society, we know that women experience things, women experience pandemics differently because of the socio-culturally constructed roles and the gender inequality prevalent in society. The experiences of male and female are quite different. So we have to take women also into consideration and look at the challenges they are facing during this Corona period.
Now, coming to the challenges faced by this women in society during this corona period, let us start with migrant women. We see that many migrant women, though I would not mention the women who were invisible in this the reverse migration. I would use this term reverse migration with a caveat, because the term reverse migration somewhere speaks about the pull factor, which is not there in this corona case. So the pull factor is not there. Still, we are in a general way using the term reverse migration, and so I would also use the term reverse migration. When this reverse migration was taking place and the members were returning, migrant laborers were returning to their place, we see many women accompanying these male members, these male migrant workers, and they face many challenges during this journey. The pregnant migrant women, we see them delivering on road because hospitals had refused them for admission. Even after labor pain, hospitals did not admit these women migrant workers who were moving towards their native places, and unfortunately they had to deliver child on the roadside with the help of police personnel and with the help of ASHA workers. So fortunately, ASHA workers, these police police personnel, part of the administration, they were there to help them. So not only this, coming to quarantine, one case that has come to my notice is that when you quarantine women, please take care of the scenario, please take care of the institution, please take care of the building where you are going to quarantine that particular women. Because during one such quarantine in one of the schools in Rajasthan, we see that one woman was raped at midnight because she was the only woman quarantined there, and all other male members were there in that quarantine center. So just thinking that corona period will make every man a saint is somewhere we are making that kind of mistake. And I think the lesson has been learned, and now women are not being quarantined all alone. So this kind of situation they have faced on road returning towards their home. Because the time is less, I would not like to mention other kind of situation the migrant women has faced. But definitely I would like to mention here the kind of violence against women that has increased during this corona period. Globally, if you say, immediately after lockdown, the news of domestic violence against these women who were locked under with perpetrators of violence, their partners or other persons uh, who somewhere inflicted violence against these women. So we see globally the percentage of violence going up during this corona period. And to mention exact percentage, I would like to mention that globally this domestic violence against women had gone up from between 25 to 35%. So increase in the cases of domestic violence against women because of lockdown. What happens after lockdown? The support system, the frontline support system, which generally handles the cases of domestic violence, like frontline healthcare workers and the police personnel, the ASHA workers, they were busy handling cases of corona. Means they were tackling the health emergency that was created by corona. So they were not in a position to take note of the domestic violence cases, and the women, because of being locked down with the perpetrator of violence, they were not in a position to report the cases of domestic violence they were experiences within their homes. I'm not talking about the cases of domestic violence which the domestic workers suffered globally. If you see domestic workers who did not return and in-house domestic workers, they also have suffered domestic violence and the kind of exploitation, including sexual exploitation at the hands of the owners
with whom they were locked down in this period, and they were not able to move, in fact. And here I would like to mention the concept of global care chain. And this care chain, I would not elaborate what is global care chain, but this global care chain has put already global care chain means that at every stage of this global care chain, every woman is at a disadvantageous position. But during Corona period, this disadvantage faced by the women who are part of this global care chain increased many-fold. So the women have faced, the cybercrime against women have increased many folds. And the kind nature, in fact, not only the percentage, but the nature of cybercrime has also changed. If you look at the National Commission for Women data and other related data, you'll find that the cybercrime against women has increased like anything during this Corona period. So handling the problems faced by women in this Corona period is one of the most important challenges I would like to say that we need to handle. So coming to the next challenge, I would like to mention the challenge of public health system. Globally, we saw during Corona period that not to talk of developing or developed countries like India, Pakistan, Bangladesh, or any other country, but the most advanced and developed Western countries were also facing this the kind of collapse of public health system. Some countries did address the issue quite well, like China and Germany, and some of the countries they handled it quite well. But the Corona crisis exposed the reality of public health system globally, and especially in developed, underdeveloped countries like India. So we know this is another challenge. Many countries responded differently. If we look at China, China responded quite well, and we see that within a week or within a fortnight, hospitals were established. Many personnel were deployed. Healthcare workers were employed there, and the kind of emergency handling which we saw in China. Though I'm not a fan of China, but I would like to mention here that the way they handled this public health emergency was quite appreciable, and I appreciate. So globally we see the speed, scale, and extent to which with which the countries responded to this public health crisis was uneven, was different, and this exposed that yes, public health system globally is a big challenge, and building up a robust public health challenge, the health system should be one of the topmost priorities for country after Corona, and even during Corona. We can see that it is expected that in India, between July to August, and maybe some people say that during November also, the Corona cases will increase like anything. Handle the kind of cases to handle मैम की भी बैंडविड्थ लो आ रही थी काफी देर से. Now, would you like me to stop? Yeah, ma'am. No. Okay, so let me wind up. I will not take other challenges, but yes, what kind of? Yeah, मैम वाइंड अप कर दीजिए 5-10 मिनट में अगर हो सके तो. आप नहीं, हम सारे challenges को छोड़ रहे हैं, responses की बात कर रहे हैं अब. So we have discussed few challenges. Okay. So we have discussed few challenges, and as you're saying, we don't have much time, and I had also thought I'll not take much time, but I have taken. So coming to the responses, how to handle this situation, especially at the global level, we see that this neoliberal governing structure globally has failed. The capitalist system, which is prevalent globally, and that has somewhere failed, and the global institutions
are facing that crisis of trust. That means trust deficit is there. And earlier, these global institutions, WHO, I'll take one of the examples, they used to manipulate developing countries. But now we say this global institution manipulating developed countries like America also. And we see America, they have refused to continue with global WHO, and 300 countries globally have demanded inquiry of WHO and China. So the response should be, can we move ahead with this current model of development? Definitely not, because this current model of development has failed to provide security to people globally, and somewhere entire country is in the countries of the world, they are getting influenced. And we have already started looking inward looking strategy we have already started adopting. So in future, to avoid this kind of situation, we need to develop multiple centers of development should be there. We need to focus on villages and develop these satellite towns and villages so that migrant workers can be accommodated at their own places only, and they don't need to go to bigger cities in search of employment. So this kind of situation is there, and globally building public health infrastructure, addressing the employment problem of these migrant workers, developing villages and satellite towns around these villages, and adopt one of the strategies of self-dependence, import substitution, and one of the most important things, accept Swadeshi. Because when we adopt Swadeshi as a model of development, not only the country develops, but our resources remain within the country, and somewhere the money drain, the resource drain, and the brain drain can be stopped. With these words, I would like to stop. Thank you very much for giving me time, and thanks a lot. Am I audible? मिश्रा मैम आप म्यूट हैं. म्यूट है? Yeah. Now I am audible. Yes, you are audible. Audible. Yes. You are Yes, you are audible. But I am not mute. Yeah, I am not mute. Oh, ma'am, Mishra ma'am was mute. Thank you, Shweta ma'am, for presenting a comprehensive view of the crisis, emerging crisis not only in India as well as globally, and the migrant plight, the health crisis which you have addressed are the major concern of our nation, and really the government is trying hard to address these issues. So not talking much about it, ma'am has talked a lot, and we have got enriched about all the academic insights she has given to us. Thank you very much for joining us, ma'am. Now we switch over to our fourth session, which for this session we have invited Professor Virendra Pal Singh, and I'm grateful to him also that sir has agreed to join us on the digital platform. इस सेशन का जो मेन थीम है यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन टुडेज वर्ल्ड, एंड सर इज गोइंग टू लाइट ऑन ग्लोबलाइजेशन, न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड द राइज ऑफ नेटवर्क society emerging concerns. So sir, over to you. Sir, it's a request from our team and from me also, please sum up 15 to 20 minutes. It's rather not good for an academician to curtail him or her in a time limit, because they have a lot to say. So, but we are running out of time. Technology is not giving much time. Sir, please. I think 15 to 20 minutes. Okay, I will try to. Yes, sir. Thank you, sir. As you have already explained, am I audible? Am I audible? Yes, sir, audible. You are audible. Audible. Okay. As it is already told that the
theme on which I have to speak is globalization, new communication technologies, and the rise of network society, emerging concerns. So I will begin with the notion of globalization, which in broad sense can be said the widening, deepening, and speeding up of the worldwide connectivity in all walks of life. Uh, there are three different perspectives on globalization, and these are first is hyper globalization, second is skeptics, and third is transformationists. The hyper globalizers are those who says that a new epoch in human history has been started, and they see it Excuse me, वीरेंद्र as सर yeah. माइक्रोफोन थोड़ा पास करिएगा, आपकी आवाज धीमी आ रही है, थोड़ा माइक्रोफोन जी। Okay. Now? हाँ सर, कुछ पहले से बेहतर है जी। And now? हाँ सर, now it's clear. Okay. It was because of distance of microphone. So there are three different perspectives on globalization which are very relevant. First is hyper globalizers, and they think that a new epoch in human history has started, and they see it as the end of modernity, and they say nation states will weaken and they will lose most of their power, which will be transferred to the transnational organization as well as downwards to civil society and other organizations. Then they talk of the global liberal market economy, and सर आपकी आवाज गई, आवाज माइक्रो सर, वीरेंद्र सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। hello. Now it's coming. Somebody has muted my voice, in fact. Okay, sir. One of the... Now I have unmuted this. Yeah. Okay, sir. Host has muted my voice. Yes, sir. Actually, two hosts, na? Okay. Sir. Thank you, sir. And they also say that high economic growth will improve the quality of life of all the members of the society. So this is the one viewpoint. Another is skeptics. They are mainly neo-Marxists. And these neo-Marxists, they say that there is nothing new in this globalization. Such type of international trades were also existing earlier in the 19th century, particularly in the beginning of 19th century. And they call it internationalization, and they reject the very term of globalization. Then third set of thinkers are transformationists, and they are differ from the first two categories of the thinkers. Neither they are hyper globalizers nor they are skeptics, and they are of the view that transformation is taking place in the society, but it is not that it is end of modernity, or the nation states will lose their power, or there will be very high economic growth will resolve all the problems of the society. But they are agreed on one point, that transformation is taking place. And this has a whole range of thinkers.
And most of the sociologists now, they are transformationists. And in this, they are of the view that globalization is a central driving force behind the rapid social and political changes which are shaping the contemporary society and the world order. Thus, new communication technologies are at the heart of the globalization. These new communication technologies play an important role in contemporary society, which is passing through the process of globalization. So my presentation is divided into two parts. One is conceptual part, and the other is the what are the changes which are taking place currently at the global level, and particularly in reference to the COVID-19 and its impact on society. Conceptual level, we can see these changes, which we call today globalization, started in the late 1970s, and they posed challenge to existing theoretical frameworks for understanding the society, and namely industrial society or the modern society. The Daniel Bell was perhaps the first thinker who talks about this type of changes, and his a very famous book was The Coming of the Post-Industrial Society, in which he indicated that industrial society or the modern society is now transforming. And he has written another important book called The End of Ideology. And in that he says that now this capitalist ideology or different kind of ideologies are meaningless in society which is emerging today. And later on, after the end of the Cold War, we see that the socialistic and capitalist ideologies become, there was no much competition within them. And we can say that we are now entered into a period in which no ideology is much relevant. So, during this period in 1980s, another development at theoretical level has taken place, and it was the rise of the postmodernism. And they uh, also declared that the project of modernity is over, and a new society, what they call the postmodern society, is emerging. These views of postmodernists were contested by two important sociologists, and both are contemporary. One is Anthony Giddens, other is Habermas. Anthony Giddens says that modernity is not over, but he has argued that now we are entering the late modernity stage. Now this is the late modernity, and later on he talk of high modernity also. Then Habermas says that project of modernity is still unfinished. So it is not over. So I am not going the detail of the views of Giddens and Habermas, because that will take in itself one full lecture. But in late 1980s, the new conceptual paradigm emerged, and particularly the theorist Wallerstein, Emmanuel Wallerstein, who is also one of the important sociologists in the sociology of development. He says he has given theory of word system, and he says that world capitalist system is in crisis, and to resolve this crisis, uh, there are certain changes in capitalist system. And this we can say beginning of the theory of globalization, which we can see in the theory of world system or world capitalist system discussed by the Wallerstein. And Herbert Marcuse, another neo-Marxist, was also of the same view that we have entered into different kind of capitalism, that what he calls corporate capitalism. And he says that now conflict between the rich and poor countries rather than the rich class and the poor class
within a country. So with these backgrounds, we see that the globalization along with privatization and liberalization emerged on the scenario, and the downfall of the communist bloc in Europe and Soviet Union have given rise to the process of globalization all over the world. And this particular model, which emphasize on neoliberal economy, market economy and privatization. So, and this give rise to a global economy, which is very different in nature, and which is part of the process of globalization. But process of globalization is not just confined to economy. It can be seen in every sphere of our life, in political system, in education, in cultural system, in communication system. Everywhere we see now we are operating at the global level. The hyper-globalizers who conceptually say that modernity is over, and skeptics who say that the modernity, there is modernity is also not over, but they say that there is no globalization. So again, Giddens argued that modernity is not over as a result of globalization, but it is transforming itself into a higher stage, and he calls it higher modernity, high modernity. Then a number of other sociologists also joined the debate, like Ulrich Beck, who talks about the risk society, Zygmunt Bauman, he talks of liquid modernity, Manuel Castells, who talks of the network society. And in today's presentation, I will focus on Manuel Castells, what is his notion of network society and how it is relevant in today's situation. So before I come to that, I would like what are the basic concepts of Manuel Castells, who talks of the transformation of the modern society into a new form of society. He says that we are now two terms he has used. One is informational society and the other is network society. And these two are interrelated. What is informational society? He makes a distinction between information society and informational society. And he says sometimes there is a confusion between these two terms, information society and informational society. Information society emphasizes on the role of information in society. Means that information play an important role in society, and in this sense, in every society, even in a traditional society, in a tribal society, information has to play an important role. So in this sense, but informational society is very different from this. And he says that informational society is different because the term informational indicate to attributes of a specific form of the social organization. It means society is now transforming or taking a shape of a different type of social organization. And in this social organization, in which information generation, information processing, and information transmission become the fundamental sources of productivity and power. The production and power relations are produced through the social organization which depend on the information generation, information processing, and information transmission. So information is part of the social organization of the society, that is informational society. For example, any economic activity, whether we are making a transaction in the bank or we are purchasing anything from the online, or we are making any transaction anywhere, immediately it is supported by information. We get SMS or message that you have done this transaction. If
any online shopping process, if you are receiving a particular delivery on a particular day, you will get message in advance. So this economy or social organization of activities in different spheres of the societies are driven by the information services. So information services are the integral part of the social organization in informational society. So this is what new communication technologies are conditioning the society in this particular historical period. So the economy we do have today is informational economy. And one of the key features of the informational society is the networking logic of its basic structure. The informational society work or operate on networking logic. So those who are the student of sociology, they know that there is a difference between the social structure and social network. Social network can be extended anywhere. It has no space bounding. It is not bounded with the space, because network can be extended beyond the community, beyond the society, beyond the place. So basic structure of the society which is now emerging, it operates on the logic of networking, and which explain the use of the concept of the network society. So that's why the logic of the present informational society is based on networking, and therefore it is also called a network society. So we are today living in an informational society which is gradually emerging, or we can say a kind of new society, network society or informational society is emerging as a process of transformation. So there are three important processes in this network society or the informational society. The first is in the relations of the production. Socially and technically, there are changes in the relations of production. New brand of capitalism is emerging, and the capitalism which is emerging as a result of these changes is called informational capitalism. It is not that capitalism which are industrial capitalism, which was part of the modern society earlier, but now we are entered into a new stage that is called informational capitalism, and it has some new characteristics of the production processes of labor and as well as of capital, and also it is transforming the class relationships. So I am not going in detail, but in crux, what is important here, for example, if we take the example of labor, there are two type of labors. One is generic labor and other is self-programmable labor. Earlier in this industrial society, we were has generic labor who were having some skills, and the tasks were assigned to them, but they were not able to reprogram their capabilities. If that skill is not required, they will become unemployed. But in today's informational society, the worker or their labor is self-programmable labor because they are educated. And now you see that we are talking of the knowledge workers or those who are working in BPOs or call center. They are highly educated workers. They can redefine and learn new skills, and they can program can be changed, and they can adjust in the new situation. In this sense, we can say that the nature of the labor is also changed in informational society. The capital is also liquidated. Earlier, it was not
moving from one country to the another country, but in the global economy, we can see that there is a mobility of the capital from one country to other country, and the investment is global and taking over of different industries by or companies. It is a very normal phenomenon. So capital is now movable. The technology is also movable, mobile. The labor is not generic but programmable. So these transformation has created a new situation which we can see in the form of the global financial markets, which operates 24/7, and the production process is also we can see can be moved from one place to another place. And today we are now seeing that most of the companies of Western society, they are thinking of moving from China, and they are looking for new destinations. So this is how this global economy perform, and they will see that how they can make profit if they think that they are not getting profit, or if they are not satisfied, they can move immediately from one place, from one country to the another country. So this is the nature of today's global economy, and which has implication for the future society that I will discuss in my last part. There are two important processes in informational society or network society, and these are related to the concept of space and time. Castells develops this concept of space in relation to cities. And in 1991, he has written one very important work, which later on became the basis of his conceptualization, and that was the informational city. And he says that modern cities, which are global cities, they are basically informational cities. And whilst the organizations are located in places in earlier societies, and their components are place dependent. The organization of the modern society were located in places, and their components were also place dependent. It means place and organization were interrelated, very close to each other. We cannot think of organization without place. But organization logic is placeless and being fundamentally dependent on a space of flows. So in informational society, the organization logic is placeless. Place is not much important. And what is important? That is a space of flows. This is a new concept he has given, a space of flows, because there is a flow of information, flow of people, flow of the goods, flow of the ideas. And how they move? They move through certain networks, and that characterizes the information network. So what is important in this informational society? The information network. And informational network is spaceless because it passes through the circuit of electronic exchanges. So place is not important in this, because networking can be done as we are doing networking in this seminar. So place is not important where you are located, but what is important, that is a connectivity. If connectivity is lost, electronic exchange is lost in the circuit, then you say, sir, आवाज नहीं सुनाई दे रही है आपकी, अब तो पिक्चर भी नहीं दिखाई दे रही. So what is important? This electronic exchange is important, and that is placeless. So this is the space of flows, how the information is flowing. That is important. And if this connectivity is lost, every
activity in society, in any organization, will be hampered. For example, if there is no server is down in a bank, they cannot make any transaction, although all employees are well placed in the bank, they are present there, but they are not able to work because there is no connectivity in the system. There are three important characteristics of this space of flows. One is circuit of electronic exchanges, which make possible the global communication and technological infrastructure that enables real-time interaction across the globe. So real-time interaction that we are assembled, we are located in different places, but we are interacting that is in real time with each other. So it is because of this circuit of electronic exchange, and digital technologies are supported by high speed transportation facilities, that is mobility of goods, people and ideas. So apart from this electronic exchange connectivity, another important thing is the high speed transportation system. And you see that this type of the material structure has been created in last 4-5 decades, which facilitated the process of globalization or operation of the global economy. That is, the material conditions have been created through the high speed transformation. And when we talk of the high speed trains, bullet trains, or other high speed trains, or we talk of the expressways, dedicated lines of railway for transportation, I think this is the part of this particular global economy or the informational society in which we are moving today. The second important characteristic of this informational economy or space of flows is the way in which the space of flows produces a distributed network which clusters around the nodes and hubs. There are a number of hubs and the nodes. And nodes means the centers which provide multiple services, and they provide these services and they also consume these services. And these hubs, or you can say nodes, are global cities. For example, Bangalore, Chennai, our metropolitan, Delhi also, and Gurgaon, although is a very small place, but it is now a hub of most of the IT industries. In Hyderabad, in Chennai, in Bangalore, we have hubs, and these are the places which we call nodes, and they provide all kind of services, not only within the country but throughout the world. In lot of IT services, even the United Kingdom's railway inquiry services are provided by Indian company sitting in Hyderabad. They are providing customer care services to the British Railways. Similarly, in medical field, the Indian professionals, doctors, they are preparing the medical reports of the United States hospitals sitting in India. So these are the things which are happening today. Similarly, academic and knowledge centers are the milieux of innovation. The important these universities and the academic and research institutes are also important nodes in this connection. And third characteristics is the how network nodes represent places where people meet and elites constitute themselves. So these are the important centers. You know that everyone wants to go Delhi, Bombay, Bangalore, because without visiting that place, you cannot do your business. Second important concept which I would like to discuss here is the timeless time.
First is the space of flows, and second is timeless time. This is very important if we look into that. Time equates to the sequence in which events happen. Time means that sequence of events, and there is a sequence, and in that sequence that is time. And historically it is determined by the ways how this sequence is ordered constitute the social character of time. How we constitute the order of the events, that is sequence of the events, and that is social characteristic of time. In the Middle Ages, time was cyclical. So every day we know morning, दोपहर हो गई, रात हो गई, फिर सुबह हो गई, cyclical. That was the time how we were looking time socially. In modern era, time is linear, and it was because of the innovation of the clock that we were having a new concept of time, standardization of time, and past, present, and future. Past, that is linear. Then punctuality, we talk of punctuality, we talk of saving of time, and we talk of the wasting of the time. Don't waste my time. So time is today linear. Castells argue that both cyclic and linear time frameworks establish relatively predictable linear sequence. So in this type of the concept of time that is cyclic and linear, we can predict the sequence of event. Okay, दिन सुबह होगी तो फिर दोपहर भी होगी और फिर रात भी होगी, और रात होगी तो फिर सुबह हो जाएगी. और डेट में अगर हम देखें लीनियर, भाई पहली तारीख के बाद दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, लाइक दैट, इन दैट लीनियर फैशन. 1919 के 2020 के बाद 2021 आएगा, दैट इज लीनियर कॉन्सेप्ट. बट today he says that development of informationalism has disturbed this predictability. Now you cannot predict the sequence of event. और अगर कनेक्टिविटी चली गई किसी स्पीकर की, तो जो होस्ट है वो तुरंत दूसरे स्पीकर को बुला लेगा कि अब आप करो, इनको हम बाद में ले लेंगे. तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इज अनसर्टेन, डिपेंड्स ऑन कनेक्टिविटी. Fortunately, my connectivity is not lost yet. So, because of this, we cannot predict the sequence of events, and informationalists reorganize the events into instances. So now we are not organizing events, but we are now organizing instances, and without meaningful sequence. The sequence is not much meaningful, and this is leading to timeless time. So today we have timeless time. There is no sequence in any event, and this is become important because of the two important developments which took place in last few decades. One is microelectronics, and second is genetic engineering. Now, in genetic engineer, we can manipulate the biological processes beyond time, which can be delayed. You can preserve the sperms and eggs, and so after 50 years, we will do the reproduction process. In this way, genetic engineering can delay the time also. Another important process which is very important is the simultaneous inclusion and exclusion of the places, persons, and goods, and the ideas. These are the four important things in the process of globalization or in the global economy. The places may be irrelevant
and may be excluded, but some places may be overnight important, and things can shift from that place to another. So simultaneously, one place will be included, the other place will be excluded. So globalization or global economy has the capacity to simultaneously include and exclude the people and the places. For example, now Western companies are thinking to exclude China from production process and including Vietnam, India, and some other countries into this process. So this inclusion and exclusion are simultaneously affect the social processes. And another important or last but not least is the virtual reality. Virtual reality means that you are not physically present, but in real you are interacting. And this webinar is a best example of that. That is virtual reality. It is happening, but without meeting personally or physically. So these are some important characteristics of the informational society, or what we say, which work on networking logic. And we can say that network society is an important conceptualization to understand the contemporary processes. And now I will come on the second part of my presentation, although it is, I have taken a lot of time, but I will take just 5 minutes more. The first thing, how the present crisis situation, I am not going in detail because earlier speakers have already discussed all these details of these things, but I will just indicate certain trends, conceptual trends particularly. In relations of production, there will be relocation of industries, as I have just pointed out, how people are thinking to move from China to other countries. Production process, the move of capital, manufacturing units will take place in the time to come. Then production process will also be transformed. And because now social distancing has become an established norm in every sphere of life, the production process, and already some advisories have already given that social distancing has to be maintained. So it will affect the process of production, manufacturing, organization of manufacturing units. And I think it will lead to long-term transformation, particularly in urban setting, and that requires a lot of discussion, because major problem which arise particularly organizationally in the urban areas. Delhi and Bombay become the hot spots of the coronavirus. So point is that the urban situation, particularly slums like Dharavi, I think that in years to come, this we have to find out the solution of this kind of the urban problems like slum, and for that there is a need of new kind of urban planning in this area. Then I am not agreed with those who are saying that globalization or global economy has a setback, and this will not work or operate. But I think that if theoretically speaking, if this type of material conditions, because global economy is not existed in a, you know, in vacuum, but it has very solid material structure, and this will reboot itself in new situation because it has sufficient flexibility. Its operational principle is networking, and network is not is very flexible. You can change your network immediately.
So this has that kind of flexibility that it can reboot. For example, if our system is not working, computer is not working, what we do? We reboot. And if it is not, some part is not working, we format the whole system and we start it open. So I think the system will reboot or reformat itself, and global economy will function itself, but it will be transformed in that process because it has the capacity of inclusion and exclusion. And those who are valued, they will be included. Those who are valued or who are not desired or who are defamed, they will be excluded from the global economy. And that process has already started. The new skills and capabilities will be developed. So that is also because now we are not have generic labor, but we are have self-programming labor in global economy. The virtuality will increase, and we can see that people will go more on online shopping. The whole market will be organized. Now even the small shopkeepers, they are have started home delivery. They have started to registered with online shopping, and this kind of changes will reorganize the whole market, and virtual uh, transactions will be more in days to come. Information service will play important role in organization of work also, and we see that most of the offices are working with 50% strength, and they have allowed work from home, and new communication technologies are supporting this in this particular crisis situation. Physical meetings, physical gatherings, parties will be avoided, and this will affect a number of institutions and activities like hotels, cinema, PVRs, multiplex, restaurants, tourism industry, transportation, rail, roads, airs. They have started railway service, but there are no passengers. Virtual communication will dominate in political sphere. The Amit Shah has already started to address public meetings virtually. Media, social media, web technology will play an important role. Education system is in a crisis situation, and school education has to be transformed. There was a lot of discussion in the very first lecture. I'm not going to, but I think this will be transformed. Secondary education and higher education will also be transformed. Really, we are facing a lot of problems, and how we will cope in the days to come. Although Shweta Prasadji say I don't like this online classes and other things, but I think we have to shift on this. There is no other way, and uh, even in I have important feedbacks from other countries. uh, they are totally shifted on online. In Sweden they have shifted online teaching, but 10 to 20%, particularly lab for lab work, they are only physically, and in lab also, their social distancing is maintained very easily, so that is not a problem. But classroom teaching will be changed drastically. In bureaucracy also, bureaucratic functioning will also be transformed, and we have seen a lot of changes in this. Lastly, I will say that culturally also transformation will take place. People will avoid to go pilgrimages. In satsangs have already closed down. Even the biggest satsang of Radha Swami is not, they are not holding it. Fairs, festivals, celebrations, all these modes of celebration will change. And if we look into this, that in every sphere of life, transformation is taking place. And more and more we will move towards informational society. And I will say that it will give rise to the network society in
time in days to come or in years to come. So I'm very optimistic that the society is further transformed and more at a more faster rate. A society like India, which is a traditional society, within last 2-3 months, we are seeing that how things are shifting at a very faster rate, and how people are learning new things, how people are coping in this uh, crisis situation, and information and communication technologies are playing a very important role in managing this crisis situation. So I would say that it is because of the globalization that we are able to cope with this crisis situation. So globalization will not be stopped, but it will take place in a new form, and society will transform itself in a, what I will say, in a higher form of modernity, or maybe some other conceptualization. So I will stop here. Thank you very much. Thank you, sir. This for Professor Virendra Pal Singh from Center for Globalization and Development Studies, University of Allahabad, Prayagraj. सर, आपने अपने उद्बोधन में कहा वो बिल्कुल सही है, और आपकी इस बात को मैं जोड़ती हूँ जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्यनारायण नडेला, उन्होंने कहा भी है कि when COVID-19 hit earlier this year, 2 years of digital transformation happened in 2 months. तो इतना फास्ट पेस हम लोग मूव कर रहे हैं, और इन पर मैं देख सकती हूँ प्रोफेसर परवेज अब्बासी जी को, जो कि हम लोगों के साथ जुड़े हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सूरत गुजरात से। सर, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन मैं जितने भी हमारे यहाँ पे दर्शक हैं उन्हें बता दूं कि ये एमिनेंट सोशल साइंटिस्ट हैं और नेशनल रिप्यूट, इंटरनेशनल रिप्यूट के सोशल साइंटिस्ट हैं, जो कि शॉर्टेज था टाइम का। तो सर, हम बिल्कुल चाहेंगे कि अगला कोई सेशन या कॉन्फ्रेंस करें जिसमें आपको बुलाएं। आप, हमारा जो मायावती कॉलेज था उसमें मैंने देखा था कि आप नेशनल कमेटी में उसमें मेंबर थे, उसके मैंने ब्रोशर में देखा था। तो ही इज विद अस इन द ऑडियंस, सो सर वेलकम सर ऑन दिस पोर्टल। अब मैं इस सेशन के साथ में पूरी जिम्मेदारी को शिफ्ट करती हूँ डॉक्टर सूक्ष्म रानी अनेजा को, जो अगला सेशन होस्ट करेंगी, और इसके बाद 5वें सेशन के बाद जो ओपन सेशन होगा उसको भी वो होस्ट करेंगे, उसके बाद वैलिडिक्टरी होगा। अब यहाँ से मैं करती हूँ, स्विच ओवर टू अदर्स प्रेजेंटर्स, अदर होस्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और आप लोग कंटिन्यू करें, हम भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वाइंड अप करें। डॉक्टर सूक्ष्म रानी अनेजा। यस मैम, थैंक यू सो मच। प्लीज कैरी ऑन। श्योर मैम। इसके बाद हम जो हमारे साथ प्रेजेंटर हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ। श्री बुद्धिमंता दास जी। Buddhimanta Das ji has been an international personality development coach. He is a director of Bhakti Vedanta Academy, ISKCON, Noida. He is mechanical engineer who studied management and human behavior from Australian Institute of Management, Melbourne. He has been engaged in education, training and counseling for over 25 years. After spending lives in Australia for over a decade, he relocated back to India, where he established his enterprise. As a versatile personality, he has been serving at ISKCON, Noida. So I have learned a lot from sir. So I welcome him to come and present his views on the topic, ensuring the well-being of humanity through spirituality, yoga and meditation, which is really need of the hour in this corona stage where we are dealing with all this. So I request Buddhimanta sir to please come here and present. Good afternoon, Hare Krishna. I hope you all can hear me. Yes. And can see me as well. Yes. Very good. So should I start? Yes, please start, kariye. Okay. Thank you very much, Sukshma ji. Thank you very much, Government PG College, Noida, for having me here to serve you all with whatever little I know. I am delighted and honored to be in the elite society of dignified principals, professors, HOD, directors,
and basically all educationists. So education is pretty close to my heart. So I love to be here, and I know that all of you must be more qualified than me today, but dutifully I'm going to speak. I have been asked to speak on ensuring the well-being of the humanity through spirituality, yoga, and meditation. So my question is that you have been listening to so many personalities for so long today. Can you still tolerate me for next 30 minutes? No, I have that Sure, please. bit concern of your patience actually. You must be very good listeners with very good stamina of grasping more and more subject matters. So before we talk about well-being of humanity through spirituality, let's see what do we understand by well-being. If you go to the dictionary of well-being, it says the state of being comfortable, healthy, or happy. So well-being is directly related to when we are comfortable, we are healthy, and we are happy. So it says, okay, this is well-being state. And there are so many categories in a society to label that this is a well-being or this person is well-being. But I have on a broad platform, I have summed up this little talk of 30 minutes or so in 3 broad headings of well-being. So I'll just touch on these 3 sub-headings of my talk today, 3 major types of well-being. So I'll talk about 3 things: physical well-being, mental well-being, and spiritual well-being. So I'll spend very little time on physical well-being because you all have been practicing this, especially in the lockdown period. And I will spend much more time on mental well-being and then sum up with spiritual well-being. So let's start with first point, which is physical well-being of a person or a society. So physical well-being is the ability to improve the functioning of your body through healthy eating and good exercise habits. I'm sure in this lockdown period, educated people especially, they are pretty concerned about their health because they can't go out, they can't walk, they can't go to gym, they can't jog, they can't swim. So they have worked heavily on their eating plans, timing of the eatings, what they should be eating, what they should not be eating when there's no physical exercise. So this you have been doing. So physical well-being is not that difficult to adopt or gain. Just by regular and proper diet, you can achieve physical well-being. And with regular and proper rest, when body and mind need rest, they just need rest. Rest cannot be replaced by anything, means anything. And the third is a regular and proper exercise. So anyone can be in shape, or you can shape up yourself if unfortunately you're not in good shape. Physically, I'm talking at the moment. By just having regular and proper diet, proper rest, and exercise. Add exercise to your life. So this can bring physical well-being. So as I said, I won't spend much time on this because you all have been doing it, especially recently in few months. So I'll move to mental well-being, which is very, very important point, especially in this situation. People are going through depression. They are unsure about future and their present is not very good. We know that. And there's very little hope at the end of the tunnel, or some people say, still we can't see any hope when this will end. So this is important to have a very strong mental state. And there was a headline in Bollywood, a movie star committed suicide, we all know that. And this is not the first time or last time a celebrity or a known personality or a very wealthy person committed suicide. This is not the first time, and it's not going to be the last time. If people don't
work on their mental well-being, training their mind, working on the health aspect of their mind, this is not going to stop. People have many crores of rupees, many properties, name, fame, stardom, and still they're so alone, they're so lonely, so depressed, nobody to talk to. They can't open their heart with anyone, and they take this sad decision of giving up, quitting their life, which is not a very glorified way of living this world, which is not a dignified death. Human life is very rare. It has a purpose. And we'll talk about more in coming next few minutes. So mental well-being is the ability to practice stress. So we need to develop ability so we can practice stress. There's no life without stress. Forget it. In my seminar, I never say that I can make your life stress-free, because I can't do that. But I can definitely enforce and try to deliver some tools and techniques to practice for everyone so they can deal with stress in a more effective and efficient way than before. So this is the ability to practice stress. It's management techniques to manage our mind and generate the emotions that lead to good feelings. The ability to communicate, develop meaningful relationships with others. Maintain a support network that helps you overcome loneliness. The loneliness is the biggest disease in today's so-called modern world. It's the biggest disease. And people are trying to find happiness in their gadgets, spending time on social media, scrolling their WhatsApp messages, going on the Facebook, but they're pretty lonely inside. They're very lonely people. They're depressed people, very sad people. They have no real friend. They have nobody to talk, their heart actually. So this, of course, there are so many advantages of digital media, which we just picked up in last few months. But everything has a package, and it comes with some side effects, some downside. It gives more air and room for impersonalism, So we have to talk people screen to screen, not face to face. That is called impersonalism. We are no more personal. We are becoming impersonal, and that is the beginning of loneliness. So there has to be balance between impersonalism and personalism, and both have some advantages to suit time, place, and circumstances. We have to pick which is the best tool for us. And the ability to actively participate in a thriving community, culture, and environment. And that is called a person is in a good mental state, mental well-being. See, it is said that you can bash me, you can scream at me, you can even beat me, but please, for God's sake, please do not ignore me. When someone ignores us, we can see that is the highest pain somebody can cause to other person. If your colleague, your friend, your family member, your neighbor, they know you and they just walk close to you without looking at you, without saying, hi, hello, how are you? And look like that you are a transparent person. They just pass through you, just like a Harry Potter movie, you just pass through a wall. So I call them, they're Harry Potters, They don't look at you, they just pass through, they know you. And we know the pain of if someone ignores me, your teachers, professors. And sometimes, in class, especially in school, in junior classes, teacher would punish children when they're very naughty or noisy. But you just go and stand on the back bench or put your face toward the wall and nobody's going to talk to you today, And teacher ignore them. And these children become very depressed actually. They are more depressed than when teacher would, chastise them or stick them, Nowadays, sticking is not allowed. But I'm trying to say when teacher, if she or he is heavy, children are happier than
when they feel, when teachers really ignore them, totally ignore them. So we all know we have disagreement with people, we have difference of opinions with our colleagues, at our workplace, within our small family. But if a family member, if he or she can throw his or her tantrum and vomit it out how they feel, we feel bad, but for time being, then we all are okay. But if just ignore us for a few hours or days and weeks, the life is horrible. We think that this is the end of the world. I have nothing to look forward, you know. So we need to speak up rather than just give up, you know. And there's a big journey between speak up and give up. If we don't speak up our mind with someone we love, surely one day we are going to give up. Give up on that person, give up on situation, give up on efforts, and some nonsense people give up their life. But it all begins when we don't speak up. So please speak up so we don't have to give up. And Lord Krishna speaks very rightly in Bhagavad Gita in chapter 6 that a strong and well-trained mind is our best friend. And same mind, when it is not trained, when it is in a very weak state, it can be our worst enemy. So we have a same entity within us. Our mind can be our best friend or can be the worst ever enemy. So please don't look around for the best friend and don't try to save yourself from your worst enemies. They both live inside. So when we train our mind, he becomes best friend. And if we ignore our mind, we don't train it and let it go with the flow of the society, flow of the air, flow of the glamour, flow of the hankerings, flow of the desires which are never fulfilled. And then, you know, mind stays at our worst enemy. And enemy is never a well-wisher of us. No? Enemy always think bad about us. So we have to make the same enemy our best friend. So he become our well-wisher, our guide. So since the mind may be one's enemy or one's friend, one has to train the mind to become his friend. The mind contains hundreds and thousands of impressions, not only of this life, but from many, many past lives. These impressions sometimes come in contact with one another and they contradict with each other. In this way, the mind's function can become dangerous. So better we train our mind. If not trained properly, the life will become havoc because enemy will stay within. So students of psychology are aware of the mind's various psychological changes. So we'll talk a little bit about how we can attain the state of well-being mentally. So mentally well-being state can be achieved by, again, 3 small steps. By minimizing our expectations. Minimize expectation from others. Second is minimize ego and pride. People who love to live their entire life with a lot of self-ego and self-pride, you know. I am proud of my achievements. I am proud of my seminars. I am proud of my degrees. I am proud of my family and possessions and society and friends and bank balance. And they can never have very healthy mind actually. This mentality goes against our healthy state of mind. And the third is we can minimize our negative thoughts. So I just repeat quickly 3 points. Having minimum expectations from others, minimize our ego and pride, and minimize our negative thoughts. So these 3 small tips can help us attaining the state of mentally well-being, being a mentally well-being person. So normally I give workshops
which is a weekend workshop on this subject, 4-hour seminar with lunch break. But today I have only 30 minutes to speak, so I'm just giving you some vital points and leave rest to you to practice, because you all are the cream of the society, respectable professors and HODs and principals. You can work it out. You just need some tips and you can make the whole story. And the third, my favorite, and our all Indian Vedas recommend it, spiritual well-being. See, when I said first is physical well-being and second is mental well-being. So mental well-being comes when our physical health is okay, good, strong. So we have achieved our physical well-being. We have worked on our body. We have worked on our diet. We have worked on our rest and exercise. So we are in a good shape, And now a good, healthy person can easily achieve the stage of mentally well-being, because mind gives signal to body. Only then body can respond. Sometimes in hospital, doctor says this medicine, the patient is not responding, and the similar other patient is responding very quickly to the same doctor, same treatment, same medication. You can debate on this, that they have different immune system, they have different age, but this very important factor which we don't know is the mental state. If mental state is strong, if person has willingness to recover from any disease, if person has willingness to live again, live more, then he is prone to respond to doctor treatment actually quicker than another person who has nothing to look forward in life, whose life is very sad. So the sad people doesn't respond very quickly to same treatment. Happy people respond very quickly to the same medicines actually, because they are mentally strong. Now, physical strength leads to mental strength, because mind gives signal to body, and the mind is the backbone of body, because he gives signal, and body gets strength from mind, and they complement each other. Now, from where mind gets energy, from where mind gets signal, mind works under whom? Which entity? So that is our self. Our self means yourself, myself, self, spiritual soul or living entity. From there, that word comes spiritual well-being. So spiritual well-being is easy to understand for people who know they are not just this body. They are something greater than this body. They are something more than special than this body. They are something above this body, that is soul. So this spiritual well-being is easily to attain. That stage is easily attainable for such people who are aware of their real identity. That I am not Abbasi, I am not Verma, I am not Sharma, I am not Australian, I am not American, I am not Indian, I am not Kshatriya, Vaishya, Shudra or Brahmana. These are the material portfolios for this body. I am not male, I am not female, I am a soul. That is my real identity actually. But yes, I have got certain type of body, and that is due to my past karmas and unfulfilled desires. So these people attain spiritual well-being much quicker than others. Others can also adopt the path, and by practice can surely achieve this. Surely. So we can tell you a little story, because we have crisis of misidentity. If we don't achieve spiritual well-being very quickly, it means we are still going through crisis of my personal identity, my personal, real self. So there was a story. Lion is always king in forest, as we all know. And when lion roars, all little animals shoo away. They run away from forest. And all the animals were very afraid and so much in distress due to this ferocious lion king. And one day this lioness gave birth to a little cub, little baby lion. And all this humble animals, all this, frogs, rabbits, and this
dogs, they made a plan. The dog said, we will steal this baby of lion, because if this baby lion becomes bigger in few months, then we will have another problem in forest. You know, he will again chase us, and where we will go? Every day this lion comes, they eat our family members and run away. So these dogs, the bunch of dogs made a plan, and we should steal this baby lion. And they steal the baby lion, and they took baby lion away from their parents, lion and lioness. And they took baby to their own area where only dogs would live. Now this baby lion has been brought up and nourished and cultured by all dogs. You know? So this baby lion is growing. He's growing. This lion is growing, but he has crisis of misidentification. He doesn't know he's lion. He thinks he's also one of them. He's a dog. When any lion or any ferocious animal roars, all dogs run, and this lion also run. This lion also run away in fear of his life along with the dogs. So he become very, coward. And one day, another animal was passing through the forest, and he saw this coward lion in middle of family of so many dogs. And he said, do you know who you are? I don't know. I must be one of them. No, you're a lion. You're a lion king. If you just say once, wow, this old dog will run away. Just say once. And on that day, he reminded this lion of this real identity. And this lion who was brought up in the society of dogs, who was, entangled with the crisis of misidentification. First time in his life, he said, "Roar!" and all dogs ran away. On that day, he realized that he had so much of strength, power. He didn't know about his real identity. And now, why I told this story? Our situation is similar. We don't know who we are actually, and we try to find solution of life. How can we actually? We need to know ourselves first before we even talk about well-being of me, my family, or society, or nation, or globe. How can we? Everyone is entrapped in crisis of misidentification. I am male, I am female, I am handsome, I am rich, I am poor, I am this, I am that. Of course, there are bodily designations which last for few years. But do we know our real identity? So the moment we come out of this crisis, we get strength. The moment we know we are above this body, we are spiritual spark of this universe, of the Supreme Lord, who is known by different unlimited names, because God is unlimited, so his names are unlimited. Some people call him as Allah, some call him as Buddha, Jesus, Krishna, Ram, Buddha. He has unlimited names because his unlimited children call him out for help out of love with different names, and he accepts all the bona fide names when we call him. So we have to work on our spiritual well-being. If we don't know ourselves, who we are, how can we improve ourselves? I don't know who am I, and I'm talking to improve myself, improve my lifestyle, improve my life habits without knowing myself. I'm trying to know the word without knowing myself. This is crazy. This is crazy word actually. So we have to recognize the 3 quick tips how we can achieve the state of spiritual well-being now. 3 small tips for that. So we have to recognize that we are soul. We are not just this body. We are this body, but we are not just this body. We are spirit soul, and we are part of the Supreme Lord. And second, do not live in the past. Free yourself of past memories and experiences. No. We say just forget and forgive, but sometimes it is not so easy to forget. But surely we can forgive others. I understand forgetting is very difficult. It takes a lot of practice.
and tolerance. But forgiveness is not that bad. If we can't forget, we can definitely forgive, not for others, for ourselves. Unless and until we forgive people who we think they create some havoc in our life at some point of time, we cannot make progress in our life. We have created the biggest hurdle in our own progress by not forgiving others. So we don't forgive others because we love them, we like them, we want to forgive them because they live a happy life. No. Here I can say, let's become little selfish about ourselves. If you want to be selfish, this is the best time to be selfish. When we forgive others. Forgive others selfishly. I may not be able to forgive others for them, but surely I am forgiving others for myself because I want to make progress in life. I want to touch the sky. My goals, my ambitions, my dreams are, top of the world. So I cannot be stumbling block in my own progress. Keeping that in mind, we forgive people. If we can't forget, please try practicing forgiving others for ourselves, for our spiritual being, for our well-being. And third is meditate regularly and surrender to the Supreme Lord. This is also meditation when you are listening to my lecture, which is based on our ancient Vedic knowledge, primarily Bhagavad Gita. So you are listening to the message of the Supreme Lord. So this is called meditation. Closing your eyes and sitting in asana, that is one type of meditation, but that is not all in all. Think of God. Think of yourself as a part and parcel of God. This is really meditation stage. So you elite professors and HODs, you can always be in meditation state. Always. As long as you think you are not body, you are soul, and you are part of God. You are a spiritual spark of Supreme Lord, and that is called meditational stage. So even without closing eyes, without having yoga asana, which is not possible in colleges, giving lectures, busy lifestyle, but you can always attain meditational stage just by thinking of God, praying to God, connecting yourself to God. And that asana stage is also pranayama and other ashtavidya of yoga asana, yoga sadhana is also meditation. But I'm saying that is not only meditation way of leading a good life. So anytime you think of yourself as a part and parcel of the Supreme Lord, you are in meditation. Think about that. It is so easy. Any work you want to do for others, thinking that they are also part of the Supreme Lord. They are also in other way our globally brothers and sisters. So that is meditational stage. So then we will be happy. So there's no magic about building well-being. Keep in mind, it takes time and effort to build any new skill. In past 3 months, we all have built many new skills because maids and servants were not coming. We were washing our car, we were cleaning our house, we were cooking, and even I learned so many skills. I became the best dishwasher. Nobody can clean dishes better than I do now. So it takes little effort and time to gain any skill. So similarly, we can really gain our well-being at all the 3 levels. So think about this. Imagine you are in a car, your engine works great, and your transmission of car is beautiful. But your brakes don't work. Now there's a problem. Because your brakes don't work, it doesn't really matter how well your engine and transmission work of your car. Because when you will require to stop it, it won't stop. And you have trouble in coming to a stop line. So you are still going to have trouble in driving car if brakes don't work. So we need a complete healthy car where every segment, every part, every department of car
is in healthy condition, not only transmission or engine, even brakes. Similarly, we need a complete healthy package life where all segments of our life are in good, healthy working state. So I have covered three main states of our life: physical well-being, mental well-being, and spiritual well-being. And this is the package of life. And we need to work on all these different segments, just like example of a car I gave. So we can't say, oh, my one segment is good and I can carry on my life because other two are not healthy or one is not healthy. This is not going to work. But most importantly, if we can work on our spiritual well-being, if our spirit, we can connect our soul to the supreme soul. If we can have healthy spiritual state, then our mind surely will be very healthy and mind will become our friend. When our mind, which has been trained, which has been made stronger, becomes our friend and in healthy state, then we can easily achieve physical good health also. So these all segments complement each other. We can work separately on three departments, but surely we need to give more emphasis on spiritual well-being, because then everything else will follow. Everything else will follow without putting extreme efforts on other departments. Of course, we need to put some efforts, but not extreme effort. If Supreme Soul is giving blessing to our soul, everything is going to be singing sweet in our life. So now we can easily say and safely say one cannot be happy unless one is healthy. So let's work on our real health, physical health, mental health, and ultimately our spiritual health. And I just finish. Do I have 2 more minutes, Sukshma ji? Can I have 2 more minutes, please? Sure, please. 2. I'll conclude. This is my last statement. 2 more minutes. Thank you. So now, how healthy we are? How do we define your health is good or my health is good? So this is the sutra of the day I'm going to conclude with. Healthy people are usually happy people. You can figure it out. And a healthy person has 3 symptoms. I believe you all are having some pen and paper handy. If you like, you can write down. Otherwise, you can rely on your good teacher memory. So 3 symptoms are given for a healthy person. 1, a healthy person sees good quality in everyone. That person is surely healthy if he or she has habit to see good in others. These are very intelligent people, very smart. They always find some good quality and they know the art of appreciating. They know how to appreciate others. They can find any little point and genuinely from their heart they can appreciate others. This is a skill which only healthy people have. Happy people have. Unhappy people, they don't know how to appreciate others because they cannot see good qualities in others. So what to talk about appreciating others? And the second quality of a healthy person, second symptom of a person who is really healthy. He or she is ready to forgive anyone before even someone asks for forgiveness. They are truly healthy people. They don't wait. Oh, that person will come to me, then I will think whether should I forgive or not. In their own mind, because I have already covered this point in mental well-being state, that we forgive others for ourselves, not for them. So this person is healthy because he doesn't wait or she doesn't wait. In their mind only they forgive people for their unlimited offenses. Because they want to make progress in life. They have very little time in life. They value their time and their goals are very high. They want to achieve their goals. They don't have time to muck around, to waste, to just, hold on to their bad memories and thoughts. They have no moment to waste in life. So they are super smart people. So, and third symptom of a healthy person is he or she has healthy relationship with others in general. So they know how to
build relationship, how to continue relationship in a healthy and sweeter way, in spite of difference of opinion, difference of so many things. They will remain. See, being happy does not mean that everything is perfect in this life or everything is imperfect in this world. No, that is not happiness means. But happiness means that you have decided to look beyond imperfection. So today you have decided that I am going to ignore imperfection of this world. I am not going to look in imperfection in others because I myself have too many imperfections. So happy people are those who don't wait for perfect state or perfect people or perfect situation, perfect country, perfect job, perfect family, perfect life partner. No, they have decided to look beyond perfection. So I conclude my talk with these 3 symptoms of a truly healthy person. And I already told that happy people are healthy people and vice versa. So thank you very much once again for having me. And it was pleasure to speak in the society of very qualified, very dignified cream of this country, cream of this society. I'm feeling blessed. Thank you very much. Hare Krishna. If you have any question or comment, I can try to answer. Otherwise, thank you. हरे कृष्णा. थैंक यू. हाँ जी. मैम रेखा मैम के पास शायद सवाल है. जी. ओके. तिवारी मैम के पास. ठीक है. श्योर. उनको अनम्यूट किया है. मैम अनम्यूट कर ले अपने आप को. यहाँ से तो कर दिया. रेखा मैम शायद उनका हाथ रेज है ना. हाँ मैम. रेखा मैम आप पूछ सकते हैं. आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट कर लीजिए मैम. कुछ पूछना है क्योंकि मैम का हैंड रेज्ड आ रहा है. जी मैम आप कुछ कहना चाहते हैं रेखा मैम? नहीं शायद. She saying nice lecture sir in a text message. Yes, absolutely. Thank you Priya ji. Thank you very much. Absolutely. Thank you for your encouraging words. That will help me in preparing my next seminar in a better way. Okay sir, very nice lecture. Absolutely. Thank you. My pleasure. Thank you so much sir. Thank you. For enlightening us and for telling us in very simple and sweet words that how we can stay happy physically, mentally as well as spiritually. And at the end you gave us bonus also that how we can judge ourselves also, that whether we are happy or not or whether we are healthy or not. So that will be like a barometer thing. So we can always keep that in mind. So whenever we lag, we can remember these 3 golden rules, and then we will definitely proceed with this. Thank you so much for joining us. Hare Thank Krishna. you, Sushma ji. Thank you, Neeta ji, for your compliment also. Thank you very much. Hare Krishna. Now, I would like to invite for open session our guest speaker, Dr. Rosie Mishra, who is Associate Professor in MMH College, Ghaziabad. So, ma'am, please come and please share your opinions with us. रोजी मैम, मिश्रा मैम, रोजी मैम है? रोजी मैम अनम्यूट कर लीजिए आप. मैंने अनम्यूट किया था. थैंक्स शैली एंड सूक्ष्मा एंड प्रिंसिपल मैम. मैं अपना टॉपिक शेयर कर रही हूँ आपके साथ. इंडस्ट्रीज इन यूपी पोस्ट कोविड-19. जैसा कि हमें पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि 28 राज्यों के साथ बड़ी एक अर्थव्यवस्था है और उसमें यूपी का महाराष्ट्र के बाद सबसे दूसरा स्थान आता है. तुरंत ही महाराष्ट्र के बाद आता है जो दूसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है. आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है मैम. अच्छा. तो उत्तर प्रदेश जो कि भारत की दूसरी मैम अब आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है. रोजी मैम आपने अपने आप को म्यूट कर लिया है जी. हो गई आवाज. जो सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था जो दूसरे स्थान पर यूपी है, जिसमें कि बहुत ज्यादा उपजाऊ भूमि के साथ कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से यहाँ पर कृषि की जाती है. लेकिन इसके अलावा यहाँ पर
कृषि में तो जीडीपी का 23% ही हिस्सा है, जबकि उद्योग का 28% है। तो इसीलिए हम यहाँ के उद्योगों के बिना इकोनॉमी को आगे बढ़ने के विषय में नहीं सोच सकते। और यहाँ पे कृषि के अलावा अनेक जिलों में, हमारे जो लगभग 75 जिले हैं, उनमें फूड प्रोसेसिंग, आईटी, टूरिज्म, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऑटो कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल्स, हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, लेदर बेस्ड इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स गुड्स एवं कॉटेज इंडस्ट्री मुख्य रूप से यहाँ पर ये इंडस्ट्रीज लगे हुए हैं। और इस समय जो कोरोना महामारी है वो देश में ही नहीं, जो कि पूरे विश्व में फैली हुई है। और 18 मार्च से 31 मई तक हम 4 चरणों में जो लॉकडाउन हमारा हुआ और हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है। तो 20 करोड़ लगभग पॉपुलेशन यूपी में रहती, जिसमें से 14 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और 2 लाख करोड़ का लगभग घाटा यूपी में अकेले इंडस्ट्री में हो चुका है। तो इस 2.5 महीने के लॉकडाउन में हम पहले सारे इंडस्ट्रीज तो नहीं ले पाएंगे, कुछ प्रमुख इंडस्ट्रीज लेते हैं जिन पर क्या घाटा रहा और क्या प्रमुख नुकसान हमारे इंडस्ट्रीज को उठाने पड़े। तो सबसे पहले मैं इंडस्ट्री ले रही हूँ लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री में अगर हम बात करते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से जिले हैं जो लेदर इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, तो उसमें कानपुर जिले को हम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कानपुर जो है पूरब का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। और यहाँ पर टोटल जो घाटा है कानपुर शहर का, वो 6,000 करोड़ घाटा है। 40,000 करोड़ रुपए का चमड़ा कारोबार था, जिसमें से 1,000 करोड़ का सेडलरी, फिनिश लेदर और फुटवियर में घाटा है। 4500 करोड़ रुपए का ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, केमिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का घाटा है। 150 करोड़ रुपए का होजरी में घाटा है। 300 करोड़ रुपए का प्लास्टिक और रबड़ में है। और लगभग 18,000 यूनिट्स कानपुर में चल रही हैं, चलती हैं मतलब मौजूद, उसमें से 15,000 इकाइयां ड्यूरिंग 2.5 महीने बन रही हैं लॉकडाउन के टाइम। और 3,000 इकाइयां सिर्फ वे ही चल पाई हैं जो कि खाद्य आपूर्ति करती थी, बेसिकली फूड का प्रोडक्शन करती थी। तो इस तरह से अकेले कानपुर में इतना बड़ा घाटा हुआ है। उसके अलावा हमारा आगरा आता है, अगर लेदर इंडस्ट्री में प्रमुख रूप से देखें तो देश के टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट का करीब 65% उत्पादन यहाँ पर चमड़े का होता है। और 15,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर है, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का घाटा आगरा को अकेले उठाना पड़ा है। 48,000 यहाँ पर MSMEs हैं, जो कि जिसमें 13 एक्सपोर्ट यूनिट्स हैं जो कि ज्यादातर एक्सपोर्ट करती हैं। और इसमें 5 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ था, जो कि ठप पड़ा हुआ है। अब लॉकडाउन हमारा जो अनलॉक 1 हुआ है, उसमें भी यहाँ पे 63% ही उत्पादन को अनुमति मिली है, क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग NCR में रहते हैं कि आगरा सबसे ज्यादा इफेक्टेड था कोरोना से शुरू से ही। तो बहुत सारे जो यूनिट्स हैं वो कंटोनमेंट एरिया में आते हैं या रेड जोन में आते हैं, इसलिए अभी भी पूरी यूनिट्स को खोलने की अनुमति नहीं है। 63% की उत्पादन की अनुमति मिली है। और 200 जो करोड़ रुपए का टर्नओवर करने वाली यूनिट्स थी, अकेले एक यूनिट करती थी, वो 2 या 3 करोड़ रुपए मात्र का टर्नओवर कर पा रही है। दूसरी मेजर इंडस्ट्री जो हमारे यूपी में है, जिसमें हम दूसरा लेते हैं हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम इंडस्ट्री, क्योंकि भारत में इतनी 130 करोड़ के ऊपर हमारी पॉपुलेशन है, तो हम लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को नहीं छोड़ सकते। और भारत में जो कि बहुत पुराना शिल्प और हस्तशिल्प उद्योग है, जो कि अगर हमारे यूपी में देखें तो 23,000 करोड़ रुपए का हस्तशिल्प उद्योग है। और इसका अब तक जो घाटा है टोटल यूपी में, वो 15,000 करोड़ रुपए का हो चुका है। इसमें बहुत सारे जो हस्तशिल्प उद्योग हैं, जिसमें से बनारस को लेते हैं। बनारस में अगर दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक देखें तो अकेले 3 महीने में उन्होंने 1,500 करोड़ रुपए का कारोबार किया था। उसके बाद उन्हें उम्मीद थी कि मार्च में होली आएगी, फिर नवरात्रि आएगी, ईद, गर्मी के और शादी के जो ब्याह होते हैं, समारोह होते हैं, उनमें वो 2,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर पाएंगे। लेकिन लॉकडाउन में ये पूरा 2,000 का जो टर्नओवर था वो शून्य हो गया। और अब उन्हें ये उम्मीद है कि शायद नवंबर तक सुधरेगा। अभी भी अनलॉक 1 से उन्हें कोई फायदा इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि समारोह में आप जान ही चुके, शादी में भी 20 से 50 लोगों की अनुमति मिली है।
तो इसलिए इस तरह के व्यवसाय की उन्हें कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं है। इसी प्रकार से सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है भदोही, और ये भदोही जो है कालीन के लिए विख्यात है। 60% देश का कालीन निर्यात अकेले भदोही की भागीदारी है उसमें, छोटा जिला होने के बावजूद, और यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए का निर्यात प्रभावित हुआ है। भदोही को हम संत रविदास नगर भी कहते हैं, जहां पर कि 2000 करोड़ रुपए का माल इंडस्ट्रीज के जो गोदाम है वहां पे डंप पड़ा है। 500 करोड़ रुपए का माल पोर्ट में फंसा हुआ है। 1000 लोग इस व्यवस्था से डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो जुड़े थे वे बेरोजगार हो गए हैं। और आगे भी इंडिया कारपेट एक्सपो व चाइना डोमोटेक्स, अटलांटा कालीन फेयर, ये सब रद्द हो चुके हैं, जिससे आगे भी उन्हें 1200 से 1500 करोड़ रुपए का जो व्यवसाय मिलता वो उस पर भी पानी फिर गया है। इसी प्रकार से कालीन का एक और छोटा सा जगह है मिर्जापुर, जहां पर कि लगभग 250 करोड़ रुपए का कारोबार है, जिसमें उन्हें 50, ये सालाना है लेकिन 50 करोड़ रुपए का नुकसान उनको हो गया है। और इनके जितने भी खरीदार हैं एक्सपोर्ट के वो यूएस, जापान, रशिया और ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, जिसमें इन्हें शायद ऑस्ट्रेलिया और ये जापान से उम्मीद है कि शायद इन्हें आगे कुछ ऑर्डर्स मिले। इसके अलावा आजमगढ़ का साड़ी कारोबार 1 करोड़ रुपए का पूरी तरह से बाधित है। निजामाबाद की ब्लैक फैक्ट्री वो 50 लाख प्रति माह का कारोबार था, जो कि पूरी तरह से बंद है। फिरोजाबाद में 4000 करोड़ रुपए का कांच उद्योग था और इसको 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। हरदोई में 550 करोड़ रुपए का हथकरघा में नुकसान हो चुका है। लखनऊ में जो चिकन था जिसका एक्सपोर्ट वो करते थे, उसमें 22 मार्च से पहले निकला जितना भी माल है उसका भुगतान उनको नहीं हो पाया और बहुत सारा माल उनका भी डंप हुआ पड़ा है। मथुरा में चांदी का 300 करोड़ रुपए का चांदी का कारोबार है, जो कि शून्य है इस समय। आगरा में लेदर के अलावा पेठा और हैंडीक्राफ्ट्स और कालीन भी हैं। तो वहां पे आगरा में रेड जोन पहले बना था, इसलिए 125 शोरूम जो हैंडीक्राफ्ट और कालीन के थे वो बंद पड़े हैं, और 225 करोड़ रुपए का पेठा का जो टर्नओवर उनका साल में था वो भी पूरी तरह से बंद है 2.5 महीने से। मुरादाबाद में जो कि हमारे टोटल एक्सपोर्ट में जो हैंडी क्राफ्ट एक्सपोर्ट्स है उसमें 24% की हिस्सेदारी है, और 6000 करोड़ रुपए का निर्यात मुरादाबाद से होता था, जो कि पूरी तरह से बंद है। तैयार कपड़ों का जो कारोबार है 2500 करोड़ रुपए का था। 8000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा यहाँ पे प्रभावित हुई है, जो विदेशी मुद्रा हम कमा सकते थे। इसी प्रकार से हैंडीक्राफ्ट में आपके बरेली आता है, जिसमें 480 उद्यम बंद है। रायबरेली में 4700 उद्यम बंद है। ये आपका हो गया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। और नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जो कि बहुत ज्यादा प्रभावित है। उन्हीं इंडस्ट्रीज को मैंने लिया है। मेरठ, जिसमें 45 एक्सपोर्ट हाउस हैं और 15,000 ऑर्गेनाइज्ड यूनिट्स हैं। 1500 करोड़ के साथ खेल उद्योग जगत में सबसे बड़ा टर्नओवर वाला हमारा ये जिला है, और इसमें करीब 3 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ था। इनका कुल टर्नओवर मेरठ में, और जैसे प्रकाशन है, ट्रांसफार्मर उद्योग है, और भी बहुत सारे उद्योग लगे हैं, जिसमें 10,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, जो कि पूरी तरह से ठप है। स्पोर्ट्स में जापान में जो ओलंपिक होना था वो 2021 तक के लिए टल गया। यूएस में अगस्त में और यूरोप में सितंबर में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैंप लगता था। ऐसे में उनको बहुत सारा स्पोर्ट्स का मतलब माल ऑर्डर का उम्मीद थी, लेकिन ऐसा सब कुछ थम सा गया है। अब इस आर्थिक सुस्ती और महामारी के बीच उपजी परिस्थितियों के बीच उद्यमी आगे बढ़ने का हौसला सजोए हैं, और उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका पर इनकी नजरें टिकी हुई हैं। और इसके अलावा अब हम अगर यूपी के मुख्य इंडस्ट्रीज की बात करते हैं और नोएडा गाजियाबाद की बात ना करें तो बात कुछ अधूरी रह जाती है। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो नोएडा को एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का उत्पादन यहाँ पर बहुत अधिक है। तो फिर भी इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जानने के बाद भी अगर हम ओडीपी का जिक्र करें कि एक उत्पाद एक जिला, ओडीओपी, तो इसके रूप में उन्होंने गारमेंट और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को यहाँ पर लिया हुआ है। लेकिन ज्यादा प्रभावित यहाँ पर गारमेंट टेक्सटाइल के साथ साथ हमारी
ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है और इलेक्ट्रॉनिक की है जो कि बिल्कुल नहीं हो पाई है, जिसमें नोएडा में अकेले 12,000 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर था, जो कि इस समय 2,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर प्रभावित है। सिर्फ कार के कंपोनेंट बनाने वाली जो कि एसी बनाती है, किट मोल्डिंग बनाती है, कार शीट बनाती है, बैक मिरर, म्यूजिक सिस्टम, एसेसरीज, ऐसे सारी जो कार के कंपोनेंट बनाती है, ऐसी इंडस्ट्रीज को थोड़ा बहुत शुरू करने के लिए इन्हें ऑर्डर मिला है और जापान, यूएस वगैरह ने 350 करोड़ रुपए का ऑर्डर रिलीज कर दिया है ऑन लॉकडाउन में। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम आ गई लेबर की। जैसे मामूरा है वो पूरी तरह से ये लेबर इंटेंसिव जो इस तरह के फैक्ट्री में काम करते हैं, 80% पॉपुलेशन यहाँ से मूव कर गई, माइग्रेट कर गई, 20% स्टाफ केवल में मौजूद है। इसी प्रकार से गाजियाबाद और नोएडा में कुल मिलाकर देखें तो और अन्य इंडस्ट्रीज को 3,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1,600 करोड़ रुपए का माल वेयर हाउस में डंप है, 1,700 करोड़ का फिनिश गुड डंप है, 2 लाख कर्मचारियों की नौकरियां दांव पर हैं। और नोएडा और गाजियाबाद में 27,000 माइक्रो, 4600 स्मॉल और 150 मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज हैं जो एमएसएमईज हैं। इनको अगर हम इन सारे कुछ मुख्य उद्योगों को लें, समय के अभाव में मैं इन्हीं उद्योगों के बाद अब इनकी प्रॉब्लम्स को देख रही हूँ कि इन सारे उद्योगों में यूपी में जो प्रॉब्लम्स निकल कर आई हैं 2.5 माह के लॉकडाउन के कारण, वो मैं पॉइंट वाइज आपको बता दूं। पहली प्रॉब्लम जो ये फेस कर रहे हैं वो है रॉ मटेरियल की। जैसे अगर लेदर इंडस्ट्री को लें तो उसमें जो बेल्ट, पर्स, फिनिश लेदर आदि बनता है और शेडलरी बनता है, इन सभी में एक केमिकल लगता है जो कि चाइना, यूएस और इटली से आता है। अब कानपुर में लेदर का कच्चा माल तो बहुत है, लेकिन और आगरा में भी है, लेकिन प्रोडक्शन शून्य है क्योंकि वो केमिकल ही उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और जो लोकल हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे नोएडा में लगी हुई है, गाजियाबाद में है, उन सब में दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर क्लोज होने के कारण भी बहुत सारा कच्चा माल इनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम आती है वर्कफोर्स की। जैसा मैंने अभी जिक्र किया, आपको मामूरा की एग्जांपल दिया कि 80% पॉपुलेशन नहीं है, तो रायबरेली में जैसे आटा यूनिट है और उसमें भी मैन पावर की बहुत कमी है। तो टोटल जहां जहां पे इंडस्ट्रीज लगे वहां मुश्किल से 30 से 40% की वर्कफोर्स उपलब्ध है। और जैसे ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री है, वो 40% ऑर्डर जो उनका रिलीज हुआ है मारुति और होंडा और हुंडई के थ्रू, वो अपना ओवर टाइम करा रहे हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं और 40% ऑर्डर को 20% वर्क फोर्स के जरिए पूरा कर रहे हैं। तो लेबर की भी बहुत कमी अब इनको महसूस हो रही है। और कहीं पर जैसे इवन एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा लेबर वो माइग्रेट कर गए, तो उनको बसों से बुलाया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ी समस्या ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने है। इसके अलावा डिमांड में शादी समारोह, इस तरह के जो समारोह में ब्रेक लग गया, ऐसे बहुत सारे उद्योग, 80 उद्योग हैं जिनको की बहुत कम आशा है कि वो अभी आगे भी सरवाइव कर पाएंगे, जिसमें बर्तन है, आइसक्रीम इंडस्ट्री है और जो भी कपड़ा इस तरीके का फैंसी जो शादी ब्याह में यूज होता है, ऐसी लगभग 40 यूनिट्स यूपी में पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। सप्लाई चेन की बात करें तो सारे इंडस्ट्रिस्ट जो अभी इकोनॉमिक्स हमारे कह भी गए हैं, सप्लाई चेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सामने। जो उद्यमी हैं उनको एक कंपनी और सप्लायर के बीच, जो लास्ट में हम कंज्यूमर तक सामान पहुंचाते हैं, उसके बीच नेटवर्किंग बनाना ही सप्लाई चेन कहलाता है। तो ये सप्लाई चेन भी हमारे यहाँ पूरी तरह से अभी प्रभावित हो चुकी है। बहुत सारा सामान हम कहीं से, कुछ पार्ट उसका चाइना से मंगाते हैं, कुछ यूएस से मंगाते हैं, जो कि बुरी तरह से प्रभावित है। और कहीं कच्चा माल बहुत अधिक है तो कहीं पर उसके फिनिश उसको बनाने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत है जो प्राप्त नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट। अब जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से आई हैं उद्यमियों के सामने, तो वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो अब नई यूनिट जब खोल रहे हैं, मान लीजिए उनके पास थोड़ा बहुत लेबर है और समस्याएं सारी उन्होंने मीट कर ली हैं, तो उनके सामने अब लेबर वगैरह के बाद एक प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बड़ी समस्या आती है कि कोरोना की रोकथाम के लिए जब वो यूनिट खोलेंगे तो उनको क्या करना होगा कि वर्कर्स के लिए कोरोना के रोकथाम के सारे उपाय अपनाने पड़ेंगे, मास्क लगवाना पड़ेगा और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मशीनें भी दूर दूर करनी पड़ेंगी, उनकी शिफ्टिंग करानी पड़ेगी।
और जो है कच्चा माल उनको जो लाना है तो दूर से इस समय इतनी मतलब इजी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसको भी बार्गेनिंग उनकी कम हो जाएगी। तो इस तरह से लगभग 25% प्रोडक्शन कॉस्ट भी इनकी बढ़ी है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, मैम प्लीज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, प्लीज वाइंड अप कर दीजिए। बस मुश्किल से 5 मिनट और लगेंगे, मैं बहुत फास्ट ही इसीलिए फास्ट ही जा रही हूँ मैम एक्चुअली हाँ जी ऑलरेडी वेरी लेट। के बाद ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें आपके ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन्हें कच्चा माल भी ट्रांसपोर्ट करना है और भेजने के लिए भी इनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम मीट आउट करनी पड़ रही है। तो जो हमारे यहाँ उद्यमी हैं वो गवर्नमेंट से कुछ अपेक्षाएं रखते थे कि एमएसएमईज को हर सरकारी खरीदी हिस्सेदारी मिले, ओडीओपी में प्रोत्साहन मिले और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई जाए, टर्नओवर का 10% उन्हें वेतन ऋण दिया जाए वेतन देने के लिए। तो ऐसे कुछ उनके एक्सपेक्टेशन थे, जिसमें गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं जो मैं 5 मिनट में आपको खत्म कर दूंगी कि क्या एफर्ट्स हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की एक स्कीम चलाई थी, जिसमें उन्होंने 5 स्तंभों पर आधारित किया था इससे कि अर्थव्यवस्था की ऊंची छलांग हो, बेहतर बुनियादी ढांचा हो, 21वीं सदी का प्रौद्योगिकी आधारित नया शासन तंत्र हो, गतिशील जनसांख्यिकी हो और लोकल फॉर वोकल। इस पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की जो नींव रखी थी उसके लिए उन्होंने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज हमारे यहाँ अनाउंस किया है, जिसमें कि एमएसएमईज को नई डेफिनेशन के साथ ये कहा है कि जो भी एमएसएमईज 20,000 करोड़ रुपए तक की कर्ज अगर नहीं चुका पा रही हैं तो वो अभी कर्ज ना की सुविधा का ऐलान दिया है कि वो अभी कर्ज ना चुकाएं। और इसी प्रकार से 3 लाख करोड़ रुपए के कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन की गारंटी, मतलब बिना ऋण के उनको लोन मिल जाएगा 3 लाख करोड़ रुपए तक का। और एनबीएफसी, एचएफसी और सूक्ष्म राशि के जो संस्थान है उनको भी 30,000 करोड़ रुपए की विशेष नकदी योजना की घोषणा की है। और टीडीएस और टीसीएस की दर में भी 21 मार्च तक के लिए 2021 तक के लिए उन्होंने 25% की कटौती की है। और सभी कर्मचारियों के मूल वेतन में 12% के बराबर जो एम्प्लॉयर्स डालते थे उसे 10% तक कर दिया है। और आज ही निर्मला सीतारमण ने इसका दूसरा जो 20 लाख करोड़ का जो है पैकेज था उसमें प्रवासी श्रमिकों के लिए अपने गांव में ही रोजगार मिलेगा उनको, इसकी भी घोषणा उन्होंने कर दी है। तो ये 5 चरणों में अभी है, ये कंटिन्यूएशन में है, अभी इसको हम सम अप इस तरह से नहीं कर सकते। मैं आशा है कि इस 20 लाख करोड़ के पैकेज से थोड़ा बहुत हमें हमारी आर्थिक जो है औद्योगिक यूपी की अर्थव्यवस्था को जरूर गति मिलेगी। समय के अभाव में मैंने बहुत शॉर्ट कर दिया लास्ट में। थैंक्स। थैंक यू सो मच मैम, रियली में आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से इस पे काम किया है। आपकी जो इस सब्जेक्ट मैटर पे पकड़ है वो बिल्कुल साफ दिख रही है, और जो डेटा आपने प्रेजेंट किया है वो रियली में आई ओपनिंग है, और हमें ये पता भी चल रहा है कि कितना इफेक्ट आया है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड फॉर प्रेजेंटिंग दिस नाइस लेक्चर टू अस। अब मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर वाईडी सर को। वाईडी सर आप प्लीज आइए और सीमित समय को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत। 5 मिनट में वाईडी सर कर देंगे, वो गागर में सागर। थैंक यू वेरी मच। उनकी खासियत है गागर में सागर। हम लोग लगभग सुबह 11 बजे से इस समय तक बैठे हुए, सबके चेहरे से भी मैं देख रहा हूँ कि सब खुश तो हैं, परंतु कुछ थके हुए भी हैं। तो सर्वप्रथम मैं अपनी प्राचार्य महोदया को संबोधित करते हुए, रेस्पेक्टेड प्रेजेंट प्रिंसिपल्स, एक्स प्रिंसिपल्स, इंचार्ज प्रिंसिपल्स and would be principals and dear listeners, basically what our organization team kept the topic that is very relevant. 3 facts which can adhere the society: economy, society and technology, interlinked. So what can be the perspective of this country which is called Bharatvarsh, Jambu Dvite Bharatkhande Aryavarte Deshe? Very clear. Definitely the country which was known by the world, that was the Sone Ki Chidiya, Vishwaguru and the other names. But like now, we the elites
group of the people are discussing the topics like that, the worldwide, which are always discussed. Always discussed means there is one word, pist patient. Pist patient means the floor which is taken, that is took by everybody always. पीसे हुए कोई फिर से बार बार पीसा जाए. But I want to discuss only the few points which can help us to make and enlighten our society. Topics, subjects, knowledge, wisdom, that is very different. You see, before Christ 375, the saint born here at Chanakya written the Arthashastra. You will see all the solutions of the worldwide, the economic problems which are taking place nowadays at the world. Definitely these are discussed over there and will be countable point to make understand all over the world. Only I will discuss one shloka which he had given for this time, that is the Apadarthe Dhanam Rakshit. Apadarthe Dhanam Rakshit. We should keep our wealth to protect ourselves when we are in problems. The time is not going on well. So we have to keep all to protect, to manage the situations. Secondary society will see the second millennium before Christ, the time of the Rig Veda, where you will read Sangachadhvam Samvadadhvam Samvo Manansi Janatam. As society, we should run all together. We have to see, we have to sing, we have to create all the things together. Definitely the wisdom which was given by the generator of the ideas. Generator of the ideas. What we have given to the world, that was the idea. Idea means wisdom, vivek, based upon that, where they talk about the Sangachadhvam, Samvadadhvam, Samvo Manansi Jantam. Third one, the technology. I was very much keen to search out the solution of this problem, what is going on nowadays in this world, that is called coronavirus. If we have the all ideas in our Vedas, in our Upanishad, in our all whole sacred books, so there should be this problem solution also there, but particularly we can't take the name of corona and the other things. But you will see, I have been search out the Atharva Veda. You should note down this point. Atharva Veda 2.25.1, where the Atharva Rishi says that Karnaveshu Vrishaya Mano Avranita Somam Prishni Parni Trikadrikweshwahana. Karnava means the virus which is taken very abnormally and very in the macro situation. That will be killed by what? Prishni Parni. Now you see the situation of Ayurveda worldwide, which is run nowadays. We are not able to know what the Vanaspati was known as Prishni Parni. Prishni Parni. If we will translate it in Hindi, it will be like the leaves of which tree are very glorious. Prishni Parni. That can kill all the macro viruses in this environment. So we left all our wisdom, so we left all our situations also. I will sum up now. Pedagogy, which was discussed. See, in our pedagogy, in our Shikshan process, Shikshan Prakriya, there is written by our Rishi Chaturbhishcha Prakarehi Vidyopayukta Bhavati. Agama Kalena, Swadhyaya Kalena, Pravachana Kalena, Vyavahara Kalena. There are three types of the steps to learn anything idea in this world. That is what? First, learn it with the mouth of your guru. Then take it as Swadhyaya, means read it when you have the time, seriously. You have to peruse it. And then Pravachan Kalena means wherever you get the type of the people, you have to discuss about that. If the something fact is left, you can adhere, you can regain it. And then the Vyavahar Kalena, practically you can take the future trend, what will be about, that will also I discuss
within only 1 minute. So see, worldwide nowadays, what is going on? We are keeping the mind in machines, which is called artificial intelligence. There are so many examples given in Ratna Bhandagara, that is the Vedic architecture book, where some gatekeepers are kept in the shape of the artificial intelligence. They were stopping that type of guy who can enter to that house. So artificial language will also be our Sanskrit language, which is prior to 6 months, NASA has declared that the worldwide the languages which we can consider are not suitable to keep the artificial language in that manner in which we can use it. So see, the future trend will also come in what situation that will be that Sanskritam will be changed only in Sanskrit, and it will be provided by Europe to us, like to yoga become the yoga. So what we have the wisdom in our sacred books, in our old texts, only 23,60,580 people have registered in this India who can speak in Sanskrit language. And see, we are here 1,030 crores. And that wisdom belongs to us only. We are the successor of that wisdom. So why we should go to the authors who have written the in process of participation? We should see our books. We should see our text, which can provide us the solution of all types. So I want to sum up my lecture. Thank you very much. Thank you, Dr. Anita Mishra ji, Dr. Sukshim ji, or Dr. But Shelly, or I can't see you. You are not visible. I am visible. I'm not visible, but my video is. You, ma'am, वो visible है sir. Visible है ma'am. Okay. Visible है. So thank you all. और प्रातः काला देव, सुबह से ही मैं सोच रहा था कि किस प्रकार से अपने लोगों को अंदर से जगाऊं थोड़ा सा, कि हमारा जो ये ग्रंथ अध्ययन, जो हमारी भाषाएं, जो हमारी कल्चर छूट गई है, कहीं ना कहीं हम उसको पकड़ेंगे तो शायद हमें फिर से विश्व गुरु का वो एक आइडिया मिलेगा, उसको हम पकड़ पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं हमारे यहाँ पे ये सब चीजें सीखने, और हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, तो ये थोड़ी सी आयरॉनिकली स्टेट है और उसे ही हमें इम्प्रूव करना है। तो हम इसी कड़ी में आगे जरूर बढ़ते रहेंगे इसी विश्वास के साथ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर शैली श्रीवास्तव को कि वो आगे अपना उद्बोधन दें और इसका वैलिडिटरी सेशन के लिए। प्लीज मैम, शैली मैम प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सूक्ष्म मैम। आज इस कॉन्फ्रेंस में विभिन्न वक्ताओं के प्रबुद्ध विचार सुनने के बाद हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आज का समय हमारी समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा जगत, संपूर्ण देश और संपूर्ण मानव जाति के लिए एक चुनौतियों का समय है। लेकिन इसके साथ ही इस बात का भी पूर्ण विश्वास है कि जब हम इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके विजयी होंगे, तब तक इस समाज, अर्थव्यवस्था, हमारी शिक्षा व्यवस्था और वैचारिक स्थिति में बहुत कुछ बदलाव आ चुका होगा और नई व्यवस्थाएं हमारे समक्ष होंगी। आज इस कॉन्फ्रेंस ने हमें एक ऐसा वैचारिक आधार प्रदान किया जहां हम विचार मंथन करके ऐसे नवोन्मेषी उपाय सुझा सकें जिनसे न केवल हम इन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने में सफल हो सकेंगे, बल्कि साथ ही अपने आप को भी इन नवीन चुनौतियों के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार कर सकेंगे। मैं एक संक्षिप्त आख्या आपके समक्ष हमारे वक्ताओं द्वारा दिए गए व्याख्यानों की प्रस्तुत करना चाहूंगी, बहुत ही संक्षिप्त रूप में। सर्वप्रथम हमारे मुख्य अतिथि प्रोफेसर ए.के. बख्शी ने बताया कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गठन की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी आज की शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। आने वाली डिजिटल क्रांति के लिए शिक्षा और शिक्षकों को अपने आप को तैयार करना होगा तथा हमें वर्तमान समय का पूर्ण सदुपयोग करना होगा। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता जी ने भी इसी संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन आ रहे हैं और हमें इन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होना होगा। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल के दिए गए नारे को हमें भी अपने जीवन में आत्मसात करना होगा।
इसी क्रम में टेक्निकल सेशंस में प्रोफेसर दिनेश कुमार द्वारा दिए गए वक्तव्य में बताया गया कि कोविड-19 की वजह से भारत और विश्व की समस्त अर्थव्यवस्थाएं, आर्थिक वृद्धि, रोजगार और उपभोग सभी क्षेत्रों में प्रभावित हुई हैं। उनके अनुसार आने वाले समय में जो हमारा निवेश है वो कृषि क्षेत्र से स्वास्थ्य क्षेत्र की ओर प्रवृत्त होगा। साथ ही साथ जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निरंतर नवीन चुनौतियां आ रही हैं, चाहे वो चीन के साथ होने वाला विवाद हो या कोविड-19 से उत्पन्न समस्याएं हो, उसके लिए हमें अपने आप को प्रतिस्पर्धात्मक रूप से तैयार करना होगा। डॉक्टर विनोद शानवाल ने अपने उद्बोधन में शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले नवीन परिवर्तनों के विषय में बताया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से हम शिक्षा को आधुनिक और बेहतर स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। प्रोफेसर श्वेता प्रसाद ने वर्तमान समय में वृद्ध व्यक्तियों, फिजिकली चैलेंज लोगों, महिलाओं, अर्थव्यवस्था, शिक्षा जगत और प्रवासी श्रमिकों के लिए संकट के समय बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमें इस संकट का सफलतापूर्वक सामना करना है तो हमें गांवों को और सैटेलाइट टाउन्स का विकास करना होगा, रोजगार को बढ़ाना होगा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो नारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने दिया है, स्वदेशी को अपनाना होगा। प्रोफेसर वीपी सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि अर्थव्यवस्था, समाज और शिक्षा सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तन आएंगे। ऑनलाइन और वर्चुअल प्लेटफॉर्म का प्रयोग बढ़ेगा, किंतु साथ ही हम वैश्वीकरण को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वैश्वीकरण ही वो शक्ति है जिसने हमें इस समस्या से उबरने में बहुत सहायता दी है। श्री बुद्धिमत्ता दास जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य जीवन के लिए आवश्यक है। निश्चित रूप से जहां हम समाज, अर्थव्यवस्था, तकनीक आदि की बात करते हैं, हम अपने जीवन के इस पक्ष को किसी भी प्रकार से नकार नहीं सकते। श्री बुद्धिमत्ता दास जी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और उसके उन्नयन हेतु हमें बहुत से उपाय बताए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रह सकता है और स्वस्थ व्यक्ति केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों ही रूपों से स्वस्थ होना आवश्यक है। डॉक्टर रोजी मिश्रा मैम ने बहुत ही संक्षिप्त रूप में एक बहुत ही सामयिक विषय इंडस्ट्रीज इन यूपी पोस्ट कोविड-19 पर विचार व्यक्त करते हुए कोविड-19 के उत्तर प्रदेश की विभिन्न उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया और इससे उबरने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनका बहुत ही अच्छा विवेचन प्रस्तुत किया। अंत में डॉक्टर वाईडी शर्मा सर ने हमें बताया कि किस तरीके से हम अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनाकर ही विभिन्न समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। आज कोविड-19 की जो समस्या है उससे उबरने के लिए भी उन्होंने हमें अथर्ववेद के कुछ श्लोक बताए और ये कहा कि हमें अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति को भूलना नहीं है। ना सिर्फ हमें बल्कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इससे अवगत कराते हुए अपनी जड़ों को मजबूत बनाए रखना है ताकि हम सफलतापूर्वक आगे आने वाली सभी चुनौतियों का सामना कर सकें। ये एक संक्षिप्त आख्या इस संपूर्ण कॉन्फ्रेंस की आपके समक्ष मैंने रखी। अब मैं आग्रह करूंगी हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदय से कि वो आशीर्वचन के रूप में हमें अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय प्राचार्य में trends in economy, society, and technology, emerging new dimensions. This topic has covered three fields: society, economy. You can listen me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. First of all, I am thankful to Dr. A.K. Bakshi, who is the chief guest of today's function. He delivered a very informative as well as useful lecture in present context. His focus was on e-learning, MOOCs development, importance of teaching as well as role of teachers. Teachers have to play a big role in the development of society. Without teachers, society cannot develop.
मैम आप म्यूट हो गए, मैम आप म्यूट हो गए जी। Gupta, जी who आगे gave us a time and knowledge and delivered a knowledge about COVID as well as on economy. I'm again thankful to Dr. Dinesh Kumar from CCS University, who expressed his views on the development of industry and how we can help in the present economy in post-COVID conditions. Again, Dr. Vinod Kumar Shanwal from Gautam Buddha University, he delivered a very important lecture on technology, and he told us how we can help students in present scenario, because face-to-face teaching is not possible due to COVID. So he told us about online education, the importance of online education. Dr. Shweta Prasad from BHU University, she told us about the health crisis, economic crisis, and the condition of uncertainty that is due to COVID in present context, and told us how even our workers, ladies, how many people have suffered due to this COVID condition. Dr. Viren Singh also told us an informational network and COVID conditions. He also told us about technical aids. Again, Buddhimitra Das from ISKCON, he delivered a very important lecture about yoga and told us how we be more spiritual, how we can develop personalism rather than impersonalism in our personality. And he told us how we can minimize stress, how we can be happy, and how we can be healthy, and how we can minimize negativity. Really, his lecture was very helpful in our day-to-day life. I'm again thankful to Dr. Rosie from MMH College. She delivered a very database lecture about the industries of UP, and surely she has given a knowledge for future context, that what will be there or how many problems will be there in society in our future industrial works. I am thankful to Dr. Y.D. Sharma and Dr. Shelley and the whole team who organized this, Dr. Anita, Dr. Sukshma, Dr. Shelley, Dr. Aparna, Dr. Priya, Dr. Pratibha, who organized this seminar in such a well-mannered way. Speakers were trying to take more time, but there was a crisis of time, surely. And we are also feeling that it was short time. But I am thankful to all. I am thankful to Dr. Ashwani Goyal and Dr. Rekha Tiwari and all the principals who have attended this program. I am really thankful to the students and other staff members who accompanied us throughout the day and who attended this webinar. Surely they have learned a lot from it, because it was covering 3 fields, and all the important 3 fields: economy, society, as well as technology. Because technology has taken a new turn, and now nothing is possible without technology. Either it is teaching or it is working of offices. So I am thankful to all for your patience, for your working, and this webinar has been completed due to your patience and your hard work. Thank you. Thank you to all. Ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for giving us opportunity. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। मैम के उत्साहवर्धक शब्दों से निश्चित रूप से हमें एक संबल प्राप्त होता रहता है और हम इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए हिम्मत कर पाते हैं। अंत में कार्यक्रम के आयोजक सचिव होने के नाते
मैं अपनी ओर से सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी प्रबुद्ध वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके ज्ञानपूर्ण उद्बोधन ने हमें विषय से अवगत कराते हुए आने वाली नवीन प्रवृत्तियों का उच्च कोटि विश्लेषण प्रस्तुत किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी अपने सभी सम्माननीय अतिथियों का, स्पेशली हमारी रेखा मैम जो अभी तक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। काफी समय हमने उनका ले लिया पूरे दिन का, लेकिन मैम का हार्दिक आभार। गोयल सर भी बहुत समय तक हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन जितने भी प्राचार्यों ने या हमारे अतिथियों ने हमारे लिए समय निकाला, हम सब उनका आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी उपस्थिति ने हमें मानसिक संबल प्रदान किया। मैं अपनी प्राचार्य मैम का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिनके दिशा निर्देशन और प्रोत्साहन से ही ये कार्यक्रम संभव हो सका। महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों का भी हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपने कर्मचारी बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमें सहायता प्रदान करी। मैं कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों का हार्दिक धन्यवाद दूंगी, जिनकी उपस्थिति ने ही इस कॉन्फ्रेंस को सार्थकता प्रदान की। अंत में इस कॉन्फ्रेंस के आयोजक मंडल, जिसमें संयोजक डॉक्टर अनीता मिश्रा, आयोजक सचिव लेफ्टिनेंट डॉक्टर सूक्ष्म मैम, डॉक्टर प्रिया सिंह मैम, श्रीमती अपर्णा मैम, डॉक्टर प्रतिभा रानी मैम, इन सब का भी हार्दिक आभार है, जिन्होंने पूर्ण सहयोग और समन्वय प्रदान करते हुए इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में अपना साथ दिया। रात में 10-10 बजे भी हम लोगों ने जूम मीटिंग करके इस कॉन्फ्रेंस के लिए सबको परेशान किया, जितने लोग थे। कल रात में 11 बजे तक मैम हम लोग की जूम मीटिंग चली, तो सबको डिस्टर्ब करने पे, लेकिन सबका पूर्ण सहयोग और समन्वय के फलस्वरूप ही यह कार्यक्रम संभव हो सका। अंत में इस आशा के साथ कि इस वैचारिक मंथन को जारी रखते हुए अपने देश की सार्थक प्रगति हेतु प्रयासरत रहते हुए हम इसके विकास में अपना योगदान देते रहेंगे। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद। शैली मैम, एक चीज बोलनी है। एक सेकेंड, अनीता मिश्रा मैम। हाँ, यूट्यूब पे बराबर लोग पूछ रहे हैं फीडबैक के लिए, तो आप इसी माध्यम से बता दीजिए कि यूट्यूब वो फीडबैक फॉर्म कैसे शेयर होगा और कब शेयर होगा, क्योंकि बहुत क्वेरीज आ रही हैं यूट्यूब पे, तो हमारे साथ यूट्यूब पे हैं। हाँ, यूट्यूब पे जो भी हमारे प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं, तो अधिकतर उनमें से व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो हम जो फीडबैक लिंक है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे। फीडबैक फॉर्म भर के आ जाएगा, उसके 10 दिन के अंदर सबको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएंगे। थैंक यू। प्रिंसिपल मैम का आभार, धन्यवाद मैम। आपका फीडबैक फॉर्म जो है वो लिंक स्वयं ही हो जाएगा कि उसको भेजना पड़ेगा आप लोगों को? नहीं, हम लोग सर व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक आएगी। अच्छा, फीडबैक ये अनाउंसमेंट इसलिए सर कराना क्योंकि यूट्यूब पे क्वेरीज आ रही हैं बराबर। जी। प्रोग्राम के अंत में जो यहाँ से करा देंगे ताकि वहाँ पे भी सुन लें। अभी ओरली फीडबैक यदि चाहिए तो हमारी तरफ से तो बहुत अच्छा। सर वो फीडबैक नहीं है, वो ई सर्टिफिकेट के लिए मस्ट है। जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। सर सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने जो रात में 10 बजे वो किया, उस सबका बहुत अच्छा सफल रहा ये प्रोग्राम। बहुत सर आप तो तारीफ करेंगे क्योंकि आप तो हमारे में से ही हैं, नहीं तो आपका तारीफ करना बनता है, आपका तारीफ करना बनता है। मैडम प्रिंसिपल भी बोल रही है। मैं करूं, कहना जी रेखा मैम जी। ऑडिबल हूँ मैं? हाँ जी मैम। जी मैम है। मैम वीडियो चला गया मैम आपका। ओके जी हाँ आ गया मैम जी। बहुत बहुत बधाई शैली मैडम, पूरी टीम। मैं तो आप में से नहीं हूँ जी, मैं इस बात को करें बहुत रेलेवेंट लोगों में से ही है। हम में से बहुत ही रेलेवेंट और बहुत ही इन्फ्लुएंसिव आपका टॉपिक था और स्पीकर्स आपके मार्वलेस थे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा। बधाइयाँ आपको सभी को, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। आपकी टीम को, आपके प्राचार्य मैम को, सभी को बहुत बहुत साधुवाद। पूरे टीम को आपके सर आप भी टीम का पार्ट हैं सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। Thank you so much. Thank you all for joining us. Thank you all. Thank you. इसी तरीके से किसी और दिन। Okay, bye everyone. Congratulations to all. बहुत बहुत बधाई। Thank you. सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। Congratulations ma'am. Thank you. Thank you. Congratulations ma'am.
सभी को धन्यवाद। Congratulations, ma'am. थैंक यू। मीटिंग एंड करें कि ना करें बताओ। हाँ, नमस्ते। बहुत टाइम हो गया। मैम यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग हो रही है, इसको एंड कर दें हम मीटिंग। वाइडी सर मेरे बेटे का संस्कृत का एग्जाम है। जी मुझे जब आप कहेंगे तो मैं बता मैम लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दो। मैम लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दीजिए आप कर प्लीज। रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग लाइव लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर रहे हैं। इससे अच्छा हमें कोई ऐसा पोर्टल नहीं मिलेगा जहां पर हम सब लोग एक दूसरे से बात कर सकें। बिल्कुल अच्छा है ये। ये अच्छा है। वाईडी सर थके नहीं अभी आप सुबह से बैठ के? जी थक गया था मगर बहुत दमदार है, थकेंगे नहीं। मेरी खत्म हो गई। सबसे ज्यादा फ्रेश वाईडी से नहीं लग रहा है। वापस तो लाइव स्ट्रीमिंग बंद करें। एक्चुअली मैंने ना दो उससे कनेक्ट कर रखा है, वो दूसरी जगह चल रहा है लाइव स्ट्रीमिंग का, उससे अभी कर रही हूँ मैं यहाँ से नहीं बहुत अच्छी मेहनत रही सभी लोगों की और हमारा ये एक अच्छा वो हो गया। शुरुआत में मैंने देखा कि काफी लोग थे, हमारी अनिता रानी राठौर मैडम थी, प्राचार्य महोदया और दिव्या नाथ मैडम थी और अभी तो मुझे सभी थे। तो अच्छा एक वो रहा हमारा ये नेशनल वेबिनार। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ट्रिनिटी मिल गई, मैं कहूँ तो अपने शब्दों में